राम का नाम लेने में और हनुमान भगवान का नाम लेने में अगर कोई 14 दिन डालते हैं तो मेरी 14 दिन में कोई आवाज नहीं दबा सकता। अगर उन्होंने 14 साल भी डाला तो भी मैं भगवान का नाम लेना बंद नहीं करूंगा। What is being claimed by the Hindu petitioners is that this particular structure of the mosque is entirely a temple. However, the Muslim petitioners have made it very clear that it's a 17th century building, which is why a recent videographic survey hurt their sentiments. जो लोग वहाँ के सर्वे को रोक रहे हैं तो प्रश्न उठेगा, क्या छुपाना चाहते हैं, किस चीज के से घबरा रहे हैं कि ये बाहर आ जाए। भारत में कानून का राज है। अगर आप गलत तरीका अपनाते हैं तो उसकी काट भी है। जिस हिसाब से उन्होंने एक पहले 6 बजे के आसपास उन्होंने ये वारंट निकाला और दूसरा वारंट रात को करीब 10 बजे के करीब निकाला, तो इतना तो था ही। हम लोग इंतजार कर रहे थे, हमारे साथ हमारे ये बच्चे भी साथ में थे, कुछ मीडिया कर्मी भी साथ में थे और वो भी इस इंतजार में थे कि पुलिस कब आती है। लगभग 11 साढ़े 11 बजे न्यूज आई कि बग्गा ने उनके खिलाफ याचिका दायर की है। तब हम लोग निश्चिंत हो गए कि अब पुलिस कम से कम जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक नहीं आएगी। हम लोग रिलैक्स हो गए। 12 बजे के आसपास फैसला आ गया कि बग्गा को 2 दिन की राहत मिली है। अब उस राहत का फायदा किस हिसाब से उठाना है, क्या क्या करना है, ये बग्गा जाने, पार्टी जाने और उनके वकील जाने। इन्होंने कल फिर ये दर्शा दिया कि इस देश के अंदर कानून का राज चलता है। अगर अरविंद केजरीवाल सोचते हैं कि सत्ता के बल पे, पुलिस के बल पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा सकते हैं, झुका सकते हैं, तो फिर से मैं उनको कहता हूं, एक नहीं 100 FIR कीजिए। अरविंद केजरीवाल जी, मैं ये सवाल पूछूंगा कि आपने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को 24 घंटे के अंदर जेल की सलाखों में डालना था। It is a big crackdown on the Dawood network. Raids currently underway across 20 locations in Mumbai. Loudspeaker versus loudspeaker in Karnataka now. The Sri Ram Sena launches protests over loudspeakers for Azan. Navneet and Ravi Rana are to head to New Delhi today, set to have high-level meetings in the national capital. The Maharashtra government prepares to move court to file a contempt of court case against the Ranas, seeks to cancel their bill. Survey findings are to be presented before the court today as the political fight over the Gyanvapi mosque continues. A Pakistani drone is shot down by the BSF in Amritsar. 10 kgs worth of heroin worth about 50 crore rupees is recovered. Now, Muslim Congress leaders N.A. Harris, Nasir Hussain and UT Khadar as well as Nasir Ahmad visited the Chief Minister's residence to appraise him on the Azan versus Hindu Bhajan issue that has now come to the fore. There are, of course, pictures that we are getting from various places across the country which seem to highlight this issue now. Pictures that we are getting from Hubli, Kalburgi, Hassan as well as Bengaluru in Karnataka have, of course, brought to fore this particular issue. Now, after Maharashtra, of course, the focus seems to be on Karnataka, where several Sri Ram Sena members are being detained by the police for threatening to disturb peace.
Sagay Raj is reporting on this from Bengaluru. Sagay, we have seen reports that have come in from various parts of Karnataka over how this has become a major issue over there. Now, what is the administration telling you and how are they hoping to counter this? See, the Karnataka Home Minister has already given a press release where they have mentioned that they will take necessary action against all those organizations which is not following the Supreme Court verdict, and they have also requested people to follow and adhere to the instructions of the police. Now we are outside Karnataka Chief Minister resident Basavaraj Bommai, where you can see now Basavaraj Bommai is going out for his the first schedule, and much before he could leave from this place, the Congress leaders Nasir Hussain, UT Khader and NIA Harris and Nasir Ahmad had met him and addressed him on the raising issue of Azan versus Suprabhata, and they have requested Karnataka Chief Minister Basavaraj Bommai to act on this and ensure these kind of incident doesn't occur in future in the state of Karnataka. You can see now Karnataka Chief Minister is moving to his first program which has been scheduled. Much before that he had met he had met Congress leaders in his residence here in Bengaluru, and as we speak now, you can see there the Congress leaders are addressing the regional media, where they will be appraising the issue of increasing communal tension in the state, because after hijab and banning Muslim traders in various temples, now the issue of Azan versus Suprabhata has come to light in the state of Karnataka. All right. Of course, as Sagay is pointing out, of course, action is being taken now. Sagay, also give us a sense of action that's been taken against the members of the Sri Ram Sena. We understand that some of them have been placed under arrest currently to prevent the situation going out of hand. Yes, yes. Yes, in fact, few of them were detained from Vivek Nagar Police Station and Ashok Nagar Police Station. It is the same constituency of Mr. N.A. Harris, who just met Karnataka Chief Minister on Azan issue. So what is the issue which have been appraised to Karnataka Chief Minister? No. See, it is what should not happen. It is what they are trying to do. So we have requested, and CM also says what is unconstitutional will not be allowed to be done. And see, now Azan, there is a Supreme Court order which says the decimal of sound which it can produce and which should not produce in the day and in the night. And everyone are agreeing to follow that. There is no objection, or nobody is telling we will not follow it. So all are ready to follow it, and there is also a new equipment which has been a device which has been identified, which will be fixed in every religious place. This Supreme Court order is not only for masjid, it is for all religious place. And we all have to follow it, that's all it is, there is nothing else. So these people are just trying to take advantage of that and create law and order issue in the state. There is nothing other than that. So it is a Supreme Court order which everybody are willing to, and everyone accepts, and they will follow it. So do you think the mosques are following the instruction given by Supreme Court of reducing the decibel? Yeah. They all the mosques have agreed, and they will do it. And many of them have already purchased that new one automation system, which by automatically, like governor for the car speed and all. This also reduces and controls the sound. So it's already there, and everyone has agreed. See, this is for all. It is for mosque, temple, church, everybody. All have agreed to follow it. There is no problem. These people are unnecessary taking this issue and making noise. Assurance from the Karnataka Chief Minister Basavaraj Bommai when you requested him to address on this issue? No, he has agreed that law and order will be maintained. Nobody will be allowed to do anything untoward in all these things. It will be whatever the government has to do, we will do it. It's a Supreme Court order. So government has to follow that. There is nothing else. Unnecessary, it is being hiked up, and unwanted things are being spoken and coming in the media, which is creating more havoc. I think you people also need to control that and only give what is. See, we all have to live together happily. We cannot go on every day with one thing or the other.
So I'm sure there is nothing in this. This has been happening for years. Unknowingly, This is Congress MLA N.I. Harris, who had met Karnataka Chief Minister and appraised the issue, and he also says that CM has assured him that they will take law and order situation in the state of Karnataka. All right, thank you very much for joining us for the moment, Sage. Let's also listen into a reaction that we got earlier from Pramod Muthalik. ಮುಸ್ಲಿಮ ಸಮಾಜವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸೊಕ್ಕು, ನಿಮ್ಮ ಹಠ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ, ಸಭ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಜಾನ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವೇ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲ All right, FIR has been lodged with the Delhi police against the son of a Rajasthan minister for allegedly raping a 24-year-old woman belonging to a different religion. Now, the FIR was lodged at the Sadar Bazaar police station against the son of a Rajasthan minister. Well, an FIR, of course, has been lodged with the Delhi police against the son of a Rajasthan minister for allegedly raping a 24-year-old woman belonging to a different religion. Let's go across to Piyush, who's reporting live on this from New Delhi. Piyush, give us more details. Now, we understand that the woman has alleged that a man raped her on the pretext of marriage, and this was the son of a minister in the Rajasthan government. Well, yes, Nupur, a big case has been reported, and that's against the son of Rajasthan's minister, Mahesh Joshi. What we are now picking is that a case of alleged gang rape has been filed by Delhi police, and the investigations have begun. Yesterday, what we are learning is that this case was lodged here at a police station in North Delhi, there in southern area of Delhi. What we are now learning is that the victim had come to Delhi because she thought that she would not get justice in Rajasthan, and that is why she has come to Delhi and lodged a case against the son of the Rajasthan's minister. Police is now saying that they have now spoken to the Rajasthan police, and they have asked for proper details on this entire case. What the victim has also alleged in her complaint is that multiple videos were made, obscene videos were made, and it was threatened to her that if she goes and makes complaint, then those videos would be made public. We'll have to wait and watch how the investigation in this case is going to take place. But we are still waiting for the investigation to begin, though Delhi police is saying that they have now intimated to the Rajasthan police about the entire case. We'll have to wait and watch how the investigation in this case will further take place. But on this entire case, BJP has now demanded resignation of this minister. In fact, Shahzad Poonawalla of BJP is now saying that will Priyanka Gandhi go and meet with the victims, though she does to tour these states where BJP is ruling. Now, will she go and meet with the victim there, who has filed this case, or will she speak against Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot? As of now, there is no official confirmation or statement coming in from Rajasthan police, but yes, a very big case has come to light, and that's against the minister, the son of minister there in Rajasthan government. We are still waiting for an official word coming from either Chief Minister of Rajasthan Ashok Gehlot or from Rajasthan police. Though we have seen Rajasthan police getting active in other cases, but it will be important to see if the Rajasthan police will actively play its role and take actions in this case and intimate Delhi. बंद हो गया। महेश जोशी के बच्चे ने जिस प्रकार का दुष्कर्म किया, और लंबे समय तक दुष्कर्म किया, 1-2 दिन भी नहीं, कई दिनों तक, और यहाँ उस महिला को FIR दर्ज करने में भी भय लग रहा था। इसके कारण से उसने दिल्ली में जाकर 0 FIR दर्ज कराई, और वो जहाँ अपराध हुआ उस जगह वो ट्रांसफ़र हो गई।
अब इसको भी इधर उधर करने का या ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास करेंगे तो मेरी मुख्यमंत्री से विनम्र प्रार्थना है, चाहे अपराधी मैं हूँ, मेरा परिवार हो, अपराधी को दंड देना यह आपका धर्म बनता है। अगर आप इसको बचाओगे तो ऐसा लगता है कि आप और आपकी सरकार अपराधियों को और विशेष करके जो कांग्रेस के बहुत जाने माने लोग हैं उनको बचाने का अगर प्रयत्न करोगे तो सारे देश में कांग्रेस की छवि को आप इतनी बिगाड़ोगे, जो पहले भी बिगड़ी हुई थी अब और आगे बढ़ जाएगी। मेरी प्रार्थना है कि अपराध जिसने किया, लड़के ने किया, लड़के को दंड दो। वहीं दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल है, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा भी माना जा रहा है, बूथ लेवल पर लोगों को करेंगे, तो कितना एक फायदेमंद? तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम बहुत पहले से तय था और विशेष करके वो हनुमानगढ़ गंगानगर जो क्षेत्र सामान्यतः अभी भी हमारी पार्टी की दृष्टि से बहुत सशक्त क्षेत्र हम नहीं मानते हैं और इस कारण से स्वाभाविक है उस क्षेत्र माध्यमातून झालेल्या कारवाईची पुरी तक्रार दिल्लीला देणार आहे आणि त्याचप्रमाणे आज BMCचं पथक मुख्यमंत्र्यांनी आमच्याकडे पाठवलेलं आहे। मी 4 दिवसांहून त्यांची वाट पाहत होतो, पण माझं मुख्यमंत्र्यांना सांगणं आहे की आपण सुद्धा ऑनलाईनच्या माध्यमातून, माझा एकच फ्लॅट मुंबईला आहे, जे चौकशी करायची आहे तुम्ही पण ऑनलाईनच्या माध्यमातून त्या फ्लॅटची पाहणी करून घ्या। तुम्हाला जर काही अडचण असेल तर अनिल परब आणि संजय राऊत हे तुमचे उजवे आणि डावे दोन्ही लोक खाली बसलेले आहेत, त्यांना सुद्धा फ्लॅटची मोजमाप करायला पाठवा। आम्ही त्यांचं स्वागत करू आणि सगळीकडे चारही कोपरे बघून घ्या, मोजमाप करा। आज त्यांना आले तर त्यांना आमची विनंती आहे येऊन पाहून घ्या। आणि त्याचसोबत मला असं वाटते राज्यामध्ये अनेक प्रश्न आहे, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आहे, शेतमजुरांचे प्रश्न आहे, मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी राज्यामध्ये वाढलेली आहे, औद्योगिक विकास थांबलेला आहे आणि या राज्यामध्ये ज्या राज्यामध्ये लोड शेडिंगचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढल्यानंतर पाण्याची टंचाई अनेक समस्या राज्यामध्ये असल्यानंतर जर आमदार रवी राणा आणि खासदार नवनीत राणाला जेलमध्ये टाकण्यासाठी, त्यांना त्रास देण्यासाठी जर या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्या यंत्रणा काम करत असेल, रवी राणाचा फ्लॅट बघून तो फ्लॅटची चौकशी करणे, मोजमाप करणे याच्यामध्ये जर राज्याचं भलं होत असेल तर जरूर मुख्यमंत्र्यांनी ऑनलाईनच्या माध्यमातून आमचा फ्लॅट बघून जे कारवाई करायची आहे खुशाल करा। हे बिल्डिंग 15 वर्ष आधी बनलेली आहे, ज्या बिल्डरनी आम्हाला फ्लॅट विकला त्या बिल्डरनी या ठिकाणी बसलेले 10-12 लोक जे आहे परिवार, त्या परिवाराला सुद्धा विकलेला आहे। म्हणून मला त्यांना सांगणं आहे की आपण जरूर ऑनलाईनच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांनी आमच्या फ्लॅटची पाहणी करावी, कारण मुख्यमंत्र्याला आता कुठलेही काम महाराष्ट्रामध्ये राहिलं नाही आहे। या महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री महाराष्ट्रामध्ये आहे किंवा नाही आहे अशी परिस्थिती महाराष्ट्रामध्ये निर्माण झालेली आहे। द्वेषाचं राजकारण करून मुख्यमंत्री राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादांनी काही बोललेले आहे की आम्ही खार पोलीस स्टेशनमध्ये चहा पिलो, जरूर चहा पिलो। जेव्हा आम्हाला इथून अरेस्ट केलं त्यानंतर त्या ठिकाणी आमचे वकील आणि आम्हाला त्यांनी चहा पाजला आणि तुम्हाला बेल देतो इथे अशा प्रकारचं सांगण्यात आलं। जेव्हा 12:30 नंतर त्या ठिकाणी आम्हाला आपल्या शांतापूरच्या लॉकअपमध्ये नेण्यात आलं, कुठल्या मीडियाला सांगितलं नाही, कोणाला इन्फॉर्म केलं नाही आणि आम्हाला सुद्धा सांगितलं शांतापूरच्या पोलीस स्टेशनमध्ये तुम्हाला बसू आणि उद्या सकाळी कोर्टामध्ये घेऊन जाऊ। तर रात्री 12:30 नंतर जो त्रास नवनीत राणांना दिला, जो एक या विधिमंडळाचा आमदार म्हणून मला त्रास दिला आणि त्या ठिकाणी ज्या त्रासामध्ये आम्हाला सकाळी 5 वाजेपर्यंत आणि सतरंजी देण्यात आली नाही, त्या ठिकाणी खासदार नवनीत राणाला लॉकअपमध्ये उभं राहावं लागलं। त्या सगळ्या परिस्थितीची अजितदादांनी माहिती घ्यावी, कारण की राज्यामध्ये मुख्यमंत्री आहे की नाही आहे अशी परिस्थिती आहे। पण अजितदादा या राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून जर कारभार पाहत आहे
तर मला असं वाटतं त्यांनी याची सुद्धा माहिती घ्यावी आणि एका महिलेला असं अपमान, अशा प्रकारची वागणूक जर महिला खासदाराला या राज्यामध्ये देत आहे तर अजितदादांनी त्याची सुद्धा माहिती घ्यावी अशी मला वाटते. आज हम लोग दिल्ली जा रहे जहाँ पे महिलाओं का सम्मान किया जाता है. देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जो हमेशा हर राज्य में जो अन्याय होता है उस अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ते हैं, साथ देते हैं. और एक महिला खासदार के साथ जो बर्ताव हुआ है, जो राज्य के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से एक द्वेषी कार्रवाई जो की है उसके खिलाफ देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को भी हम मिलेंगे. देश के पार्लियामेंट के स्पीकर ओम बिरला जी उनको भी मिलेंगे. और उसके साथ कई एजेंसी जो एजेंसी के माध्यम से संजय राउत और अनिल परब और ऐसे कई नेताओं की चौकसी चालू है और उस चौकसी के ऊपर कार्रवाई की टंगती तलवार है. उसके माध्यम से दिल्ली में रह के जो कार्रवाई भ्रष्टाचार और घोटाले के माध्यम से राज्य में चल रही है उस पर कार्रवाई होना चाहिए. वो भी हम मांग करेंगे. और हमारे ऊपर जो कार्रवाई हुई उसकी पूरी जांच दिल्ली से हम कराएंगे और हमको न्याय मिले तक हम दिल्ली में वहाँ पाठपुरावा करेंगे. और मुझे लगता है इस महाराष्ट्र के अंदर राज्य के मुख्यमंत्री हमारा फ्लैट देखने के लिए जो आज महानगर पालिका का पथक भेज रहे हैं उनको मेरी सलाह है कि महानगर पालिका ने ही 15 साल पहले इस बिल्डिंग को मान्यता दी है. उनके ही महापौर थे, उनका ही प्रशासन था और वो आज 15 साल बाद हमारी बिल्डिंग, हमारे यहाँ पे जो एक फ्लैट है, मुंबई में मेरा एक ही फ्लैट है. मेरे 10 घर नहीं है संजय राउत और अनिल परब जैसे और उद्धव ठाकरे जैसे. मेरा एक ही घर है. एक घर के अंदर जो भी तुमको गिनना है वो पूरा पथक का स्वागत है. पूरे चारों कोने गिन लो. और मुझे लगता है अनिल परब और संजय राउत भी खाली बैठे, उनको भी भेजो, वो भी यहाँ आके देख लेंगे. और मुख्यमंत्री भी ऑनलाइन के माध्यम से पूरे 2-2.5 साल से काम कर रहे हैं. उन्होंने भी ऑनलाइन के माध्यम से हमारा फ्लैट देखना चाहिए. वो भी उनसे मैं मांग करूँगा. और जो हमारे साथ 23 तारीख को रात को शांताकुश लॉकअप में 12-12:30 बजे के बाद हुआ है, 5 बजे तक नवनीत राणा को खड़ा रखा, वहाँ शतरंजी दी गई नहीं, पानी दिया नहीं, बाथरूम यूज़ किया नहीं गया और लॉकअप में डाला गया, उसकी पूरी माहिती मैं राज्य के उप मुख्यमंत्री से विनंती करूंगा. पूरी माहिती 23 तारीख को 1 बजे से लेके तो जेल तक पूरी माहिती आप निकालो और वो राज्य का जनता को दो कि हमारा साथ क्रिमिनल से भी खराब हमारे को ट्रीटमेंट दी गई. एक महिला का किस तरह से अपमान, किस तरह से द्वेष का राजकारण राज्य के मुख्यमंत्री ने किया, ये पूरे देश की जनता जानना चाहती है, राज्य की जनता जानना चाहती है. और वो उप मुख्यमंत्री जी ने पूरा खुलासा खुद होके बाहर निकालना चाहिए और यहाँ के सभी जनता को देना चाहिए. ये मेरी मांग है. और आज हम दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से हम कार्रवाई करके ही लौटेंगे. मैं मराठी नहीं बोलता, पहले मराठी नहीं बोलता. जहाँ पे मुझे लगता है महाराष्ट्र के अंदर ओबीसी समाज का बहुत बड़ा प्रश्न है, ओबीसी पे बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है. और राज्य के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के कई विषय बाजू में रख के अगर नवनीत राणा, रवि राणा की जमानत कैंसिल होना चाहिए, इसके लिए अगर ताकत लगा के कोर्ट में जा रहे हैं तो मैं आपको कहता हूँ हमने कोई कोर्ट का अवमान नाही किया आहे. आम्ही कुठल्याही प्रकारचं कोर्टाचं अवमान नाही केलेलं आहे. आम्ही या ठिकाणी कोर्टाच्या नियमाचं पालन केलेलं आहे, संविधानाचा नेहमी आदर करतो. आम्ही कुठल्याही त्या विषयाचा उल्लेख न करता आम्ही प्रत्येक गोष्टीचं उत्तर दिलेलं आहे. आणि मेरे को लगता है कि कोर्ट का कोई भी अवमान हमने किया नहीं है. और कोर्ट में जो जा रहे, मुझे लगता है महाराष्ट्र में कई समस्या है, ओबीसी समाज के ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसके लिए कोर्ट में जाना चाहिए, ओबीसी समाज को न्याय देना चाहिए. महाराष्ट्र के कई प्रश्न कोर्ट में प्रलंबित है, उसके लिए मुख्यमंत्री ने आगे आना चाहिए. और आज हमारे खिलाफ जो कोर्ट में जाने वाले हैं, हमने कोर्ट का हमेशा सम्मान किया है, आदर किया है और कोर्ट के निर्णय का कहीं उल्लंघन किया नहीं है. और मुझे लगता है संविधान और लोकशाही के माध्यम से जो हमको जवाब देना है वो हमने जवाब दिया है और कोर्ट का कोई अवमान किया नहीं है. ऑर्डर में साफ कहा गया था कि आप मीडिया से इस बारे में बात नहीं करेंगे, केस के बारे में. मैंने केस के बारे में जो घटना हुई है उस घटना का कोई उल्लेख हमने किया नहीं. हमारे खिलाफ जो यंत्रणा काम कर रही है
हमें कहीं ना कहीं रोकने के काम कर रही है, हमारा आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। सरकार के खिलाफ हमने बात किया है और सरकार के खिलाफ बात करना, मुख्यमंत्री के खिलाफ बात करना, किसानों की और आम जनता के न्याय के लिए बात करना, उसके लिए अगर आवाज़ हमारी दबाते हैं तो हमारी आवाज़ दबाएंगे नहीं। संविधान ने हमें अधिकार दिया है, उसके खिलाफ हम उसके माध्यम से बोलते रहेंगे और महाराष्ट्र के न्याय के लिए बढ़ते रहेंगे। मुंबई में आपने कहा है कि लीलावती हॉस्पिटल से जो वीडियोस आए हैं नवनीत राणा उस पर वो बात करेंगे। मैम आप आज ही कई मुझे लगता है कई शिवसेना के लोगों ने कहा है कि नवनीत राणा नाटक कर रही है। जब उनको लगता है कि शांता कुछ लॉकअप में नवनीत राणा को रखा जाता है, रवि राणा को रखा जाता है, जेल में डाला जाता है और शिवसेना के नेता बोलते नाटक कर रहे हैं और 3 दिन लगातार जो नवनीत राणा की ट्रीटमेंट हुई है, मुझे लगता है वहाँ का भी प्रशासन, वहाँ के भी जो वहाँ पे जो उनकी ट्रीटमेंट चली है उसके माध्यम से वहाँ तक वो सब जनता में बीच पहुँचा है। और कहीं ना कहीं जो अन्याय हुआ है, जो हमारे खिलाफ मुख्यमंत्री ने षड्यंत्र किया है, एक अहंकारी मुख्यमंत्री ने हमारे ऊपर जो जुल्म किया है, उसके खिलाफ पूरे मीडिया में वो आवाज़ आना चाहिए, वो बात आना चाहिए। अगर उनको लगता है तो शांता कुछ लॉकअप के 1 बजे से 5 बजे तक की वीडियो रिलीज़ करो। हमारे साथ जेल में जो बर्ताव हुआ है उसके पूरे वीडियो रिलीज़ करो। ये मैं मुख्यमंत्री से और हमारे उप मुख्यमंत्री से मैं मांग करूँगा। आराम से बाबा। अरे यार, अरे लग रहा है लड़कियां हैं आप यार। मैं पकड़ ले। अरे बूम कुठे? ए भाई सगळ्यात पहिले आपण आज दिल्लीमध्ये जाणार आहे। काल मी डिस्चार्ज डॉक्टरांना रिक्वेस्ट करून डिस्चार्ज घेतला। अजूनही हेल्थ इश्यूज माझे तसेच आहे आणि त्याची केअर मला सुद्धा करायची आहे आणि त्याच्यासोबत जेही अगेन्स्ट मध्ये, कारण की इथे आम्ही जेही म्हटलं त्याच्यावर काही कारवाई कोणी केली नाही आणि त्याचे अगेन्स्टमध्ये, कारण की गुंडेशाही कोणी केली आणि दंगा करण्याचा प्रयत्न जर कोणी केला तर उद्धव ठाकरेचे गुंड्यांनी केले। आमचे घराचे बाहेर मुंबईला सुद्धा आणि अमरावतीला सुद्धा, त्या दोन्ही ठिकाणी ज्या पद्धतीने गुंडे पाठवून जे हल्ला करण्यात आला त्याच्या अगेन्स्ट आम्ही जेव्हा कंप्लेंट केली त्याच्यावर अजूनही काही कारवाई नाही। संजय राऊत जे पोपट आहे, रवीजींची भाषा आहे ते चवन्नी छाप ज्याला आपण म्हणतो, आणि त्यांनी म्हटलं की 20 फूट गड्ड्यामध्ये गाडून देऊ, त्याच्या अगेन्स्टमध्ये जेव्हा आम्ही इथे तक्रार दिली तर त्याच्यावर काही ॲक्शन नाही झाला। त्याच्यासाठी मी मुंबईला चालली आहे, दिल्ली चालली आहे आणि त्याच्यासोबत जे माझ्यासोबत घडलं आणि कोर्टाचा कोणीही जर म्हणत असताना अपमान आम्ही केला, आमच्यासारखे लोक, एक आमदार आणि एक खासदार कोर्टाचा सन्मान एक भारतीय नागरिक म्हणून नेहमी करत आलो आणि पुढे सुद्धा आम्ही त्याची पूर्ण रिस्पेक्ट करणार आहे। त्यांच्या आदेशाचं पालन सुद्धा आम्ही केलं। एकही शब्द आम्ही त्या विषयावर, ते ऑफेन्स बद्दल आम्ही हनुमान चालीसा वाचू आणि मातोश्री या तिन्ही चारी बाजूनी एकही वक्तव्य आम्ही केला नाही आणि त्या सब्जेक्टला धरून आम्ही काहीच बोललो नाही। आमच्यासोबत जेही घडलं, आम्हाला ज्या पद्धतीने पीडा पोहोचवण्याचं काम या सरकारने केलं, उद्धव ठाकरे बेसिकली त्यांनी केलं, त्याच्या अगेन्स्ट मध्ये मी दिल्ली चालली आहे आणि जाऊन जेवढेही प्रमुख नेते आहे जे महिलांना रिस्पेक्ट करतात, सन्मान करतात, असे आमचे देशाचे गृहमंत्री, आमचे प्रधानमंत्री आणि ओम बिर्ला साहेब ज्यांचे सभागृहाचे आम्ही मेंबर आहोत, त्यांना जाऊन मी भेटणार आणि जेही माझ्यासोबत घडलं, लॉकअपपासून ते जेलपर्यंत त्यांनी जे व्यवहार आपण लोकप्रतिनिधी त्याचेही काही नियम कायदे असतात। मला वाटतं की आमचे आदरणीय दादासाहेबनी, ज्यांना आम्ही दादा पूर्ण महाराष्ट्र बोलते आणि त्यांना आम्ही सुद्धा रिस्पेक्ट करतो आणि दादा आम्हाला ओळखते, दादासारखे एक सेकंड, दादासारखी
व्यक्तींनी असं भाष्य करणं मला वाटते आमच्यासारखे लोकांना डिमॉरलाइज करण्याचं काम करत आहे. तर पण मी दादांना एक रिक्वेस्ट करेन, दादांनी पोलीस स्टेशनची गोष्ट केली, ठीक आहे, ते व्हिडिओ व्हायरल केला, पण दादा एक महिला सोबत तुम्ही असताना या महाराष्ट्रामध्ये मुख्यमंत्री काही कामाचं नाही आहे ते आपल्यालाही माहिती आहे आणि तुम्हीच मुख्यमंत्रीचे पदापेक्षा जास्त काम करतात. तर आपण सुद्धा याची माहिती घ्यावं की लॉकअप पासून आणि जेलापर्यंत कोणत्या पद्धतीने आमच्यासोबत व्यवहार झाला त्याची चौकशी जर आपण केली तर आपल्याला माहित पडेल, कारण आपण ठोक रोख बोलणारे व्यक्ती आहे. तर त्याची माहिती घेऊन त्याच्यावर सुद्धा आपण बोललो पाहिजे, एवढी विनंती करते. आज मैं दिल्ली जाने वाली हूं और दिल्ली जाके पहले तो मैं बार बार यही कह रही हूँ कि हमने कोर्ट का हमेशा सम्मान किया है और मैं करती आ रही हूँ, और ये भारतीय नागरिक होने के नाते हमारे इस देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति कोर्ट का सम्मान करता है, उसी तरीके से हम भी करते हैं. कोर्ट हैज़ गिवन स्पेशल 9 ऑर्डर्स कि वो सब्जेक्ट पर हम कोई भी बात नहीं करेंगे. हमने ऑफेंस के बारे में बात नहीं की, हमने किस तरीके से ऑफेंस लगाया उसके बारे में बात नहीं की. वो सब बातें बाजू में रख के जो मेरे साथ लॉकअप से लेके जेल में हुआ, मेरी हेल्थ इशू को लेके जिस तरीके से उन्होंने अवॉइड किया, वो सब चीज़ों पे मेरा बात करना, लोगों को सामने ला के बताना. अगर एक लोक प्रतिनिधि के साथ में ऐसा हो सकता है तो एक आम पब्लिक के साथ में किस तरीके से व्यवहार होता है, ये मेरा बोलना बहुत ज़रूरी है. और एज ए लोक प्रतिनिधि ये संविधान ने मुझे अधिकार दिया है, मेरा अधिकार मुझसे किसी ने नहीं छीनना चाहिए. मैं आपको ये बताती हूँ कि दिल्ली जाकर मेरे देश के, हमारे देश के जो महिलाओं को रिस्पेक्ट करने वाले, जो महिलाओं के प्रति भावना रखने वाले, ऐसे हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री और हम जिस सभागृह के मेंबर हैं, ऐसे लोकसभा अध्यक्ष हमारे ओम बिरला साहब, इनको जाके जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं उनके अगेंस्ट कंप्लेंट देने वाली, क्योंकि महाराष्ट्र में मैंने कंप्लेंट दे के भी जिन्होंने खुलेआम गुंडेशाही के शब्दों में मुझे कहा कि इनको 20 फुट गाड़ देंगे और शमशान में इनके जलाने के लिए सामग्री भी पहुंचा दी गई है. तो मुझे लगता है इसके अगेंस्ट में दिल्ली जाके, जहां मेरा घर है, वो पुलिस स्टेशन जाके हम कंप्लेन करेंगे और जितनी भी चीज़ें लॉकअप से जेल तक हुई हैं उसके अगेंस्ट में कार्रवाई की मांग करूंगी मैं. और ऐसे कोई भी लोक प्रतिनिधि हो या आम व्यक्ति, नागरिक हो या महाराष्ट्र के या देश का, उसके साथ ऐसी दुर्घटना नहीं होगी. मुझे लगता है कि जो मैंने उनको चेतावनी दी है, किसी के नाम पे बैठकर खाना बहुत अच्छा है, पर खुद के हिम्मत पर खुद की पसीना निकाल के काम करने में बहुत अंतर है. महापौर लीलावती हॉस्पिटलला और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे बहुत ज्ञान की बातें करते हैं, मुझे उनको एक प्रश्न है. बीजेपी के पीठ पे खंजर घोंपने वाले ने सिद्धांतों की बात नहीं करनी चाहिए. सिद्धांत उद्धव ठाकरे के साथ में नहीं, बाड़ा साहब के साथ थे. सिद्धांत बाड़ा साहब के साथ चले गए और उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से धोखा देके बीजेपी के पीठ में खंजर खोपाए, उन्होंने हमको सिद्धांतों का ज्ञान नहीं देना चाहिए. सिद्धांतों का ज्ञान हम लेके चलते हैं, तो उन्होंने नहीं सिखाना चाहिए. मला असं वाटते मला असं वाटते की आम्ही लढणारे लोक आहे, घाबरणारे लोक नाही. और जो भी लीलावती का जो भी चीज़ें ये बात कर रहे हैं, इनको कोई काम नहीं है. अगर काम होता तो हमारे एक एक व्यक्ति, नारायण राणे साहब का हो गए, बाकी जितने भी जन हैं जो इनके विरोध में बोलते हैं, घरों पे कार्रवाई करते हैं, घर तोड़ते हैं या उनको अंदर डालते हैं, यही काम उद्धव ठाकरे के और उनके आजू बाजू जो पिलांटू हैं, जो उनके सलाहकार हैं, जिन्होंने बीजेपी के पीठ में खंजर कैसे घोंपना सिखाया. तो मुझे लगता है कि उन पे बात करना और पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार करणार आहात तर पोलीस ठाण्यामध्ये कोणाच्या विरुद्ध तक्रार दाखल करणार आहात दिल्लीला? पोलीस स्टेशनमध्ये मैं एक चीज़ बता सकती हूँ कि 5 साल देवेंद्र साहब ने भी राज्य चलाया है. ऐसी श्रूड की राजनीति कहीं पर भी महाराष्ट्र में कभी नहीं हुई.
अगर सीखना है उद्धव ठाकरे जी को तो उन्होंने देवेंद्र साहब से सीखना चाहिए कि महाराष्ट्र किस तरीके से चलाना चाहिए और किस भावना से चलाना चाहिए. शुरूढ़ बुद्धि. I'll tell you one thing. I'm going to go Delhi and meet all the leaders who respect women. I'm going to meet them. The respected HM, the respected Prime Minister of this India, the respected the Lok Sabha Speaker. I'm going to meet him and I'm going to tell him what happened from jail to the lockup. From lockup to You want to meet the PM as well? You want to meet the PM as well? Yes, I'm going to request him. All right. And if he gives me time, I'm going to meet and give him all the details. Thank you, madam. Who's gone to jail as a representative, and that too which subject I have gone to jail. That is my question. I'm going to go and ask him to inquire about this. Whatever happened with me, it is not justice. It is happening. This kind of action is happening against this kind of people. I think this is not the way the Maharashtra is. Have you had a word with the Home Minister today morning, ma'am? Today morning, ma'am? Today morning. I have spoken. And we'll see you in Delhi. So, breaking news coming in there, the Rana couple who are all set to meet the Lok Sabha Speaker Om Birla as well as Amit Shah in the national capital today will also be filing a police complaint with the Delhi police over the treatment that was meted out to them while they were in custody. So Navneet Rana and Ravi Rana sharpening their attack on the Mahavikas Aghadi government, saying that they will be meeting the Lok Sabha Speaker Om Birla as well as Amit Shah, and this meet comes in the backdrop of the Hanuman Chalisa face-off that has only been escalating all these days. The latest what we are told is that MP Navneet Rana and Ravi Rana will be filing a police complaint with the Delhi police. विरोधात त्या ठिकाणी सगळ्या एजन्सीला भेटणार. देशाचे पंतप्रधान, देशाचे गृहमंत्री अमित शहाजी आणि ओम बिर्लाजी यांना सुद्धा भेटणार आणि जे आमच्यासोबत घडलं सगळी माहिती सांगून त्या ठिकाणी कारवाई झाली पाहिजे. जे महाराष्ट्रामध्ये होत नाहीये ते त्या ठिकाणी दिल्लीच्या माध्यमातून कारवाई करणार आणि गेल्याबरोबर दिल्लीला जाऊन पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार सुद्धा करणार. राजकारण आणि देवेंद्रांची सत्ता याची तुलना कुठेतरी वेगळ्या पद्धतीने करताय. मुख्यमंत्री हे वेगळ्या पद्धतीने शूट राजकारण करताय असं थेट सगळ्या महाराष्ट्राने पाहिलेलं आहे. देवेंद्र फडणवीसजी ज्याप्रमाणे महाराष्ट्राला पुढे नेलं आणि पॉझिटिव्ह राजकारण केलं, सगळ्यांना घेऊन महाराष्ट्राच्या उन्नतीसाठी देवेंद्र फडणवीसजींनी काम केलं. त्यांची ट्युशन उद्धव ठाकरेंनी लावली पाहिजे, कारण की द्वेषाचं राजकारण करून महाराष्ट्र चालणार नाही, खुनसीचं राजकारण करून महाराष्ट्र चालणार नाही. महिलांचा अपमान गेल्या अनेक वर्ष अनेक मुख्यमंत्री होते, कधी एवढा महिला खासदाराचा अपमान केला नाही. तो खासदार उद्धव ठाकरेंनी केलेला आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये शेतकरी परेशान आहे, शेतमजूर परेशान आहे, बेरोजगारी वाढलेली आहे, त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात लोड शेडिंग वाढलेलं आहे, अस्तव्यस्त महाराष्ट्र झालेला आहे. या व्यस्त महाराष्ट्राला थांबवण्यासाठी उद्धव ठाकरेंनी खऱ्या अर्थानं देवेंद्र फडणवीसची ट्युशन लावावी, तरच महाराष्ट्र हा जागा होऊ शकतो. महाराष्ट्र के ऊपर डिस्कशन करेंगे. महाराष्ट्र में चल रहा है उसकी These are the live shots that we are getting from Delhi Shaheen Bagh, the bulldozers there at Delhi Shaheen Bagh. We will be going across to a reporter shortly who will be joining us from Shaheen Bagh. The first visuals that we've accessed of the demolition drive, which is set to take place, is being said to take place in Delhi. We have I'm told we have Piyush joining us from Shaheen Bagh. Piyush will be joining us very, very shortly, but those are the exclusive visuals we're getting to you from Delhi Shaheen Bagh, where the demolition drive is set to be taking place in a short while. We have Piyush back with us. Piyush, over to you. Tell us what is happening in Shaheen Bagh today.
Piyush, if you can hear us, if you could tell us about the demolition drive which is set to take place in Shaheen Bagh today. Well, we will connect with Piyush again. There seems to be a network problem, but the visuals on your screens that we are getting to you of the demolition drive which is set to take place in Delhi's Shaheen Bagh. And these are the live visuals we are getting to you from the national capital. The visuals coming in from Delhi's Shaheen Bagh, where the demolition drive is set to take place. We have Piyush back with us. Piyush, over to you. Tell us about the situation unfolding in Delhi's Shaheen Bagh right now. Well, right now we are here at the police station of Shaheen Bagh, where MCD officers have also come in. What we are now given to understand is that Delhi police is going to provide adequate force today, and demolition drive will take place today. That is the confirmation which we are right now getting from the people here. We are showing you visuals from right outside the Shaheen Bagh police station. Also, any minute from now, we can also see more JCBs to be called in. A few minutes back, we also showed to our viewers the visuals of JCB which was brought in here, and now after this more JCBs are to be called in, and then the demolition drive will be carried out. What we are now learning is that today is the day when SDMC is also to officially carry out a demolition drive, and we are showing you pictures from outside the Shaheen Bagh police station also, where police forces are being called in a large number. If Anil can show you more pictures of the police forces, those are now entering here. So what we are now learning is that today the demolition drive is all set to carry out, and today we are reporting from right now outside the police station here in Shaheen Bagh. Any minute from now we'll see more JCBs to be called in. What we are now learning is that one bulldozer was called in, which has now been sent to the spot there at G Block in Shaheen Bagh, where the demolition drive will be carried out. Delhi police has also told to SDMC, South Delhi Municipal Corporation, that they will be providing enough security. Remember that last time the drive was got cancelled because there was not enough security. Police personnel were not in large numbers, and that is why it had to be cancelled. But today, what we are now learning from the police sources is that they are going to provide the adequate security, and that is why the police personnel are also being called in here at the Shaheen Bagh police station. Couple of minutes back, JCB was also called in, and now it has been sent to a location where the demolition drive will be carried out. We'll have to wait and watch how this drive will be carried out. But the people there in Shaheen Bagh, who had encroached the areas, who had illegally encroached the areas, last time we saw they started removing their belongings from those areas. But today, what we can tell to our viewers is that even as people continue to encroach the land here in Shaheen Bagh illegally, the SDMC is making it very clear that it will take out demolition drive, and that is why police forces are also been called in here at Shaheen Bagh police station in Piyush, large numbers. Just stay with us. We'll just take a very short break and come back to you for all the latest. And it's a big crackdown on the Dawood network. Raids currently underway in across 20 locations in Mumbai. And the live visuals on your screens right now of the NIA crackdown on Dawood-Gang. Also, Pakistan drone shot down by BSF in Amritsar. 10 kilograms of heroin worth 50 crore rupees seized. It was a dark night with a bright idea. Guys, we need something big. Let's do what we always do. Something really bold. Let's take on the D segment. Let's create the big daddy of all SUVs, because nothing else will do. The big daddy of SUVs from Mahindra, coming soon. What is being claimed by the Hindu petitioners is that this particular structure of the mosque is entirely a temple. However, the Muslim petitioners have made it very clear that it's a 17th century building, which is why a recent videographic survey hurt their sentiments. जो लोग वहाँ के सर्वे को रोक रहे हैं, तो प्रश्न उठेगा क्या छुपाना चाहते हैं,
किस चीज के से घबरा रहे हैं कि ये बाहर आ जाए? भारत में कानून का राज है। अगर आप गलत तरीका अपनाते हैं तो उसकी काट भी है। जिस हिसाब से उन्होंने एक पहले 6 बजे के आसपास उन्होंने ये वारंट निकाला और दूसरा वारंट रात को करीब 10 बजे के करीब निकाला। तो इतना तो था ही, हम लोग इंतजार कर रहे थे। हमारे साथ हमारे ये बच्चे भी साथ में थे, कुछ मीडिया कर्मी भी साथ में थे और वो भी इस इंतजार में थे कि पुलिस कब आती है। लगभग 11 साढ़े 11 बजे न्यूज आई कि बग्गा ने उनके खिलाफ याचिका दायर की है। तब हम लोग निश्चिंत हो गए कि अब पुलिस कम से कम जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक नहीं आएगी। हम लोग रिलैक्स हो गए। 12 बजे के आसपास फैसला आ गया कि बग्गा को 2 दिन की राहत मिली है। अब उस राहत का फायदा किस हिसाब से उठाना है, क्या क्या करना है, ये बग्गा जाने, पार्टी जाने और उनके वकील जाने। इन्होंने कल फिर ये दर्शा दिया कि इस देश के अंदर कानून का राज चलता है। अगर अरविंद केजरीवाल सोचते हैं कि सत्ता के बल पे, पुलिस के बल पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा सकते हैं, झुका सकते हैं, तो फिर से मैं उनको कहता हूं, एक नहीं 100 FIR कीजिए। अरविंद केजरीवाल जी, मैं ये सवाल पूछूंगा कि आपने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को 24 घंटे के अंदर जेल की सलाखों में डालना था। आपने चुनाव के अंदर वादा किया था, लेकिन आप ही के विधायक ने, जो उस समय SIT कमेटी के सदस्य थे और जिन्होंने इस्तीफा दिया था, और आप उनका नाम बार बार लेते थे, जो आपके अमृतसर के विधायक हैं, ने ये कहा कि जिन लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को बचाया, आपने उनको प्रमोशन दे दी। In a shocking incident, 2 persons were injured after 15 to 20 rounds of firing took place in West Delhi, Subhash Nagar, late at night on Saturday. In fact, these firing took place yesterday in the middle of the night, after which 2 people have been injured. They have been rushed to the spot, and after the incident took place, several police officials were deployed in the area, and there is a heavy deployment in the shooting site, and several barricades have also been placed, and the inquiry has also been placed by the officials. According to the preliminary information that we're getting from the officials, the investigation has been put in place as to who was behind the firing. CCTV cameras are being constantly checked of the entire location, and the injured people are undergoing treatment in the nearby hospital. The entire incident took place on Saturday night. This is Sumi Rajapun for Republic Media Network with video journalist Ranveer, New Delhi. Refugees have gathered here in Jammu as a part of Smaran Divas to remember those who have attained martyrdom in the Pakistan's brutality. Getting in breaking news right now, Dawood and Chota Shakeel relative Salim Fruit have been detained after the massive NIA raids in Mumbai, which are being carried out in 20 locations, we are told as of now. We have Ankit who's joining us live from this spot where the NIA is carrying out raid in Mumbai. Ankit, over to you. What is the latest you can tell us? The latest, Samiksha, is that Salim Fruit, an aide of Chota Shakeel, who is also a member or was a member of the Dawood-Ibrahim gang, his current status is unknown, has been picked up by the NIA. We were right outside the Mir Housing Society, where earlier in the day we had got visuals of the raids in progress. Remember, the NIA raids are going on at over 20 locations. This is at Grant Road at the Mir Housing Society, and what we saw there was that there were at least 3 agencies present at the spot. One was the Mumbai police, which was providing peripheral security. Then there were CRPF jawans armed with assault rifles, and then there were at least two NIA officials. So we were waiting outside for some time, and then there was a little bit of activity. The police tried to clear the area, and then the 2 officials of the NIA came out. At first they had these big files with them. They went to their own vehicle and they moved things around. They put some of their things there. Then they went inside the building again, and the police cleared the entire area, and they came out with a person, and that person was Salim Fruit. So
An aide of Chota Shakeel, a member of the D-Gang, allegedly has been taken into custody right now in front of our eyes by the National Investigative Agency, and that is the big breaking update from Grant Road. Now remember, Samiksha, there are raids going on also in different parts of Mumbai, India's financial capital. Early in the morning, we were reporting from Nagpada. Grant Road is not far from here. Way in the north of Mumbai, in Borivali and Goregaon also, there are raids going on. Also in Santa Cruz in the suburbs, as well as in Mumbai in the port side area. And so right now, we can tell you just 5 minutes ago, the NIA picked up Salim Qureshi, who is an aide of Chota Shakeel, whose current status is unknown. But of course, he used to be a big member of the D-Gang. And so that is the latest right now that we can tell you. We are currently unaware whether there have also been people who have been picked up from other locations. Remember, there are about 200 personnel apparently involved in this operation, and then there are also, of course, the facilitator agencies, like we saw, and we've sent the visuals across. There were 3 men of the CRPF with assault rifles also there, and a number of personnel of the Mumbai police, and finally 2 investigators of the NIA, and those are the 2 investigators that took away Salim Fruit. We asked them also whether they'll be carrying out more investigations, whether they'll be raiding other areas as well, whether other people will be taken into custody, but they were totally tight-lipped. They did not say a word. In fact, they only came to check whether the coast was clear, and then they moved their files into their vehicle, and then they took Salim Fruit and they went away with him. So that is the breaking update right now, Samiksha. Well, absolutely, Ankit. Thanks so much. We'll keep coming back to you. In fact, Ankit, stay with us. We have those visuals as well. Dawood's aide, Salim Fruit, who has now been detained by the NIA as raids are currently being carried out in over 20 locations across Mumbai. And those are the very shots of the NIA raids that are being carried out. In the latest, what we are told is that Dawood aide, Salim Fruit, has been detained by the NIA. And it's loudspeaker versus loudspeaker in Karnataka now. Sri Ram Sena launches protests over loudspeakers for Azan. And survey findings to be presented before the court today as a political fight over the Gyanvapi mosque continues. It was a dark night with a bright idea. Guys, we need something big. Let's do what we always do. Something really bold. Let's take on the D segment. Let's create the big daddy of all SUVs. Because nothing else will do. The big daddy of SUVs from Mahindra, coming soon. In a shocking incident, 2 persons were injured after 15 to 20 rounds of firing took place in West Delhi, Subhash Nagar, late at night on Saturday. In fact, these firing took place yesterday in the middle of the night, after which 2 people have been injured. They have been rushed to the spot, and after the incident took place, several police officials were deployed in the area, and there is a heavy deployment in the shooting site, and several barricades have also been placed, and the inquiry has also been placed by the officials. According to the preliminary information that we're getting from the officials, the investigation has been put in place as to who was behind the firing. CCTV cameras are being constantly checked of the entire location, and the injured people are undergoing treatment in the nearby hospital. The entire incident took place on Saturday night. This is Sumi Rajapun for Republic Media Network with video journalist Ranveer, New Delhi. Refugees have gathered here in Jammu as a part of Smaran Divas to remember those who have attained martyrdom in the Pakistan's brutality when the part of Jammu and Kashmir was illegally occupied by Pakistan, and now these people have come from various parts of the country to remember those who have given the supreme sacrifice. Sir, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो हमारे वहाँ पर छूट गए विस्थापित लोग, हमारे जो वहाँ पर पूर्वज छूट गए हैं, उन लोगों को हम अपने साथ मिलाना चाहते हैं और हम उनके साथ मिलेंगे। POJK का जो हिस्सा उसको लेने के लिए आज संकल्प लेंगे और अपने जो पूर्वज थे उनको हम आज श्रद्धांजलि देंगे। श्रद्धांजलि दे रहे सर, आपसे जानना चाहूँगा, लगातार मांग उठ रही है POJK वापसी को लेकर, क्या कहना चाहें? ये बहुत अच्छा कदम है, ये ऐसा होना चाहिए, हम उधर जाएं वो इधर आए, एक दूसरे का मिलाप होना चाहिए।
वापस आना चाहिए पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर? बिल्कुल बिल्कुल वापस आना चाहिए पूरे का। We're reporting outside the Kashi Vishwanath temple over here and the mosque that is all mired into controversy. We'll take you straight to the visuals over here in Varanasi. In the visuals, we are bringing you the live pictures of this particular newly built Kashi Vishwanath corridor, and right next to it is the mosque which is under the scanner of all the controversies. This is the particular mosque where against which you can see there's a brown wall over there. My video journalist is zooming in and showing you the brown wall. The petitioner are questioning that they should be allowed to go inside and worship at the temple of Gauri Shringar. That particular brown wall that is just one of the walls of these mosques is being contended to be the Gauri Shringar temple by the devotees over here. And now in their petition they request that they should be allowed to go freely inside and should be allowed to worship and offer prayers over here. However, the mosque committee is against this entire. And breaking news coming in, Elon Musk has hinted his life is under threat. He has said, if I die under mysterious circumstances, it's been nice knowing you. So that's a statement coming in from Elon Musk, who has claimed threat to life. And going on to say, and I quote here, if I die under mysterious circumstances, it's been nice knowing you. So a very mysterious, sinister statement of sorts coming in by Elon Musk, where he has said he is facing threat to life. Going on to add that if I die under mysterious circumstances, it's been nice knowing you. Remember, this comes days after Elon Musk's takeover of Twitter for over $44 billion. And now we have Elon Musk hinting at threat to life. We have Bhakti joining us from the Mumbai newsroom. Bhakti, Elon Musk claiming threat to life. What more can you tell us? News that Elon Musk is now hinting like he has a threat to his life. Now, if his quote if you watch his tweet, he has written, "If I die under mysterious circumstances, it's been nice knowing you." Now, there are a lot of reactions, and he's tweeted this out just 4 hours back in the morning, and he's tweeted this to his 91 million followers. He's tweeted this out to his 91 million followers, and he's just recently overtaken Twitter, and now this tweet comes. It's a very cryptic tweet here actually, and if I read this tweet, Bhakti, we'll have to leave it at that as you keep tracking more on that story. So we have Elon Musk there hinting at threat to life. On the other side, Navneet and Ravi Rana to head to the national capital, set to have high-level meetings in the national capital. It was a dark night with a bright idea. Guys, we need something big. Let's do what we always do. Something really bold. Let's take on the D segment. Let's create the big daddy of all SUVs, because nothing else will do. The big daddy of SUVs from Mahindra, coming soon. We're reporting outside the Kashi Vishwanath temple over here and the mosque that is all mired into controversy. We'll take you straight to the visuals over here in Varanasi. In the visuals, we are bringing you the live pictures of this particular newly built Kashi Vishwanath corridor, and right next to it is the mosque which is under the scanner of all the controversies. This is the particular mosque where against which you can see there's a brown wall over there. My video journalist is zooming in and showing you the brown wall. The petitioner are questioning that they should be allowed to go inside and worship at the temple of Gauri Shringar. That particular brown wall that is just one of the walls of these mosques is being contended to be the Gauri Shringar temple by the devotees over here. And now in their petition they request that they should be allowed to go freely inside and
should be allowed to worship and offer prayers over here. However, the mosque committee is against this entire drill, following which, hearing the petitions, the court had asked for a videographic survey, but the entire endeavor fell flat, as when the court monitored committee of all the officials came here for the videographic survey, they were not allowed to go inside. There was a massive protest here at gate number 4 of Kashi Vishwanath temple over here. Hundreds of people from the Muslim community came forward and they expressed their displeasure, moving the Varanasi district court as well over here. They questioned that a videographic survey is a brazen endeavor and should not be done. उन्होंने खुली चेतावनी दी है खासदार नवनीत राणा ने कि उद्धव ठाकरे जनता के बीच आगे खड़ा रहना चाहिए, उनको उनके सामने खड़ी रहेंगे और उनको जवाब देंगे। News in brief from across the globe. Filipinos have begun voting for the new president, with the son of an ousted dictator and a champion of reforms and human rights as top contenders. While Ferdinand Marcos Jr. is leading in pre-election surveys, his closest challenger, Vice President Leni Robredo, has stabbed into shock and outrage over the prospect of another Marcos recapturing the top office. Slipping into a very short break. On the other side, big story coming from Rajasthan, as Rajasthan Congress Minister Mahesh Joshi's son booked for rape. It was a dark night with a bright idea. Guys, we need something big. Let's do what we always do. Something really bold. Let's take on the D segment. Let's create the big daddy of all SUVs, because nothing else will do. The big daddy of SUVs from Mahindra, coming soon. उन्होंने खुली चेतावनी दी है खासदार नवनीत राणा ने कि उद्धव ठाकरे जनता के बीच आगे खड़ा रहना चाहिए, उनको उनके सामने खड़ी रहेंगे और उनको जवाब देंगे। मेरे पे अन्याय हुआ, लॉकअप से लेकर जेल के प्रशासन से लेकर सभी जगहों पे, उसका मैं आप लोगों को डिटेल में बात करूंगी। श्री राम का नाम लेने में और हनुमान भगवान का नाम लेने में अगर कोई 14 दिन डालते हैं तो मेरी 14 दिन में कोई आवाज नहीं दबा सकता। अगर उन्होंने 14 साल भी डाला तो भी मैं भगवान का नाम लेना बंद नहीं करूंगा। What is being claimed by the Hindu petitioners is that this particular structure of the mosque is entirely a temple. However, the Muslim petitioners have made it very clear that it's a 17th century building, which is why a brazen videographic survey hurt their sentiment. जो लोग वहां के सर्वे को रोक रहे हैं तो प्रश्न उठेगा, क्या छुपाना चाहते हैं, किस चीज के से घबरा रहे हैं कि ये बाहर आ जाए। भारत में कानून का राज है। अगर आप गलत तरीका अपनाते हैं तो उसके काट भी है। जिस हिसाब से उन्होंने एक पहले 6 बजे के आसपास उन्होंने ये वारंट निकाला और दूसरा वारंट रात को करीब 10 बजे के करीब निकाला, तो इतना तो था ही। हम लोग इंतजार कर रहे थे, हमारे साथ हमारे ये बच्चे भी साथ में थे, कुछ मीडिया कर्मी भी साथ में थे, और वो भी इस इंतजार में थे कि पुलिस कब आती है। लगभग 11 साढ़े 11 बजे न्यूज आई कि बग्गा ने उनके खिलाफ याचिका दायर की है। तब हम लोग निश्चिंत हो गए कि अब पुलिस कम से कम जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक नहीं आएगी। हम लोग रिलैक्स हो गए। 12 बजे के आसपास फैसला आ गया कि बग्गा को 2 दिन की राहत मिली है
अब उस राहत का फायदा किस हिसाब से उठाना है, क्या क्या करना है, ये बग्गा जाने, पार्टी जाने और उनके वकील जाने। Ranas take the fight to the Maharashtra government. Navneet says they will not back down, will continue the struggle. Navneet and Ravi Rana to meet Home Minister Amit Shah and Lok Sabha Speaker Om Birla in Delhi. It's a mega crackdown on the Dawood network. Top Dawood 8, Salim Fruit, detained in Mumbai. It's loudspeaker versus loudspeaker in Karnataka now. Sri Ram Sena launches protests over loudspeakers for Azan. Rajasthan Congress Minister Mahesh Joshi's son booked for rape by the Delhi police. Elon Musk hints at threat to life, says if I die under mysterious circumstances, it was nice knowing you. Welcome to this edition of the news on Live and Breaking here on Republic TV. We get you at the very beginning all the updates on the Gyan Vapi Mosque controversy. The survey findings will be presented before the court today at around 2 p.m. as the political fight over the Gyan Vapi Mosque continues. Joining us now live is Madhurima, who's covering this story. Madhurima is in Varanasi. Madhurima, a very important and crucial day as far as the Gyan Vapi Mosque controversy is concerned. Court hearing likely on the survey. Give us some more details. What information do you have as far as the latest news is concerned? Well, it's a very crucial day today as far as the entire case is concerned because the endeavor that fell flat at the Gyan Vapi Mosque, where a court-appointed commissioner had gone for a videographic survey, was denied the permission to go inside the mosque because there was a massive protest over there, following which the Gyan Vapi Mosque Committee had filed an application in the court asserting that Ajay Kumar Mishra, the court commissioner that was appointed by the local court, should be changed because they alleged in their application that he seems to be a bit inclined towards the petitioners who are asking for a free way, a free pass to offer prayers at the Gauri Shankar temple. Now, Gauri Shankar temple is on the wall of one of the walls of the mosque. It's just on that. It is only separated through a very temporary barricading, and the petitioners, the four women who have filed this petition, have asked for a regular pass to go inside and offer prayers, because as of now only on Chaitra Navratri is the time when women can go, when devotees can go and offer prayers there. And after which the court had given a permission asserting that evidence is needed in this entire case, following which the court commissioner was appointed to go and collect the videographic evidence. And we all know that a massive protest erupted on day 2 when the entire court committee wanted to go inside and collect evidence after collecting evidence from the four walls of the mosque. And now today the court will be hearing the side of the petitioners. They've heard the complainants about the allegations that they have leveled. Today they will be hearing the court commissioner along with the side of petitioner as to what do they think about this application. We'll have to wait and watch. It's going to be a very crucial verdict, because if the court agrees that there would be no change whatsoever in the court commissioner's appointment, then the survey would begin again, because there's another case that seeks the report before 10. So we'll have to wait and watch. Survey would begin again. Madhurima, a short while back you were able to speak to Mr. R.P. Singh. Let's go across and listen in to what he had to say on this entire issue in this exclusive conversation with our correspondent Madhurima. Let's cut across. देखिए, अभी ज्ञान वापी
ज्ञान वापी का यह एक परिसर है। हाँ जी, ज्ञान वापी का परिसर। अब ज्ञान वापी का अर्थ दो तरह से लगाया जाता है। ज्ञान का तो आप स्पष्ट समझ में आता है। वापी का मतलब ये होता है कि जैसे कूप, शुद्धि जल जो है वो होता है, तो उस समय पहले आज जैसा ज्ञान वापी कूप बना है वैसा पहले नहीं था। 400 साल पहले वहाँ मिट्टी के सारे स्ट्रक्चर थे और मिट्टी के बहुत बड़े गड्ढे थे। जो जल गिरता था शिवलिंग पर वो दक्षिण दिशा से एक नाली बनी थी। ज्ञान वापी हमारा जो गर्भगृह है जहाँ शिवलिंग था, वहाँ से जो श्रद्धालु जल चढ़ाते थे वो दक्षिण दिशा में एक नाली बनी थी। नाली से जाके दक्षिण दिशा में गिरता था। वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा था। 450 साल पहले की बात है। अब वो ज्ञान वापी कूप बन गया है और अब वो तो पानी गिरता नहीं है, अब तो शिवलिंग ही क्षतिग्रस्त है, नहीं है। तो इसलिए अब उस स्ट्रक्चर की बात हम आपको करते हैं कि जो जिस स्ट्रक्चर पर मंदिर खड़ा हुआ, वर्तमान में जो मंदिर का अवशेष हमारे पास है, यदि उसकी संपूर्णता पर बात करें तो वह मंदिर 124 फीट लंबा, 124 फीट चौड़ा उसका आधारशिला रखी गई और उसी के बीच में उसको उस हिसाब से कि गर्भगृह किधर है, मंडप कैसा है और ये चारों कोनों पर जो हमारे देवतान विग्रह विराजित हैं इनको कैसा होगा, कंप्लीट स्ट्रक्चर इस प्लान में बना। अब इस प्लान के मुताबिक उन्होंने किया, लेकिन उत्तर तरफ की सड़क ऊंची। To the top story of this hour, bulldozers arrive in Shaheen Bagh. Piyush, our correspondent, to give us the live updates there. Piyush on the ground. Piyush, it's over to you. The last we heard, bulldozers had arrived. Police also deployed in quite a large number. Well, yes, we showed you the pictures of bulldozers. Those were called in there at the police station in Shaheen Bagh. Right now, we are present here at G Block Market of Shaheen Bagh, where bulldozers are all set to raise the illegal encroachment. Let me also try to show you pictures of these MCD vehicles. Those have been called in here. What we are also learning is that the bulldozers will be also reaching shortly here. They are at the police station. Bulldozers have already reached. A few of them will be reaching there, and you can also see as to how the officers, the police officers are now, MCD officers are now also using the different equipments. They are going to measure the area and then raise the bulldozers and then they are going to run over the bulldozers on the illegal encroachment. Right now we are showing you pictures from the G Block in Shaheen Bagh, where the illegal encroachment drive is also to be taken out. Many areas have been illegally encroached, which is what the South Delhi Municipal Corporation believes. Remember that last time when Ricky was done by SDMC mayor, he had come to Shaheen Bagh also. He had gone to Jasola, to Shaheen Bagh, to Okhla, to other areas of Delhi. Let me straight away also show you pictures of this entire market. This is very infamous market where the protest had also taken out. The anti-CA protests were also carried out here at the same place from where right now we are reporting. One more vehicle of MCD has come in here. So pictures of these vehicles we are right now showing here at the Shaheen Bagh, where the officials are already present here. You can also see as to how they are measuring. They are using different equipments which they will be using to measure, and then after doing the encroachment, they will put all the debris of the encroachment here in this truck, which we are right now showing. So in few minutes from now, this encroachment drive will begin. On my other side, one more truck can be seen entering into fray. There are two trucks are already present here, and these ropes would be used to put the debris inside this truck, and after that the drive would be continued till the Okhla area. It will begin from the Jasola part and then will move towards the Okhla area. And meanwhile, today the ward number 140 in Shaheen Bagh is the place where the bulldozers would be used. Illegal encroachment would be removed by the officers of South Delhi Municipal Corporation. We are showing you pictures of this truck here which will be used, where the debris would be put in. As of now,
the bulldozers have not come here. But yes, the officers of South Delhi Municipal Corporation, right now as we are speaking, they are at Shaheen Bagh police station. They are talking to police officers for proper security. Here only these trucks have been called in. So far, neither we can see bulldozers nor enough security personnel can be seen deployed here. Only media persons and locals have gathered here anticipating that drive to be carried out. Sources have also confirmed to us that SDMC has got permission, but as of now, neither bulldozer nor police officers have reached here. The officers of South Delhi Municipal Corporation are present there at the police station, where they are talking to the senior police officers and seeking the adequate number of police personnel so that this drive can begin. What we were told is that this drive was to begin at around 11 a.m. But as of now, this drive has not begun. Though few vehicles have come in here, these two trucks have been called in here by the Municipal Corporation of Delhi, South Delhi Municipal Corporation. But as of now, the drive has not begun. On the other side, few workers of SDMC have also been called in. I would ask Anil to come with me. We'll show you the pictures of these workers who are deployed here. But as of now, they have not begun their work. They are still waiting for cue from their seniors, and then after that itself, they are going to begin their drive. What we are also told is that G block main market is the place which is going to face the hour of bulldozer. Any minute from now, we can expect the drive to begin here at Shaheen Bagh. Remember that it has been news where BJP has been saying that illegal occupation is there, illegal encroachment has been done there at Shaheen Bagh by Rohingyas, by Bangladeshis. On this, we have also seen Aam Aadmi Party attacking BJP, and massive war reports have taken place on this very entire issue. Let me straight away also try to continue to show you pictures from here, this very market area where the drive will take place. We can also see few police personnel coming here. If Anil Sharma can zoom on the pictures, a few police personnel have come here. We are seeing the pictures of these police personnel reaching here at the main entrance of this market. Also, right behind me, more police personnel can be seen. So, drive is all set to begin. And before that, the preparations are being done. The officers of South Delhi Municipal Corporation, even they have reached here in large numbers. They were here to seek the permission. Yes, I would ask Anil to come with me. We will show you the first and exclusive pictures of bulldozer. We'll show you the first and exclusive pictures of bulldozer. That's the bulldozer which is now entering here at the Shaheen Bagh, and it will be used to raise the illegal encroachment. Republic is the only channel which is showing you the pictures of bulldozer which is now entering here in Shaheen Bagh. We are the only one showing you the pictures of bulldozer which is now reaching there at the market of Shaheen Bagh G block. We are showing you the exclusive pictures of this bulldozer which is now reaching here at Shaheen Bagh, and now the drive is all set to begin. Police personnel have reached at the same time. The South Delhi Municipal Corporation officers, even they have reached. We are showing you the pictures of this bulldozer which is all set to carry out the drive. Any minute from now, we can also see the massive deployment of police personnel. We are showing you the live pictures of this bulldozer which is now reaching here at Shaheen Bagh. G block main market is the place which is going to face the hour of bulldozer, and the illegal encroachments are all set to be brought down by the officers of MCD. We are showing you the pictures of this bulldozer which has now reached here at G block of Shaheen Bagh, and now any minute from now the drive is all set to be carried out. Remember that this is the very place which was also in a lot of news. We have seen massive war was also taking place between Aam Aadmi Party and BJP, where Aam Aadmi Party has been attacking BJP by saying that remember the So bulldozers in Shaheen Bagh in South Delhi, where the MCD has said that there has been a lot of illegal encroachment. The purpose behind the drive scheduled to happen in many places in Delhi to do away with illegal encroachment.
both commercial as well as residential in nature. Our correspondent Piyush on the ground there. And South Delhi's MCD is supervising, is in charge of this. तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये बुलडोजर एक तरह से प्रतीक बन गया है सरकारी नियमों को ताक पर रखकर जो कार्रवाई होती है, जो सरकारी नियमों को ताक पर रखकर निर्माण होते हैं, उसे हटाने के लिए अतिक्रमण की कार्य, उसके लिए ये बुलडोजर यहाँ पर पहुंचा है। मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखा दूं, क्योंकि यहाँ पर पहले एमसीडी के ट्रक्स पहुंचे, यहाँ पर एमसीडी की गाड़ियां पहुंची हैं और उसके बाद ये बुलडोजर पहुंचा है। ये तस्वीर आप देखिए, और जरूरी इसलिए है ये दिखाना, क्योंकि ये तस्वीरें जरूरी इसलिए क्योंकि इससे पहले पूरी कार्रवाई की तैयारी हो चुकी है। बुलडोजर सबसे आखिर में आया है। जब तक बुलडोजर नहीं आता लगता नहीं है कि कार्रवाई हो रही है, और इसीलिए हर कोई इंतजार में था। बहुत से लोग क्या कुछ कहा गया आपको? क्या मुझे कुछ ना पता जी। केवल आपको पता दिया गया था? हाँ जी। आप आगे कब से कार्रवाई शुरू करेंगे? वो पता ना जी। कब से शुरू करेंगे? क्या चीज हो? मुझे ना पता। और आपके साथ कितने बुलडोजर आए? मुझे पता। एक तरह से 100 दिन तक सड़क घेर का प्रदर्शन हुआ, उसके खिलाफ ये एक तरह से बुलडोजर ड्राइव कराई जा रही है, ये भी कहा जा रहा है। मैं आपको एक बार फिर से बताऊं कि बुलडोजर एक ही पहुंचा है और यहाँ गाड़ियां एसडीएमसी की पहले से ही पहुंच चुकी हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सिर्फ बुलडोजर की नहीं, बुलडोजर प्रतीक है अवैध निर्माण को हटाने का, और इसी बुलडोजर की कार्रवाई बुलडोजर पहुंचते यानी इसका सीधा मतलब ये है कि आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी। आज शाहीन बाग पर बुलडोजर चलेगा। शाहीन बाग को लेकर बुलडोजर चलाने को लेकर जो राजनीति गरमाई रही वो और ज्यादा गरमाएगी, ये बिल्कुल तय है। एक बार फिर बुलडोजर आया है, आपको बताऊं कि यहाँ पर अधिकारी आकर जानकारी देते हैं, यहाँ पर जो कर्मचारी पहुंचे हैं उन्हें जानकारी नहीं होती है। तस्वीरें देखिए, तो लोग यहाँ पर जो स्थानीय लोग वो बुलडोजर के सामने यहाँ पर आकर खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोग बुलडोजर के सामने आकर यहाँ पर गए हैं प्रदर्शन। उनका कहना है कि ये लोगों के पर दुकानों पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है। सामने की तस्वीरें सीधे बुलडोजर के जस्ट सामने जो है, ये जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी ड्राइव के नाम पर यहाँ पर कि ये जो बुलडोजर आया हुआ है ये इनकी दुकानों को तोड़ने के लिए आया है, यहाँ डेमोलिशन करने के लिए आया है, और किसी भी स्थिति में जो है इनको यहाँ पर बुलडोजर चलाने नहीं दिया जाएगा। ये यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर आकर लेट गए हैं, सामने बैठ गए हैं, वीडियो से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सीधी तस्वीरें सलिल आप जहाँ पर भी हैं मेरे पास आइए, क्योंकि यहाँ से जो तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी वो बहुत अद्भुत होंगी, बड़ी होंगी, अच्छी होंगी। यहाँ पर सलिल मेरे पास आइए, सलिल यहाँ पर आइए, सलिल यहाँ पर आकर खड़े होइए, और मैं यहाँ से आपको बता, सलिल आप यहाँ ऊपर यहाँ पर लोग ऊपर से दिखाइए किस तरीके से यहाँ और उनका चल रहा है। यहाँ में इस वक्त हंगामा हो रहा है। मैं लोगों को बताऊं, शाहीन बाग में इस वक्त हंगामा हो रहा है। बुलडोजर के आगे आकर लोग बैठ गए हैं। जो स्थानीय पुलिस है वो हटने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से उनका कहना यही है कि आखिर यहाँ पर ये जो बुलडोजर आया है ये कैसे आ गया। तो देखिए यहाँ पर ये बुलडोजर सलेल, ये बुलडोजर यहाँ पर, अरे आप लोग क्यों, देखिए कितनी भीड़ है, जमा हो गई है बुलडोजर के सामने, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये तमाम जो लोग हैं यहाँ पर आकर लेट गए, बैठ गए। फैसला आपने करना है, मुझे करना है, और देश के 125 करोड़ देशवासियों को करना है। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं यहाँ पर? क्या देखिए, ना कोई नोट, लेकिन सामने की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर जबरदस्त तरीके से जो स्थानीय लोग हैं उनका जमावड़ा यहाँ पर लगता चला जा रहा है। दिल्ली पुलिस के जो सुरक्षा कर्मी है वो यहाँ पर आ गए हैं, और हम इस वक्त खुद बुलडोजर के ऊपर मौजूद हैं, जो बुलडोजर चलने के लिए आया है। यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर जो स्थानीय पुलिस वाले वो हटाने की कोशिश कर दिया जाएगा तो आखिर कैसे काम चलेगा। आइए और लोगों से बात करते हैं। ऑडियो आ रहा है ना? So bulldozers arrived there at Shaheen Bagh. Our correspondents Piyush and Sucharita there on the spot. Meanwhile, crowds jostling the police there.
Earlier, MCD had said that it will not proceed with the demolition drive unless police gives them support, and this is well how it panned out. The police did provide support. Meanwhile, crowds gathered there as the here, but there are a few people who are now protesting against this drive of South Delhi Municipal Corporation. We'll try to go inside and talk to these protesters who have come here to protest the drive, the illegal encroachment drive, which is being carried out by the MCD. But the people here are now objecting to this. They are saying that bulldozers should not be used. They should not carry out the drive. क्या मांगे आप लोगों की? क्या मांगे आप लोगों की? क्यों आप पहुंचे यहाँ पर? हम लोग भी हमारे साथ होंगे। यहाँ पे शॉप चल रही है, मार्केट चल रही है, पूरी बसावट अच्छी गाड़ी है, प्रॉपर रोड है, हाईवे चल रहा है। कैसे काम हो जाएगा? क्या मैम आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? क्या मांग कर रहे हैं कि ये चीज वापस जाए, कुछ ना हो, ऐसा बस शांति से दिमाग चल रहा है। मार्केट चल रही है, मार्केट चलने दे, अच्छे से व्यवहार बना हुआ बने रहने दे। लेकिन इलीगल एंक्रोचमेंट है यहाँ पर। इलीगल तो बहुत कुछ है यहाँ पर। सरकार भी तो इलीगल बहुत सारे काम कर रही है। सरकार को तो कोई कुछ नहीं बोल रहा ना, किसी के पास पावर है। हम लोगों के पास पावर नहीं है, तो इसका मतलब वो कोई भी करेगी क्या? सोचने वाली बात है ना। तो यहाँ पर दिक्कत क्या है? लोग सरकार ये कह रही है कि यहाँ पर सरकार की जमीन पर जो है यहाँ पे लोग रोजी रोटी चला रहे हैं, दुकानें खोल रखी हैं, अपनी अपनी दुकानों में बैठे हुए हैं। यहाँ पे मार्केट बनी हुई है, ये शाहीन बाग बहुत अच्छा से बना हुआ है, अच्छे से चल रहा है। अब यहाँ पे एमसीडी अगर बीच में कुछ भी चाहिए, इन लोगों को कुछ भी दौड़ उठते हैं करने के लिए, कुछ ना कुछ, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। इन्हों का एमसीडी का पैसा कुछ भी लोन होता है, सरकार हमारे ऊपर आके डंडा फाड़ दी है। ये नहीं कि ऊपर वालों को फिल फाड़े। चल बुलडोजर चलने नहीं देंगे अपनी चांग पे, बिल्कुल नहीं चलेगा। बुलडोजर, the locals here are saying that they would not let bulldozer to run over here, and also the protesters have reached here. I would ask Anil to come with me, then we'll go inside. We'll go inside and talk to the protesters who have now gathered here. Let me try to show you pictures. From this side. Now police is trying to stop these protesters who are protesting here. You can see that they are now sitting right in front of bulldozer. They are not letting bulldozer to move on from this very place. You can see the massive presence of police personnel and the locals. Police is trying to control the situation. Police is requesting the protesters to move away from this very location, but the locals are sitting here in large numbers. Let's try to talk to them. क्या मांग है? आप लोग क्यों नहीं चाहते? हमारी मांग ये है कि इलीगल इस रोड पे कोई भी नहीं है, सारा पीडब्ल्यूडी के निशान के अंदर है, और इस रोड पे हम नहीं तोड़ने देंगे। लेकिन सरकार का कहने की इलीगल एंक्रोचमेंट है, तभी यहाँ बुलडोजर लेकर कहाँ है? आप जाके देखिए ना, फुटपाथ के अंदर बनी हुई है सारी चीजें। फुटपाथ इस साइड है, आप जो मेन फुटपाथ है वो ये है जहाँ पर आप खड़े हुए हैं, इसको तोड़कर रोड बनाया गया है। बिल्कुल। तो ये क्या आप बुलडोजर नहीं चलने देंगे यहाँ पर? नहीं, जायज जगह चलने देंगे, नाइज जगह हम नहीं चलने देंगे। इस रोड पे कोई भी इलीगल नहीं है, सारा जायज जगह। Protesting, showing which is right now underway right here in Shaheen Bagh. Locals have gathered here in large numbers, and the locals are protesting against this illegal encroachment drive which is being carried out by the South Delhi Municipal Corporation. So bulldozer has been stopped here. Bulldozer has been stopped here by the locals here, and they are not allowing the drive to be carried out. Remember that SDMC had also sought proper permission. In fact, they had also shown. In fact, they had also not only sought permission, but also the police personnel were deployed in large numbers. The bulldozer of the driver is sitting there. I'll go and talk to the driver also and try to understand what will be the next course of action. What will be the next course of action as this drive has been halted by the locals here. Let me try to talk to the driver also, because he was told here he was told by the officers to reach him. He was told by the SDMC officers to come here with bulldozer. Now the driver is sitting inside. He is sitting idle. He is not talking. Also on the other side, there are other officers also from SDMC who have reached here. So the officers had come here with proper permission, but now the locals are protesting. The locals are not letting the drive to be carried out. It's an illegal encroachment which has been done by few people, and here the SDMC wants to
run down to pull down the illegal encroached areas, but the locals are not letting that to be done, and that is why they have gathered here in large numbers. We also spoke to few locals where they are saying that they will not let bulldozers to raise this illegal encroachment. In fact, they are saying that it's not illegal. It is built. All the buildings, all the structures have been built on legal areas. This is what the locals are telling us. Right now, as we are speaking, they are raising slogans. They are sloganeering against this encroachment drive which is being carried out by the South Delhi Municipal Corporation. We'll have to wait and watch what is going to be the next course of action of these officers of SDMC who have gathered here, in fact who reached here to carry out this drive, but now they have been stopped here by the locals. We are also showing you the pictures of the market area. That's the market area of Shaheen Bagh. In fact, this is the same place which had also seen the massive protest which took place a couple of months back against the Citizenship Amendment Act, and the officers had to take a lot of time. It was a tough time for the officers to remove the protesters also, and today once again we are seeing the protest taking place at the same location, at the same place where the NTCA protests had taken out. And today when the bulldozers reach here, the protesters are again protesting, and they are now demanding that bulldozers should not be allowed. In fact, they are saying that it is not an illegal encroachment. In fact, it is a legal encroachment. We are continuously showing you the protest we are showing you the visuals of protest which is taking place here in Shaheen Bagh area of national capital. सड़क के किनारे उस चीज वो जो city's procedure is concerned. Well, Piyush, if you can hear me. Well, the demolition drive of the South Delhi Municipal Corporation in Shaheen Bagh underway. As you can see in those visuals, crowds gathered around the bulldozer that was set to begin the demolition drive scheduled for today after the police provided support to the MCD. But crowds, locals, residents, others who are conducting their business here in Shaheen Bagh surrounding. It's over to का काम करेंगे तो हम ये साफ कर देना चाहते हैं क्यों और इलाकों में भी चल रहा है। देखिए मैडम, जहां भी इलीगल अगर बुलडोजर चल रहा है हम सबका विरोध करेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ मेरा मकान है, यहाँ मेरा घर है, मैं यहाँ का राइंदा हूँ, तो पहला फर्ज मेरा ये बनता है। बुलडोजर को इलीगल बता रहे हैं। बिल्कुल इलीगल है, बिना किसी नोटिस के आप किसी की दुकान गिरा देंगे। आपके चैनल के ऑफिस में अभी बुलडोजर भेजते हैं, आप इलीगल नहीं बताएंगे, कैसे आ गया? बताइए, पीडब्ल्यूडी का ये रोड है, बताइए। अब ये बताइए, ये प्रदर्शन जो आप बुलडोजर के बाहर कर रहे हैं, ये बुलडोजर के सामने कर रहे हैं, ये चलने नहीं देंगे। आप मुझे ये बताइए, ये रोड पीडब्ल्यूडी का है, पीडब्ल्यूडी से बताइए कितना चौड़ा रोड? नहीं देंगे क्या? बिल्कुल नहीं चलने देंगे मैडम, जब तक ये नहीं बताएंगे। पुलिस आएगी फिर भी नहीं। पुलिस आएगी तो पुलिस पहले हमारे ऊपर बुलडोजर चलाएगी ना। बताइए पीडब्ल्यूडी का रोड कितना चौड़ा है, एमसीडी का एरिया कहाँ से कहाँ तक है? पार्षद साहब कह रहे हैं शाहीन बाग और जामिया को टारगेट किया जा रहा है। शाहीन बाग और जामिया को नहीं, पूरे ओखला को टारगेट कर रहे हैं। आप लोगों का तो ये काम हो गया है। अबुल फजर में कोई कार्रवाई होगी तो शाहीन बाग में, श्रम विहार में कार्रवाई होगी तो शाहीन बाग में, हरिकोटी में ड्रग्स पकड़ी जाएगी तो शाहीन बाग में। पूरे ओखला को आपने शाहीन बाग का नाम लेकर के बदनाम करना शुरू कर दिया है। ये ऐसा नहीं होगा, और यहाँ पर जब तक संवैधानिक तरीके से कार्रवाई नहीं होगी हम होने नहीं देंगे। ये बुलडोजर तो अभी एक ही आया, चला भी नहीं है, आप लोग सब सामने बैठ गए। ये यहाँ पर आपको लग रहा है कि आप भी सियासी रंग दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी के? कांग्रेस पार्टी के लोग हों या आम आदमी पार्टी के लोग हों, जो भी असंवैधानिक बुलडोजर का विरोध करेगा वो सब साथ में करेगा। साथ में करेंगे मतलब आम आदमी पार्टी कांग्रेस भी साथ होगी? अरे न्याय के लिए सब साथ में खड़े होंगे, क्या बात है इसमें? आप क्या चाहते हैं, न्याय की लड़ाई अलग अलग लड़े? ठीक है, वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी साथ आ जाएगी अगर यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई का। तस्वीरें जरा एक बार दिखा देते हैं, एक बार हटिए जरा, तस्वीरें जरा दिखा देते हैं किस तरह से बुलडोजर के सामने बैठकर प्रदर्शन हो रहा है, और उसके लिए अगर दोनों पार्टियों को साथ आना पड़ा तो कह रहे हैं कि वो भी करेंगे। यहाँ पर बुलडोजर नहीं चलने देंगे, बुलडोजर किसी कीमत पर नहीं चलने दिया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ये देख लीजिए जरा, नीचे देखिए तस्वीरें, बुलडोजर नहीं चलने दिया जाएगा ये भी कहा जा रहा है। हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ भारत सरकार से कि आप दिल्ली के अंदर 1639 कॉलोनीज हैं, लेकिन हमेशा शाहीन बाग पर ही क्यों अटक होता है? भारत के राष्ट्रपति को, भारत के प्रधानमंत्री को ये समझना पड़ेगा कि भारत का जो मुसलमान है और जगहों पर भी तो
चल रहा है। मैडम, आप कोई भी कानूनी कार्रवाई करेंगे पेपर्स के साथ करेंगे। आंख बंद करके किसी का घर नहीं तोड़ सकते, न किसी की दुकान छोड़ सकते। मैं भारत के राष्ट्रपति से बिना कागज और नोटिस के तो कहीं भी नहीं चलना चाहिए, आप सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ नोटिस नहीं दिया गया। दिल्ली के अंदर दिल्ली के अंदर 1639 कॉलोनीज हैं। आप सबको तोड़िए ना। हर साल हर महीने आप शाहीन बाग पर अटैक करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को क्यों कर रहे हैं? शाहीन बाग पर क्यों कर रहे हैं? ये मुसलमानों पर अटैक करते हैं। आप ये कह रहे हैं? मैं भारत के राष्ट्रपति से कहना चाहता हूँ कि भारत के मुसलमान को जमीन पर जलता हुआ चिराग नहीं समझना चाहिए कि आप आएंगे बुझा देंगे। नहीं, पर वहाँ का मुसलमान भारत के दिल में बसता है। कार्रवाई हो रही है वहाँ पर, वहाँ हर धर्म देंगे आपका। आप पूरे दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा सीटें हैं, आप सब पर अटैक कीजिए, हम आपका साथ देंगे। लेकिन अगर आप शाहीन बाग पर अटैक करेंगे, हम दोबारा प्रोटेस्ट। कागज या नोटिस भेजा गया क्या लोगों को? अभी कोई नोटिस गवर्नमेंट इलीगल ऑक्यूपेंसी की है वो तो पहले खाली करे। ये पोल क्या है? नहीं रोड पे पोल सुनिए, ये ड्रामा चल रहा है, ड्रामा। अगर कुछ लग रहा है यहाँ पर तो आप करिए, कार्रवाई करिए, कौन रोक रहा है आपको? ठीक है, नहीं वो कह रहे कागज नोटिस नहीं दिया किसी ने। किसे दिया? कोई नोटिस नहीं दिया। आप कार्रवाई नहीं, कहीं नोटिस कुछ नहीं आया कभी भी आज तक। नहीं कुछ नहीं, तो बिना नोटिस के कार्रवाई के लिए पहुंच गए हैं। करिए, कार्रवाई करिए। अगर को लगता आपको करिए, अगर है तो करिए, अगर है तो करिए, करिए बिना तो नोटिस। ये वो कह रहे हैं कि ये जो आपने सीढ़ियां बना ली, छज्जे बना ली, ये सब आपने ये ड्रामेबाजी चल रही है, यहाँ लाके खड़ा कर दिया, वहाँ लाके खड़ा करिए। आप करिए, जो जहाँ लग रहा है तोड़िए, आप बताइए उन्हें कि भी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई अतिक्रमण नहीं है? ठीक है, अतिक्रमण नहीं है। वो कह रहे कागज नहीं दिया गया, नोटिस नहीं दिया गया, अतिक्रमण हटाने की बस बात कह दी गई है। शाहीन बाग के खिलाफ एक एजेंडा है, ये बार बार कहा जा रहा है। मैं एक बार तस्वीरें जरा उज्जवल दिखा दीजिए। बुलडोजर के बाहर सामने बैठ गए हैं कांग्रेस के नेता, वहां पर कह रहे हैं कि हम आगे नहीं चलने देंगे बुलडोजर को। ये पूरी जो कार्रवाई है ये सियासी है, कोई नोटिस नहीं दिया गया है। और हम यहाँ शाहीन बाग को टारगेट करने की बात फिर से कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सियासी टारगेट है और किस तरह से सियासी रूप से ये बुलडोजर चलाया जा रहा है, सिर्फ शाहीन बाग पर चलाया जा रहा है, जामिया पर चलाया जा रहा है, ये बात कह रहे हैं। ये देख लीजिए यहाँ पर इस वक्त बुलडोजर के सामने जिस तरह से भीड़ जमा हो गई है, सियासी भीड़ जरूर है, ये भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं ज्यादातर वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। आम आदमी पार्टी के एक नेता कह रहे हैं कि भाई हम तो साथ भी आ जाएंगे, दोनों पार्टियां, अगर बुलडोजर के खिलाफ कार्रवाई करने की बात होगी। जरा तस्वीरें उज्जवल एक बार फिर से दिखा दीजिए कि किस तरह से बुलडोजर के सामने प्रदर्शन हो रहा है। घेर लिया है बुलडोजर को, आगे नहीं बढ़ने देंगे, ये कहा जा रहा है कि किसी भी तरह की कोई कार्रवाई को अंजाम नहीं देने दिया जाएगा। शाहीन बाग को टारगेट किया जा रहा है। आपको याद होगा तकरीबन 100 दिन तक यही रोड जिस पर आज हम खड़े हुए हैं और जहां पर taking place here at Shaheen Bagh. My colleague Sarita is also picking the pictures up. Right behind me, you can also see the protest which is now taking place here at Shaheen Bagh. The people here are now protesting. I will shortly talk to the senior Congress leader who has also joined this protest and then try to understand the reasons as to why the Congress party has joined this very protest. We can now officially tell to our viewers that yes, the Congress party has joined this protest. Congress is opposing the demolition drive, and that is why the Congress leader has now come here. I'll talk to him. He's right now talking to some other media, but I will talk to him, who is now stepped on this bulldozer and is not letting the drive to be carried out. आपका नाम बताइए। मेरा नाम परवेज आलम है। मैं कांग्रेस पार्टी का यहाँ से इसी अबुल फजल वार्ड से कॉर्पोरेशन का 2017 में चुनाव लड़ चुका। कांग्रेस नेता हैं जी। तो बुलडोजर पर चढ़े हैं, क्या रीजन है? रीजन यही है कि ये बुलडोजर जो है ये नफरत का बुलडोजर है। ये एमसीडी के इशारे पे नहीं आया, ये दिल्ली प्रदेश के जो भाजपा के अध्यक्ष है आदेश गुप्ता, उसके इशारे पे आया है। और मैं इस बुलडोजर का वेलकम करूंगा अगर सबसे पहले ये बुलडोजर आदेश गुप्ता के घर पे चलता है। सबसे पहले ये बुलडोजर जो नॉर्थ एमसीडी के मेयर इकबाल सिंह, जिनके घर में इंक्रोचमेंट है, हमने सारी मीडिया रिपोर्ट्स देखी, उस पे चले तो हम इसका स्वागत करेंगे। लेकिन ये जो नफरत फैलाने के लिए, एक तरफा कार्रवाई के लिए, गरीबों पे बुलडोजर चलाने की कोशिश होगी तो हम इसके विरोध में। आप यहाँ खड़े हैं बुलडोजर के ऊपर, आप ये ड्राइव को रोक रहे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी साथ में हैं आपके? देखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता साथ है, मेरी उनसे बात नहीं हुई है, क्योंकि ये मेरा लोकल मामला, स्थानीय मामला है। तो हमारे जो लोकल स्थानीय जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो सब साथ हैं। मैं यहाँ का ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ। हमारी पूरी यूनिट यहाँ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता हैं जो बुलडोजर के सामने लेटे हुए।
आप चाहेंगे कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस प्रोटेस्ट में शामिल हो और ये ड्राइव को रोके? नहीं, पहले तो मैं उनको अवगत कराऊंगा। उन्होंने बार बार कहा है कि नफरत का बुलडोजर जिस तरह से खरगोन में चलाया गया, जिस तरह से जहांगीरपुरी में चलाया गया, ये ठीक नहीं है। जो भी मसला है, मुद्दा है, त्वरित न्याय नहीं हो सकता। आप कोर्ट जाइए, न्यायपालिका एक सिस्टम है, संविधान है। आप बुलडोजर से देश को नहीं चला सकते। यहाँ प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में लोगों की आवाज होती है, ना कि आप बुलडोजर तंत्र से देश को चलाएंगे। सर, एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर इलीगल एंक्रोच किया गया है। एमसीडी कह रही है कि हम इलीगल एंक्रोच एरिया को हटाना। मैं यही तो कह रहा हूँ कि लोगों को नोटिस दे, उनको आइडेंटिफाई करके बताए कि कौन सा एंक्रोच के नोटिस की जरूरत नहीं है सर। बिल्कुल है। आप किसी को टाइम तो देंगे, कहीं पे जाके बैठ। आप राहुल गांधी घर के बाहर जाके बैठ जाइए सर। आदेश, रिपब्लिक टीवी से मेरी गुजारिश है कि आप वाजिब घर जाकर देखिए। आदेश गुप्ता के घर में अगर इंक्रोचमेंट है तो पहले वो इंक्रोचमेंट हटाया जाए। आप कांग्रेस पार्टी के दफ्तर जाके अगर कोई बैठ जाएगा तो क्या वो इलीगल इंक्रोचमेंट नहीं होगा रोड पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी न सत्ता में है न सिस्टम में है। मैं कह रहा हूँ कहीं भी आप जाके बैठ जाइए तो क्या किसी भी जगह पर अगर इलीगल इंक्रोच किया जाएगा तो क्या वो इलीगल इंक्रोचमेंट नहीं है? देखिए, जो गरीबों का अधिकार मारा जाएगा तो कांग्रेस पार्टी हर बार सड़कों पे उतरेगी। The Congress leader Parvez Alam, we just spoke to him. He has confirmed to us that he is here as the Congress worker. In fact, he is going to talk to the senior leadership of the Congress party to take part in this protest. Republic TV exclusively spoke to this Congress leader Parvez Alam. He is standing on bulldozer. Once again, I would ask Vivek Anil to come and we'll try to show you how this person is now standing on a bulldozer. So the Congress party has officially joined this protest, which is certainly telling us as to how the Congress is opposing and with standing with these protesters here at Shaheen Bagh and not letting the SDMC to do its work. So the politics taking place here. Congress party officially opposes the demolition drive here at Shaheen Bagh area of national capital. We are right now showing you the pictures of this protest also, which is underway. I spoke to him that why shouldn't SDMC remove the illegally encroached area. He did not have any answers. He said that the top leadership is going to take a view on this. In fact, he would want the leadership to come here. Now the police force has come. Police personnel have come here to remove these protesters. Drama continues here at Shaheen Bagh at right in front of G Block Market. Now the protesters are being removed. You can see these Congress workers are now being removed by Delhi police. They will shortly be detained also. We are showing you the pictures of Delhi police personnel in large numbers who are now removing these protesters who were protesting here in front of bulldozer and were becoming a hindrance in the drive of South Delhi Municipal Corporation. So the Congress opposes the Shaheen Bagh demolition drive. That's the big story which we are right now tracking from Shaheen Bagh. We are showing you the pictures of police personnel who have come here in large numbers. A protester is now being detained. Well, officially, the Congress party has joined this protest. We spoke to Parvez Alam, senior Congress leader. He confirms to us that the Congress party will and is opposing and will continue to oppose this drive. Now the police personnel have been called in here in large numbers. This protester is now being detained by the officers of Delhi police. Slowly and gradually, all the workers of Congress party will be removed. This is what the police is going to do. But here, the official confirmation which we are right now getting is that the Congress has officially joined this protest opposing the demolition drive here in Shaheen Bagh. Let's continue to show you more pictures. Few women protesters have also stepped on the bulldozer. This is what we are hearing. On the other side, more protesters are being detained. More protesters are being detained by... Yes, now Parvez Alam is being detained. The Congress leader is now being detained by the Delhi police officers. Now the Congress leader Parvez Alam is being detained by the Delhi police officers. And we can also
of the action, police action, which is taking place here at the Shaheen Bagh. We are continuously showing you the pictures of this protest. A few protesters have jumped on bulldozers also, and they are not letting the bulldozer to move ahead. They continue to raise slogans. So now the police is in action. Police is continuously removing these protesters who are raising slogans here. The Congress is now sending out a clear message that it is standing with the people here. It will not let the drive to be carried out, and that is why we are seeing the sloganeering also taking place here. And now police personnel have come here, and they are also now removing the other protesters also who are in fact raising slogans. We showed you pictures of lady protesters, female protesters, and also Parvez Alam, who had jumped on the bulldozer. Now Parvez Alam has been detained, and other protesters are also now being detained by the Delhi police officers. In fact, SDMC had sought permission for this drive, and after that itself, the police personnel had also reached here in large numbers. Now the senior officers, now one more worker, we can also see few more people joining this protest, and they are raising their voice against this demolition drive which is being carried out by the South Delhi Municipal Corporation. We'll have to wait and watch what would be the next course of action of South Delhi Municipal Corporation, but few protesters have now stopped the bulldozer and not letting the drive to be continued. We will try to talk to these protesters and try to understand what will be the next course of action. आप बुलडोजर पे चढ़े हैं, क्या मांग है आपके बुलडोजर पे चढ़े हैं? हमारी मांग ये है किसी के बिना नोटिस के घर नहीं तोड़ा जाए। एनक्रोचमेंट के नाम पर यहाँ डेमोनेशन, यहाँ कोई एनक्रोचमेंट नहीं है स्नो रोड पर। अगर एनक्रोचमेंट यहाँ पर कोई डेमोनेशन ना हो, इस बुलडोजर को हम इसीलिए रोकने के लिए खड़े, किसी गरीब का मकान ना तोड़ा जाए। क्या कोई पार्टी भी आपके साथ खड़ी है? पार्टी में भीम आर्मी दिल्ली वाइस प्रेसिडेंट हम लोग खुद खड़े हैं यहाँ पर। यहाँ नहीं, अगर पूरी दिल्ली के अंदर जहाँ जहाँ एनक्रोचमेंट के नाम पर डेमोलिशन होगा, लोगों के घर तोड़े जाएंगे, वहाँ हम खड़े होने का काम करेंगे। भीम आर्मी, कांग्रेस और भी क्या पार्टी है इसमें खड़ी है? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ जो सरकार जुल्म अत्याचार करती है, वहाँ सभी पार्टियों को आगे आना चाहिए और सभी को लोगों की जो है खिदमत का मौका मिला है, खिदमत करने का काम करना चाहिए। लेकिन इलीगल एनक्रोच एरियाज है, इनको हटाने की बात की जा रही है। देखिए, इलीगल 80% जगह इलीगल है, पूरी दिल्ली के अंदर 80% इलीगल है। आप पूरी जगह को तोड़ोगे, भाजपा का मुख्यालय इलीगल है, आप उसको तोड़ने का काम करो, तोड़ो। So here the drive, now the police's action continues. A few female cops, female CRPF personnel have been called in, and they are now removing these protesters. We are showing you pictures of the female police personnel who have now been called in to remove the protesters, female protesters who were protesting against this drive. Showing you the live pictures of this police action which is now taking place here at Shaheen Bagh area of Delhi. Police have now reached here in large numbers and they are removing these protesters. Remember that these protesters did not let the bulldozer to move ahead and did not allow the drive to be further carried out. Now the police personnel have reached here in large numbers and they are removing these female protesters who had jumped on a bulldozer. We are showing you the pictures of these workers now being removed of Congress party from the bulldozer, and this certainly tells us as to how the police is now intensifying its action. CRPF personnel have also come here. Police personnel are also in large numbers. So all the protesters who were protesting here have now been are being removed here. CRPF personnel, police personnel in large numbers have gathered and they are not letting the bulldozer to move ahead. On this you can see how now the bulldozer is in action. Bulldozer is in action, moving. Bulldozer moving ahead. Bulldozer moving. The action. Bulldozer is now moving ahead. We'll see where it is heading to. Is this guy going to continue? The bulldozer is moving ahead. We are showing you the pictures of this guy. We are showing you the pictures of bulldozer which is now moving ahead. Republic showing you the pictures of this bulldozer which is now moving
from this part, from this area, and now we can now we can tell to our viewers that bulldozer is moving from this location, Sir, now moving from here towards the site where it has to carry out the demolition drive. We are showing you the pictures of bulldozer which is now moving ahead from this area, from this area, and now we'll have to wait and watch where this bulldozer is heading to. Bulldozer is now moving ahead, and now it is confirmed that drive will be carried out. Protesters have been removed. Police has increased security of bulldozer. Nobody now would be allowed to go near. Parvez Alam, a Congress leader, is still here. Let's try to get in a word from him and try to understand if this protest has come to an end. Parvez ji, क्या धरना खत्म? पुलिस यहाँ पर आई? बिल्कुल धरना खत्म नहीं, हम यहीं खड़े। बुलडोजर अभी भी हमारे पीछे है, हम हटने नहीं देंगे। आगे नहीं बढ़ने देंगे बुलडोजर? बिल्कुल नहीं बढ़ने देंगे। क्या कह रहे हैं आप लोग? हम ये चाह रहे हैं कि सबसे पहले आदेश गुप्ता का घर तोड़ा जाए। हम ये चाह रहे हैं सबसे पहले जो है इकबाल सिंह का घर तोड़ा जाए जहाँ इंक्रोचमेंट है। तो अब तो शाहीन बाग क्यों? यहाँ से पुलिस आप लोगों को हटा रही है। उनका काम है हटाना, हमारा काम है रुकना। हम यहीं रुकेंगे। और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार लोगों का विरोध। Now the workers of Congress Party are being detained. We are showing you pictures of the police action which is taking place here at Shaheen Bagh. Now the workers who are protesting here, they are being detained. They are now being detained here at Shaheen Bagh. We are showing you the pictures of the protesters who are protesting in front of bulldozers who are now being detained. These workers are raising slogans against the BJP government. Police personnel have gathered here in large numbers. The protesters who are being detained, they will be put into this bus and then this bus will move ahead. We are showing you the pictures of police action. Police personnel have reached here in large numbers and is not letting the protesters to continue their protest. And in fact, this bulldozer has been completely geared out by the police personnel. Security of bulldozer has been increased in large numbers. So we can expect the drive that it will continue. From here, the demolition drive of South Delhi Municipal Corporation will be carried forward. The police personnel who have been called in, they have now geared out bulldozer. The security of bulldozer has been increased. Nobody is allowed to protest near the bulldozer, and that is why senior officers of Delhi Police, they have also come here. ACP rank officers have been deployed here, and that is why the CRPF personnel and Delhi Police personnel are now going to make a ring. They are now going to make a ring right around this bulldozer and not let the people to come here to continue their protest. We are showing the pictures of police action which is now taking place here, and the drive is going to continue. Sir, drive continue होगी। अभी डिसीजन आ रहा है, थोड़ा रास्ता छोड़ दो ना। Now decision will be taken a short while from now. Police, after reviewing the security arrangements, is going to confirm, is going to tell us the further course of action. Let's move ahead. There is some action taking place on the other side. We'll go on the other side. We'll try to show you pictures from the other side. We can see action taking place on the other side. I would ask Anil to come with me. Let's move ahead. We can also see a few pictures coming in from the other side because few protesters are now protesting on the other side of the road. Police personnel continue to detain the protesters. Which has been stopped also. This drive, which has been stopped also by the Congress Party workers, local Congress Party workers. Now the police personnel are detaining the workers here of the Congress Party, and that is why we can see the drama, full drama, which is now being played out here on the streets of Shaheen Bagh. At one side, the protest continues to take place. On the other side, police personnel are now detaining
the workers who are now looking forward to move ahead, who are now looking forward to move ahead towards the bulldozer to further continue their protest. As the drive is all set to continue, Republic reports from Shaheen Bagh. Much more is coming ahead after this very short break. Stay tuned. It was a dark night with a bright idea. Guys, we need something big. Let's do what we always do. Something really bold. Let's take on the D segment. Let's create the big daddy of all SUVs, because nothing else will do. The big daddy of SUVs from Mahindra, coming soon. What is being claimed by the Hindu petitioners is that this particular structure of the mosque is entirely a temple. However, the Muslim petitioners have made it very clear that it's a 17th century building, which is why a recent videographic survey hurt their sentiments. जो लोग वहाँ के सर्वे को रोक रहे हैं तो प्रश्न उठेगा क्या छुपाना चाहते हैं, किस चीज के से घबरा रहे हैं कि ये बाहर आ जाए। भारत में कानून का राज है। अगर आप गलत तरीका अपनाते हैं तो उसके काट भी है। जिस हिसाब से उन्होंने एक पहले 6 बजे के आसपास उन्होंने ये वारंट निकाला और दूसरा वारंट रात को करीब 10 बजे के करीब निकाला। तो इतना तो था ही, हम लोग इंतजार कर रहे थे। हमारे साथ हमारे ये बच्चे भी साथ में थे, कुछ मीडिया कर्मी भी साथ में थे और वो भी इस इंतजार में थे कि पुलिस कब आती है। लगभग 11 साढ़े 11 बजे न्यूज आई कि बग्गा ने उनके खिलाफ याचिका दायर की है। तब हम लोग निश्चिंत हो गए कि अब पुलिस कम से कम जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक नहीं आएगी। हम लोग रिलैक्स हो गए। 12 बजे के आसपास फैसला आ गया कि बग्गा को 2 दिन की राहत मिली है। अब उस राहत का फायदा किस हिसाब से उठाना है, क्या क्या करना है, ये बग्गा जाने, पार्टी जाने और उनके वकील जाने। जिन्होंने कल फिर ये दर्शा दिया कि इस देश के अंदर कानून का राज चलता है। अगर अरविंद केजरीवाल सोचते हैं कि सत्ता के बल पे, पुलिस के बल पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा सकते हैं, झुका सकते हैं, तो फिर से मैं उनको कहता हूं, एक नहीं 100 FIR कीजिए। अरविंद केजरीवाल जी, मैं ये सवाल पूछूंगा कि आपने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को 24 घंटे के अंदर जेल की सलाखों में डालना था। आपने चुनाव के अंदर वादा किया था, लेकिन आप ही के विधायक ने, जो उस समय SIT कमेटी के सदस्य थे और जिन्होंने इस्तीफा दिया था, और आप उनका नाम बार बार लेते थे, जो आपके अमृतसर के विधायक हैं, ने ये कहा कि जिन लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को बचाया, आपने उनको प्रमोशन दे दी। In a shocking incident, 2 persons were injured after 15 to 20 rounds of firing took place in West Delhi, Subhash Nagar, late at night on Saturday. In fact, these firing took place yesterday in the middle of the night, after which 2 people have been injured. They have been rushed to the spot, and after the incident took place, several police officials were deployed in the area, and there is a heavy deployment in the shooting site, and several barricades have also been placed, and the inquiry has also been placed by the officials. According to the preliminary information that we are getting from the officials, the investigation has been put in place as to who was behind the firing. CCTV cameras are being constantly checked of the entire location, and the injured people are undergoing treatment in the nearby hospital. The entire incident took place on Saturday night. This is Sumi Rajapun for Republic Media Network with video journalist Ranveer, New Delhi. Refugees have gathered here in Jammu as a part of Smaran.
रोकिए कि तो काफी दिनों से चल रहा है। सर साथ रहिएगा। देखो यहाँ कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, ना यहाँ बुलडोजर चलेगा। नहीं चलेगा। दिस इज व्हाट द अमानतुल्लाह खान इज। कहाँ है, दिखाएं। आप लोग दिखा दो कहाँ है, दिखाओ ना। ये सरकार से क्यों नहीं पूछते हैं? नहीं, आपसे पूछ रहे हैं हम, आप बताओ ना कहाँ है इंक्रोच। नहीं, एमसीडी ने आपको बताया नहीं है क्या? मैंने कोई नहीं, सर्वे नहीं किया क्या? हाँ, थोड़ा सा आगे आए, इधर आए। चलो ठीक है, मीडिया को सॉरी, सामने से It was a dark night with a bright idea. Guys, we need something big. Let's do what we always do. Something really bold. Let's take on the D segment. Let's create the big daddy of all SUVs. Because nothing else will do. The big daddy of SUVs from Mahindra, coming soon. In a shocking incident, 2 persons were injured after 15 to 20 rounds of firing took place in West Delhi, Subhash Nagar, late at night on Saturday. In fact, these firing took place yesterday in the middle of the night, after which 2 people have been injured. They have been rushed to the spot, and after the incident took place, several police officials were deployed in the area, and there is a heavy deployment in the shooting site, and several barricades have also been placed, and the inquiry has also been placed by the officials. According to the preliminary information that we are getting from the officials, the investigation has been put in place as to who was behind the firing. CCTV cameras are being constantly checked of the entire location, and the injured people are undergoing treatment in the nearby hospital. The entire incident took place on Saturday night. This is Sumi Rajapun for Republic Media Network with video journalist Ranveer, New Delhi. Refugees have gathered here in Jammu as a part of Smaran Divas to remember those who have attained martyrdom in the Pakistan's brutality when the part of Jammu and Kashmir was illegally occupied by Pakistan, and now these people have come from various parts of the country to remember those who have given the supreme sacrifice. Sir, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो हमारे वहाँ पर छूट गए विस्थापित लोग, हमारे जो वहाँ पर पूर्वज छूट गए हैं, उन लोगों को हम अपने साथ मिलाना चाहते हैं और हम उनके साथ मिलेंगे। POJK का जो हिस्सा उसको लेने के लिए आज संकल्प लेंगे और अपने जो पूर्वज थे उनको हम आज श्रद्धांजलि देंगे। श्रद्धांजलि दे रहे सर, आपसे जानना चाहूँगा, लगातार मांग उठ रही है POJK वापसी को लेकर, क्या कहना चाहें? ये बहुत अच्छा कदम है, ये ऐसा होना चाहिए। हम उधर जाएं, वो इधर आएं, एक दूसरे का मिलाप होना चाहिए। वापस आना चाहिए पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर। बिल्कुल बिल्कुल वापस आना चाहिए पूरे का। We're reporting outside the Kashi Vishwanath temple over here and the mosque that is all mired into controversy. We'll take you straight to the visuals over here in Varanasi. In the visuals, we are bringing you the live pictures of this particular newly built Kashi Vishwanath corridor, and right next to it is the mosque which is under the scanner of all the controversies. This is the particular mosque where against which you can see there's a brown wall over there. My video journalist is zooming in and showing you the brown wall. The petitioner are questioning that they should be allowed to go inside and worship at the temple of Gauri Shringar. That particular brown wall that is just one of the walls of these mosques is being contended to be the Gauri Shringar temple by the devotees over here. And now in their petition they request that they should be allowed to go freely inside and should be allowed to worship and offer prayers over here. However, the mosque committee is against this entire drill, following which, hearing the petitions,
the court had asked for a videographic survey, but the entire endeavor fell flat, as when the court monitored committee of all the officials came here for the videographic survey, they were not allowed to go inside. There was a massive protest here at gate number 4 of Kashi Vishwanath temple over here. Hundreds of people from the Muslim community came forward and they expressed their displeasure, moving the Varanasi district court as well over here. They questioned that a videographic survey is a brazen endeavor and should not be done. कह रहे हैं, और उनके आने के बाद में यहाँ पर एक जमावड़ा सा लग गया है। जेसीबी मशीन को आप देख सकते हैं यहाँ पर खड़ी हुई है, और फिलहाल यहाँ पर जो जेसीबी मशीन है उसको भी खड़ा कर दिया गया है। यहाँ पर अमानतुल्लाह खान जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं और वो यही कह रहे हैं कि किसी भी स्थिति में मैं यहाँ पर इंक्रोचमेंट खुद हटवा दूंगा यदि एनसीडी के लोग ये बता दें मुझे कि कहाँ पर इंक्रोचमेंट हुआ है। अमानतुल्लाह खान बोल रहे हैं कि हम खुद हटवा देंगे। आपका क्या कहना है? आप लोग बिना नोटिस के आ गए क्या? कुछ तो बोलिए। कि यहाँ पर जो कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई लगातार ये किस तरह से गैर कानूनी है, ये उसकी बात की जा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मैं आपको, उज्जवल इधर आइए, यहाँ पर लगातार हंगामा भी हो रहा है। आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ये हंगामा लगातार बना हुआ है। बुलडोजर अपनी कार्रवाई को अंजाम दे उससे पहले ये किस तरह का हंगामा हुआ है। देखिए यहाँ पर जो आप इमारत देख रहे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, आप उसकी ग्रिल्स देखिए, अंडर कंस्ट्रक्शन ये इमारत है, ठीक उसके सामने खड़ा हुआ है बुलडोजर। क्या इस इमारत की जो ग्रिल्स है जो इस वक्त लगी हुई है, क्या इन्हें हटाएगा, क्या इन्हें तोड़ेगा? सवाल ये है, क्योंकि बुलडोजर आकर खड़ा हो गया है और अगले आदेश का इंतजार ऐसा लग रहा किया जा रहा है कि अगला आदेश क्या होगा बुलडोजर के लिए, क्योंकि बुलडोजर यहाँ पर खड़ा हुआ है। और देखिए जो अधिकारी हैं, जो पुलिस है, पुलिस बल वहां पर तैनात है, वो लगातार तैनात है, लेकिन यहाँ पर अब अगले आदेश का इंतजार किया जा रहा है कि क्या होना है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बुलडोजर इस वक्त अमानतुल्लाह खान जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं यहाँ पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि पूरी जो कार्रवाई है वो सियासी है। किस तरह से टारगेट करने का आरोप अमानतुल्लाह खान लगा रहे हैं, वो इस वक्त यहाँ पहुंचे हुए हैं और हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अमानतुल्लाह खान जो यहाँ पहुंचकर एक बार फिर से इस पूरी कार्रवाई को सियासी रंग देते हुए नजर आते हैं, सियासत का आरोप लगाते हैं और वो कह रहे हैं कि शाहीन बाग का जो बुलडोजर है वो सियासत का बुलडोजर है, क्योंकि यहाँ पर किस तरह से सियासत करने के लिए बुलडोजर बुलाया गया है। यहाँ पर अगर अतिक्रमण था तो पहले क्यों नहीं बुलाया गया, अब पहले क्यों नहीं ये कार्रवाई हुई? और ये भी कहा जा रहा है कि किसी को नोटिस नहीं दिया गया, बिना नोटिस के बुलडोजर कैसे बुलाया? बोल नहीं पाई, पानी मंगा दिया है। नफरत का बुलडोजर जिस तरह से खरगोन में चलाया गया, जिस तरह से जहांगीरपुरी में चलाया गया, ये ठीक नहीं है। जो भी मसला है, मुद्दा है, त्वरित न्याय नहीं हो सकता। आप कोर्ट जाइए, न्यायपालिका है, एक सिस्टम है, संविधान है। आप बुलडोजर से देश को नहीं चला सकते। यहाँ प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में लोगों की आवाज होती है, न कि आप बुलडोजर तंत्र से देश को चलाए। Isha Pandey, DCP, she has reached here. She along with her other officers. Shaheen Bagh bulldozer is moving ahead.
The police personnel have also deployed. Their police personnel have also been deployed in large numbers. We're showing you the pictures of senior police officers also here on the spot. Isha Pandey is now reviewing the security situation here. Remember that the Delhi police had given the proper permission to SCMC. Now the senior officers of Delhi police have also reached here to monitor the situation, to look into the security situation, to review the situation here at Shaheen Bagh. We are showing you the pictures of a bulldozer which is now moving ahead. Bulldozer is now in action. Here, the senior arm of the party leader Amanatullah Khan had also come, been detained by the police. So arm of the party and the Congress party is now officially opposing this illegal encroachment drive which was to be carried out by the action can be seen. More action can be seen. Anil is focusing on the visuals. More action can be seen. The workers of Aam Aadmi Party who were protesting, they have now been detained. Now clashes, the pictures of clashes taking place between police and workers of political parties. Crashes. Now police is resorting to lathi charge. Yes, we can see police resorting to lathi charge, removing these protesters. Now clashes have taken place here between the workers of political parties. Peacefully asking these protesters to go back, but they were not listening. Now police is using its might to remove these workers of Aam Aadmi Party and Congress party workers. Police is now in full swing, in full action. They will let the drive to be continued. The demolition drive is also to be continued. The local party workers of Aam Aadmi Party and Congress are opposing this. Now the police person who were trying to remove these workers, they had a small skirmish with these workers. But now these workers are slowly, gradually moving ahead. And bulldozer at the same time is also moving ahead. At one side, police is removing these workers. The activity of bulldozer is taking place. Now the drive is all set to begin. We're going to show you the pictures of demolition which is going to take place. Any minute from now, demolition will take place. Any minute from now, we're showing you the pictures of senior police officers. Now, the Congress party worker, Parvez Alam is being detained, and the demolition drive is all set to begin. First picture, we are going to show you the first picture of this demolition drive, which is all set to begin any minute from now. We'll go on the other side. Where the demolition will take place. Demolition. Yes, amidst the protest, amidst the massive protest, the demolition drive will take place. Amidst the protest, the demolition drive will take place, and that is why bulldozer is making its space. Is now making its space. This illegally encroached area will be removed by the bulldozer of South Delhi Municipal Corporation. So bulldozer is all set to carry out this demolition drive here in Shaheen Bagh area of Delhi, and before that, police has stepped up the security. The security. RPF personnel, police have cleared out this area and encouragement done by the people here in Shaheen Bagh. Republic TV is showing you the pictures of this encouragement. Anil, we are now showing you the pictures of this illegal enforcement drive, which is all set to begin in Shaheen Bagh, and before that, locals and media persons are being asked to move beyond amidst this massive protest. The drive is all set to begin. Now bulldozer is moving ahead to raise this illegal encroachment in Shaheen Bagh. The officers of
of SDMC are in full swing, taking all the precautionary measures, asking police personnel are now asking locals to move ahead, going with the picture of this demolition drive, which is all set to begin. And before this drive, massive protest taking place. Here, one local is moving ahead and he's not letting the bulldozer to take out this drive, but the police personnel are stopping him. Enclosed area, they're showing you the pictures of the very place in Shaheen Bagh. They're going to remove this illegally enclosed area. Remember that the people who were here, who have enclosed this area illegally, they are also standing on their rooftop. They're also looking at this drive, the illegal enforcement drive, which is being carried out by the GM's officers. And the locals here have gathered to raise their voice. They are also protesting against this illegal enforcement drive, which NCD officers are here to raise down. Now, because there is also to raise down this illegally enclosed area, and before that, police personnel have been deployed here in large numbers. Well, yes, we are showing you the pictures of this demolition drive. It is all set to begin, and before this drive could continue, the local SDMC officers are talking to the people of the occupants of this building and making them understand that this is an illegally enclosed area, and that is why they would want to raise this down, and that is why bulldozer has been called in. Massive protest is also taking place. Locals have gathered in large numbers. CRPF personnel has been deployed in large numbers before the demolition drive could even start. We saw the massive protest taking place. Aam Aadmi Party workers, Congress Party workers, they have gathered here in large numbers and they raised their voice against this demolition drive, which is right now going to begin in Shaheen Bagh area of the national capital. So, the politics, it had actually begun in Uttar Pradesh and moved to Madhya Pradesh, and then after the clashes broke out in Jangir, we saw the illegal encroachment drive. It was carried out by North Delhi Municipal Corporation, and today South Delhi Municipal Corporation is carrying out this demolition drive in Shaheen Bagh area of Delhi. And there is massive deployment of security personnel and the police personnel. Usha Pandey is DCP of this area. She has also come here to look into the security situation. Before that, CRPF personnel were also called in. So demolition drive is all set to begin, and police personnel large number along with paramilitary forces have been deployed also in Shaheen Bagh area of the national capital. लगातार मीडिया से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो कार्रवाई बुलडोजर की हो रही है उस कार्रवाई को अंजाम नहीं देने दिया जाएगा। ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, मानतुल्लाह खान बात कर रहे हैं मीडिया से और वो कह रहे हैं कि किसी को नोटिस नहीं दिया गया, किसी तरह से कोई कागज नहीं दिया गया और फिर बुलडोजर बुला दिया गया। वो तस्वीर देखिए, बुलडोजर यहाँ पर चलाया जा रहा है। मैं वो भी दिखा दूं आपको एक बार। आगे जरा आइए, आगे उज्जवल जरा आइए आगे। ये देखिए किस तरह से बुलडोजर अपनी कार्रवाई को अंजाम देने में लगा हुआ है। ये तस्वीर जरा देखिए, उज्जवल जरा तस्वीरें दिखाइए। यहाँ एक तरफ अमानतुल्लाह खान खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि सियासी कार्रवाई है, दूसरी तरफ बुलडोजर देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। मैं एक बार दिखा दूं आपको तस्वीरों में। उज्जवल जरा तस्वीरें दिखाइए। देखिए बुलडोजर के बाहर जी, मैं आगे नहीं जा रही हूँ, आप जैसा कह रहे हैं वैसे ही आगे नहीं जाएंगे सर, नहीं जा रहे आगे, नहीं जा रहे आगे नहीं जाएंगे मैम, जैसा आप कह रही है बात मान रहे हैं आपकी, आगे नहीं जा रहे। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए, बुलडोजर जो अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है, पीछे मेरे ठीक पीछे जो बुलडोजर अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। यहाँ पर एक तरफ अमानतुल्लाह खान खड़े हुए हैं, कह रहे हैं पूरी कार्रवाई सियासी है, दूसरी तरफ बुलडोजर अपने काम को अंजाम दे रहा है।
तस्वीरें दोनों तरफ की दिखाई है उज्जवल। एक तरफ अमानतुल्लाह खान है जो पूरी कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं ये बीजेपी सियासी बुलडोजर चला रही। दूसरी तरफ देखिए बुलडोजर जो चल रहा है, बुलडोजर अपनी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ा हुआ है। अब आदेश का इंतजार है, क्योंकि जब बुलडोजर को आगे मूव किया गया था तब भी आदेश दिया गया था लोगों को हटाने के लिए। वहां से आपने देखा कैसे बस भर के लोगों को हटाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से हमने बात की, उन्हें वहां से हटाया गया। अब आप ठीक पीछे जो देखेंगे, जो बुलडोजर है उसे शायद अगले आदेश का इंतजार है। वहां पर भी भीड़ जमा है, बुलडोजर न चलाया जाए इसको लेकर वहां प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस कह रही है कि आप लोग आगे मत जाइए, मीडिया से भी अनुरोध कर रही है, साथ ही साथ लोगों को भी कह रही है कि वहां से हटिए जिससे कि बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया जा सके। ये तस्वीरें आपको बता रही हूँ क्योंकि लोगों को डिटेन भी किया जा रहा है, हटाया भी जा रहा है यहाँ से लोगों को। मैं एक बार फिर से आपको दिखाती हूँ, आपको ये जो रास्ता है देख लीजिए, यहाँ तक बंद किया गया। उज्जवल जरा तस्वीरें दिखाइए। यहाँ पर जहाँ मैं खड़ी हुई हूँ यहाँ से हमें कहा जा रहा है कि आगे मत बढ़िए, और यहाँ पर पीछे देखिए बुलडोजर, जरा तस्वीरें दिखाइए उज्जवल। यहाँ पर पुलिस बल देखिए, बड़ा पुलिस अमला मौजूद है, और यहाँ पर जो सीआरपी की जो महिला कर्मी है उन्होंने कहा है कि हम आगे नहीं जा सकते हैं, पुलिसकर्मी आगे तैनात है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो लोग उन घरों में रहते हैं या फिर जिनकी दुकानें हैं, जो लोग उस घरों में रह रहे हैं या फिर उनकी दुकानें हैं, वही लोग वहां पर मौजूद हैं, और उनसे भी अनुरोध किया जा रहा है। क्योंकि हमने पहले भी देखा कि पहले अनुरोध की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, अगर अनुरोध नहीं मान रहे हैं तो फिर बसों में भरकर वहां से हटाया गया है। वही अभी इस वक्त हो रहा है। इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जो बुलडोजर के आगे लोग हैं वो वही हैं जिनकी दुकानें हैं या फिर जो लोग रहते हैं। और वो देखिए जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, जो काम चल रहा था उसे हटाया जा रहा है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये निर्माणाधीन, ये इस बिल्डिंग का निर्माण आगे कराया जा रहा था। अब उसके जो पोल्स हैं उनको हटाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, जो एसडीएमसी के जो कर्मचारी हैं वो ऊपर चढ़कर इन पोल्स को हटा रहे हैं। यानी और हमें कहा जा रहा है कि थोड़ा पीछे हट जाइए उज्जवल, क्योंकि हमसे कहा जा रहा है ये जो पोल्स हटाए जा रहे हैं इस कार्रवाई में किसी तरह की कोई बाधा न बने। उज्जवल तस्वीरें दिखाते रहिए। ये एसडीएमसी के जो कर्मचारी हैं वो ऊपर चढ़कर इन लोहे के पोल्स को हटा रहे हैं जो निर्माण में इस्तेमाल किए जा रहे थे। उनका कहना है कि अतिक्रमण है। ये स्ट्रक्चर के बाहर जो निर्माण किया गया था उसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और इसीलिए इन पोल्स को अब हटाया जा रहा है। देखिए आप यहाँ पर जो घर के लोग हैं वो ऊपर हैं, वो भी मौजूद हैं, लेकिन वहां पर देखिए जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है उसे हटाया जा रहा है। अब जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है उसे हटाया जा रहा है। एसडीएमसी के जो कर्मचारी हैं वो ऊपर चढ़कर इसे हटा रहे हैं, और इसी की बात कही गई थी कि जो अतिक्रमण करके घरों को आगे बढ़ाने का काम किया गया है, सिर्फ उस पर बुलडोजर चलना है, उस पर कार्रवाई होनी है। किसी के घर और दुकान हटाने की कोई कार्रवाई, ये कम से कम जो एसडीएमसी के अधिकारी से हमने बात की, उन्होंने कहा किसी का घर, किसी की दुकान नहीं हटानी है, और इसीलिए किसी तरह का ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया। और जो अतिक्रमण है, यानी कि जो घरों के बाहर जो निर्माण किया गया है जो गैर कानूनी है, उसे हटाने के लिए हमें ये नोटिस देने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए आप अभी भी मेरे पीछे जो देखेंगे वो स्ट्रक्चर हटाया जा रहा है जो घर के निर्माण के बाहर किया गया, उसे हटाया गया है। देखिए तस्वीरें जरा, ये जो लोहे के पोल्स लगे हुए थे, और शुरुआत इसी इमारत से हो रही है। आप देखिए घर बना हुआ है, लेकिन घर के नीचे जो पहला माला है वहां दुकानें हैं, वो दुकानें आज बंद हैं, और अभी जो पोल्स हैं उन्हें हटाने का काम हो रहा है। और इस वक्त जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्हें हटा दिया गया है, उन्हें कह दिया गया है कि वो वहां से हट जाएं। जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें बलपूर्वक हटाया गया है, उन्हें वहां से हटा दिया गया है। जो लोग घरों के थे, जिनकी दुकानें हैं, उनसे भी अनुरोध करके उन्हें हटाया गया है। ये तस्वीरें आप इस वक्त देख लीजिए शाहीन बाग की, जहां अब जो स्ट्रक्चर घरों के बाहर बनाए गए उन पर ही सबसे पहले हथौड़ा चल रहा है, उन्हीं पर सबसे पहले बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। और जो ट्रक्स हमने आपको सबसे पहले दिखाए थे, एसडीएमसी के ट्रक्स पहुंचे, उन्हीं में ये लोहे के रॉड्स लाद कर ले जाए जाएंगे। ये भी बताऊं आपको, क्योंकि इतने भारी भरकम जो स्ट्रक्चर्स
आधे अधूरे बने हुए हैं, इनको जब हटाया जाएगा तो इनको ले जाने के लिए भी ट्रक्स चाहिए, वो सबसे पहले पहुंचे थे। और ये तस्वीरें आप देख लीजिए, इनको हटाया जा रहा है और यहाँ ये कार्रवाई हो रही है। ये कहाँ इंक्रोचमेंट है, दिखाए ना ये। हाँ। ये डेलिबरेट क्यों कह रही है? कह रहे एंटी इंक्रोचमेंट है, इलीगल है। आप दिखाए ना कहाँ है एमसीडी वाले, इलीगल इंक्रोच किया गया है। क्यों आपको लगता है? मैं आया हूँ ना, मुझे दिखाएं ये। आप रोकेंगे क्या? आप बिल्कुल दिखाए तो सही, पहले मुझे बताए तो। अमानत भाई, आप रोकेंगे बुलडोजर को? अरे भाई बताए तो सही, यहाँ है इंक्रोचमेंट। आप रोकेंगे क्या खुद? देखिए मैं आया हूँ ना। हाँ, इलाका है मेरा, मैं विधायक हूँ यहाँ। अरे मैं विधायक हूँ ना, आया हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ ना, मैं पूछना चाहता हूँ कि किस जगह है इंक्रोचमेंट। अतिक्रमण हटा रहे हैं। कहाँ है अतिक्रमण? दिखाए ना कहाँ अतिक्रमण है। आप क्या सवाल पूछे? किस तरीके से स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है, महिला कर्मचारी भी उसमें मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ पुरुष बल्कि जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आई थी। और सामने की तरफ देखिए, सामने की तरफ जेसीबी मशीन के चारों तरफ पुलिसकर्मी और लोग यहाँ पर मौजूद आपको दिख रहे होंगे। अमानतुल्लाह खां जो कि यहाँ के विधायक हैं वो यहाँ पर आए हुए थे और सीधे तौर पर उन्होंने राजनीति करने का आरोप लगाया। और देखिए जेसीबी मशीन के ऊपर की तरफ दिखाइए सलील, जेसीबी मशीन के ऊपर देखिए उनको हटाया जा रहा है, उन पाइपिंग को हटाया जा रहा है और तमाम जो एमसीडी के कर्मचारी हैं वो ऊपर की तरफ चढ़ गए हैं। और अब एक एक करके इस पूरे के पूरे जो ये अवैध तरीके से निर्माण करने के लिए इस पूरे के पूरे सिस्टम को लगाया गया था, अब इस सिस्टम को हटाया जाएगा। वो जो सामने की तरफ जो दुकान है आप देख सकते हैं, अब उसे नफरत का बुलडोजर जिस तरह से खरगोन में चलाया गया, जिस तरह से जहांगीरपुरी में चलाया गया, ये ठीक नहीं है। जो भी मसला है, मुद्दा है, त्वरित न्याय नहीं हो सकता। आप कोर्ट जाइए, न्यायपालिका है, एक सिस्टम है, संविधान है। आप बुलडोजर से देश को नहीं चला सकते। यहाँ प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में लोगों की आवाज होती है, ना कि आप बुलडोजर। आगे बढ़ गया है, लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है, क्योंकि जब ये बुलडोजर, जब ये जेसीबी मशीन अपना काम करेगी तो ये जो कंस्ट्रक्शन करने के लिए, मचान बनाने के लिए जो लोहे के पाइप लगाए गए हैं ये गिरेंगे, और ये किसी व्यक्ति के ऊपर ना गिरें, इसलिए उन्हें सभी लोगों को साइड से हटाया जा रहा है। बुलडोजर चलने की ये तस्वीरें आ रही है। पहले जो पोल्स हटाए गए हैं, अब बुलडोजर चलाया जाएगा। तस्वीर जरा देख लीजिए, पहले पोल्स हटाए गए और उसके बाद अब बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस वाले पहले माले पर चढ़ गए हैं, दूसरे माले पर देखिए आप, दूसरे माले पर जो घर के लोग हैं वो मौजूद हैं और वो इशारे कर रहे हैं कि यहाँ से हटिए। ये देखिए तस्वीरें। अब ये देखिए, ये यहाँ से गिराएंगे। ये उज्जवल जरा पीछे हटिए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो लोहे के रॉड्स लगे हुए हैं उन्हें ये हटाएंगे और ये इनको गिराएंगे, तो इसीलिए यहाँ से हटने के लिए सबको कहा जा रहा है कि लोग हट जाइए आपकी अपनी सुरक्षा के लिए। उज्जवल जरा उस तरफ चलिए, क्योंकि जो रॉड्स हैं इनको लूज करा गया है, जैसा मैंने आपको दिखाया। उनके जो नट एंड बोल्ट्स हैं वो खोल दिए गए हैं। अब इन रॉड्स को नीचे गिराया जाएगा, इसीलिए कहा जा रहा है कि आप लोग हट जाइए, यहाँ से इनको हटाया जाएगा। ये तस्वीरें आप देखिए जरा, जो आप देख रहे हैं लोगों को, एसडीएमसी के जो कर्मचारी हैं वो ऊपर चढ़े हुए हैं। एसडीएमसी के जो कर्मचारी हैं वो ऊपर पहुंचे हुए हैं। अब वो बता रहे हैं कि कैसे जो रॉड्स हैं, सबसे पहले रॉड्स को उन्हें लूज किया गया, अब उनको नीचे उतारा जा रहा है। इसीलिए लोगों से भी कहा जा रहा है कि आप हट जाइए, आप वहां से हट जाइए। बुलडोजर चल रहा है, तस्वीरें जरा उज्जवल बुलडोजर की दिखाइए, वहां पर जो कार्रवाई हो रही है अब इन रॉड्स को हटाने के लिए। और बार बार ये पूछा जा रहा था कि क्यों नोटिस नहीं दिया गया है। लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि नोटिस नहीं दिया गया और कार्रवाई के लिए आ गए हैं, लेकिन एसडीएमसी के अधिकारियों का कहना है कि किसी के घर या दुकान पर ये बुलडोजर नहीं चलना है, जो अतिक्रमण हो रखा है उस पर चलना है, जिसके लिए नोटिस की जरूरत नहीं है।
जो अतिक्रमण करके जमीन घेरी गई है उसे गिराने के लिए नोटिस की जरूरत नहीं होती। इसी बिल्डोजर को रुकवाने के लिए यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए हैं। हम लोकल लोग हैं, यहाँ ओखला के लोकल सोशल वर्कर हैं जो भी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट की बात करते हैं तो 15 सालों से क्या इंक्रोचमेंट का मुद्दा नहीं नजर आया इन लोगों को? पूरी दिल्ली के अंदर इंक्रोचमेंट करना था तो 15 साल में एमसीडी कहाँ सो रही थी, सरकार कहाँ सो रही थी? अब 18 मई को जो इंक्रोचमेंट एमसीडी खत्म होने वाली है तो इंक्रोचमेंट इनको ध्यान आता है। मेरा नाम शकीला है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। ओखला जामिया नगर में चिराग फाउंडेशन के नाम से अपना फाउंडेशन चलाती हूँ। पर सरकार को आप जाग रही है सरकार कि अब यहाँ पर इंक्रोचमेंट होना चाहिए। क्यों शाहीन बाग को क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है? जहांगीरपुरी जैसे सिर्फ मुसलमान एरिया को क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है इंक्रोचमेंट के नाम? सीधे सीधे साफ तौर पर कहना यही है कि ये जो कार्रवाई की जा रही है ये सिर्फ उन अतिक्रमणों पर कार्रवाई की जा रही है जो अतिरिक्त आगे की तरफ रोड में बढ़े हुए हैं। बाकी न किसी की दुकान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और ना ही किसी के घर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जो भी अतिक्रमण हैं सिर्फ उसे हटाया जाएगा या जो व्यक्ति अतिक्रमण करने की कोशिश करेगा उसे हटाने के लिए यहाँ पर एमसीडी अपनी कार्रवाई करेगी। और ये पूरा का पूरा ये जो रोड है आप देख सकते हैं यहाँ पर शाहीन बाग का मेन रोड, शाहीन बाग के मेन रोड में जहां पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं उसके अपोजिट साइड है जी ब्लॉक जहां पर कार्रवाई चल रही है। और जी ब्लॉक के सामने की तरफ आप देख सकते हैं भारी यहां पर पुलिस बल भी तैनात है और भारी संख्या में यहां पर जो स्थानीय लोग हैं वो आ गए हैं। वो कुछ लोग हैं जो यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें डिटेन करके ले जाया गया है। 30 अप्रैल से 13 मई तक एमसीडी की ये जो अतिक्रमण की जो कार्रवाई है वो चलाई जाएगी। और अब देखिए सलील दिखाइए, एक बार जेसीबी दिखाइए। खुद से अपनी 2 दिन जेसीबी दे करके अपनी फ्लड इरिगेशन से अपने पैसे से 2 दिन खुद दे करके खुद हटवाया। जब यहाँ कोई इंक्रोचमेंट है ही नहीं तो ये आए क्यों हैं? बताओ क्यों आए ये पूरे वार्ड में आप बोल रहे हैं कि इंक्रोचमेंट नहीं? अरे जहाँ है मुझे बताएं, मैं हटवा लूंगा। जहाँ जहाँ है मुझे बताएं, मैं हटवा लूंगा। मैं लोकल विधायक हूँ। जहाँ जहाँ है हाँ बताइए। नहीं अभी आप जी नहीं हटाओ, नहीं ना जाना बताइए। हाँ बताओ, वहीं से बताओ, वहीं से बताओ। नहीं वहीं से बताओ, नहीं वहीं से बताओ, वहीं से बताओ, बताइए वहीं से बताइए। थोड़ा अभी ऐसे हैं हटा लो। बिल्कुल मैं खामोश हूँ। एक लफ्ज कहा, आप लोगों को मालूम है ना, मैंने खुद हटाया। आप यहाँ लोकल थे, एसएचओ साहब मौजूद है, आपसे हटाकर खुद गया मैं। एसएचओ साहब बताओ, मैं खुद आया था, मैंने उस वुजू खाने को आपके सामने तुड़वाया, उस बाथरूम को आपके सामने तुड़वाया। मैंने जब सारा इंक्रोचमेंट हटा दिया, आपसे कल मेरी बात हुई कि बिल्कुल हट गया है। अगर कोई है मुझे बताओ, मैं फिर हटा दूंगा, मैं हटा दूंगा। आप है ना, बिल्कुल जाए, बिल्कुल जाए, बिल्कुल जाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अभी पुलिस से ये बात हुई, पुलिस के आला अफसर मौजूद हैं, एसएचओ ये आए थे, मेरे साथ खुद थे जब मैंने इंक्रोचमेंट रिमूव किया था। एक मस्जिद के सामने बाथरूम बने हुए थे, टॉयलेट बने हुए थे, मैंने अपनी जेसीबी लगाकर 2 दिन उसको खुद हटाया। जब सारा इंक्रोचमेंट मैंने खुद हटा दिया तो फिर एमसीडी वाले माहौल खराब करने तो आए, और क्यों आए? मैंने खुद मार्केट एसोसिएशन मेरे साथ थी, आरडब्ल्यूए साथ थी, सारे इलाके के। मैं वीडियो दे दूंगा, फोटो दे दूंगा जो हटाया। अमानत ये आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके का कोई अवैध अतिक्रमण नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अगर है, ये पीडब्ल्यूडी का रोड है, अगर कोई भी अवैध निर्माण मेरी विधानसभा में है तो मुझे बताएं, खुद हटा दूंगा। इसके पीछे आपको मेरी जुबान है ये, मैं खुद हटा दूंगा। राजनीतिकरण जब यहाँ है नहीं, ये पीडब्ल्यूडी का रोड है। ये देखो आप, पीडब्ल्यूडी का रोड है, यहाँ मैं खड़ा हूँ, सारा रोड क्लियर है, ये सारा रोड। ये कहीं पर 100 मीटर है, कहीं पर ये 50 मीटर है। ये खुद मैं काम कर रहा हूँ। ये रेड लाइट मैंने खुद बंद की थी। आगे जो इस रोड को, ये पूरा नोएडा को जाता है, मैंने ट्रैफिक एसीपी के साथ में, एमसीडी के लोगों के साथ में, यहाँ की लोकल पुलिस के साथ में और यहाँ पीडब्ल्यूडी के लोगों के साथ में मैंने इंस्पेक्शन किया। जो जो उन्होंने कहा वो काम करा रहा हूँ, एस्टिमेट करा दिया। यहाँ रेड लाइट फ्री कर रहा हूँ। लोग आपके साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, मुझे बता दें,
अगर मुझे बता दें आकर के वो कि कोई इंक्रोचमेंट है तो मैं हटा लूँगा। जब मैं मस्जिद का वज़ू खाना तुड़वा सकता हूँ, मैंने वज़ू खाना तुड़वाया, मैंने बाथरूम तुड़वाए, तो अगर किसी की कोई पेड़ी अवैध है जिसको ये आकर कहे मैं हटा लूँगा, उसको पीछे करा दूंगा। ये राजनीति क्यों कर रहे हैं? पूरी विधानसभा में जहाँ भी होगी, जहाँ इंक्रोचमेंट होगा, आज हमने उसका रोड मैप दिया हुआ है और जहाँ तक मेरी उम्मीद है तो उस पर आज एक्शन होगा। उम्मीद है, मतलब अभी कोई फोर्स की कंफर्मेशन तो 10:30 और 11 बजे तक ही आएगी, पर पॉजिटिव साइंस है कि उस पर आज एक्शन होगा। लेकिन जो डीसीपी है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे पास पर्याप्त पुलिस बल नहीं है। तो अभी डीसीपी साहब आई ही नहीं ऑफिस में, कहाँ से जा रहा है? अभी वहाँ पर एडिशनल फोर्सेज कुछ पहुंची हैं जैसे हमारे कर्मचारियों ने बताया है, लेकिन तय तो तब होगा जब रूबरू बात होगी और वो रिटर्न में क्या लिख के देते हैं। जब तक 8 तारीख तक के लिए तो स्थगित किया ही था, आज 9 तारीख है। अगर फोर्स मिलेगी तो जो लीगल एक्शन बन रहा है वो हम करेंगे। वो यहाँ पर आ चुके हैं, अपने तमाम समर्थकों के साथ यहाँ पर आ चुके हैं। अभी कुछ देर पहले हमने आपको बाइट सुनाई कि किस तरीके से अमानतुल्लाह खान जो है वो कोने में खड़े हुए जेसीबी मशीन के पास सलिल, तो तस्वीर दिखाई है अमानतुल्लाह खान की। वो सामने की तरफ यूएस पोलो का जो ये शोरूम है उसके नीचे कोने में अमानतुल्लाह खान खड़े हुए हैं। हम दूर से अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाएंगे कि उस कोने में खड़े होकर वो देखिए मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं। और वो अभी यही कह रहे थे कि मैंने खुद जो है जहाँ पर मस्जिद थी वहाँ पर वज़ू खाना था, वो अवैध तरीके से बना हुआ था, वहाँ पर टॉयलेट्स अवैध तरीके से बने हुए थे, मैंने वो खुद हटाई हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पूरी विधानसभा में जहाँ पर भी अवैध तरीके से निर्माण किया गया हो, मैं खुद एमसीडी के साथ जाकर वहाँ पर तोड़वाऊंगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर राजनीति करने के लिए आए हैं, हिंदू मुस्लिम करने के लिए आए हैं। इस पूरे रोड में ये जो शाहीन बाग का मेन रोड है, नाले से लेकर ये कालिंदी कुंज तक का, यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी अतिक्रमण यहाँ पर नहीं हुआ है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है। तो फिर ये एमसीडी के जो कर्मचारी हैं अपना बुलडोज़र लेके कैसे चले आए? साथ में ये भी कह रहे थे कि ये नोटिस नहीं दिया गया और नोटिस दिए बगैर यहाँ पर बुलडोज़र लेकर आ गए। हालांकि एमसीडी के लोगों का अपना दावा है, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि 7 दिन पहले 10 दिन पहले ये जो है दे दिया गया था नोटिस, और उसके बाद में नोटिस देने के बाद में लगभग 70% लोगों ने खुद से ही अपना जो अतिक्रमण उन्होंने कर रखा था रोडों पर वो हटा लिया है। आगे की तरफ इसी रोड में यदि आगे की तरफ हम जाएंगे तो हमें वहाँ पर फर्नीचर मार्केट देखने को मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले जब यहाँ पर सर्वे हुआ था, आपने देखा होगा, हमने अपने दर्शकों को दिखाया था, जब यहाँ पर सर्वे हुआ था दक्षिण दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी और मेयर वगैरह यहाँ पर सर्वे करने के लिए आए थे। उस दौरान भी जो यहाँ पर एक फर्नीचर मार्केट है वहाँ पर भी दुकानों से 15-15, 20-20 फुट आगे की तरफ रोड में फर्नीचर रखा हुआ था। लोगों ने दुकानों के अंदर नहीं, दुकानों के बाहर रोड तक फर्नीचर रखा हुआ था, उस पर भी कार्रवाई करने की बात की गई थी। उस दौरान जब सर्वे हो रहा था उस दौरान उन तमाम कर्मचारियों ने अपनी अपनी दुकानों के सामने का सामान अंदर की तरफ कर लिया था। लेकिन एक बार फिर से वो अतिक्रमण करने की कोशिश। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ड्राइव है, ये जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है, इसको लगातार जो है वो एमसीडी करती रहती है, समय समय पर ये करती रहती है। लेकिन जब से जहांगीरपुरी में ये इंक्रोचमेंट ड्राइव हुआ था, वहाँ पर जिस तरीके से दंगे भड़के थे, उसके बाद ये इंक्रोचमेंट ड्राइव बहुत अहम हो गया है और चारों तरफ से इस पर अब राजनीति बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रही है। Well, like Himanshu is showing us the other side of this drive which is being carried out by the MTD. We are right now near this very market of G block in Shaheen Bagh where the encroachment drive was to be carried out, but for a few minutes it has been halted. Let me try to show you with the pictures right behind me. You can see the massive deployment of CRPF personnel, Delhi police personnel, and the locals here have also come in large numbers. They are objecting to this drive right now. The bulldozer which had come near to this illegally encroached area
it has now been taken away from this place to some other corner, of this road. What the bulldozer, what the SDMC officers are now saying is that they will carry out after getting the required security personnel in place, and that is why the security personnel have been deployed in large numbers. So even before this illegally encroached area could be removed, now the people here, the locals here who have encroached this area, they are themselves removing this area. We are showing you the pictures of this which is taking place of the locals here, the locals who have actually encroached this area. They are themselves now removing this area, illegally encroached area. Amanatullah Khan, who is Aam Aadmi Party MLA, even he is present here. He is telling to media that the BJP government just wants to politicize this entire issue on religious lines, but there is no area in Shaheen Bagh which has been illegally encroached, and that is why he, along with his workers, have come here to oppose this encroachment drive. He's saying, a leader is saying that whatever is happening is nothing but is inspired by the politics of BJP. Remember that since the time the crashes took place in Jahangirpuri, we are seeing as to how the bulldozers are being used in different parts of Delhi, and Shaheen Bagh was the area where bulldozer was to be used last week itself, but it was stopped. The drive was stopped because the officers of MCD did not have a proper police availability, and now we are showing you the pictures how the locals are themselves removing this illegally encroached area even before bulldozers could be used. In the police presence, the locals are removing this area. Police personnel in large number, locals in large numbers, media persons in large numbers have gathered here in this G block area of Shaheen Bagh. Amanatullah Khan, Aam Aadmi Party MLA, he is also standing here. He's saying that if there is any illegally encroached area, then he would go and remove that the illegal occupation. He would himself go and remove the illegal occupation. But he told us that today's drive is inspired by the politics of BJP, where it is trying to do the politics on the issue of religious lines. At one side, the locals are themselves removing the illegally encroached area. On the other side, bulldozer is parked here right on my left side. So for now, the drive has been halted, and that has happened after the kind of protest which took place here in Shaheen Bagh, and after that police personnel were called in here in large numbers. We'll have to wait and watch what would be the next course of action of South Delhi Municipal Corporation. But today, after taking proper permission, the officers had come. आप देख रहे हैं ये शोरूम्स हैं यहाँ से वहाँ तक जो आप देख रहे हैं 40 साल पुरानी बिल्डिंग। ये देखो ये सब 40 साल पुरानी है। ये सारी नंबर रोड इनका कहना है 40 साल पुरानी इमारतें हैं। इंक्रोचमेंट है ही नहीं, कहीं यहाँ इंक्रोचमेंट नहीं है ही नहीं है। अंदर की तरफ है क्या? अंदर भी नहीं है, कहीं भी अंदर भी नहीं है। अगर यहाँ से दिखाइए उज्जवल, ये जो रिहाइश है यहाँ लोग अंदर रहते हैं अमूमन। मैं आपको बताऊं शाहीन बाग ये जो बाहर का इलाका है ये आप देख रहे हैं, लेकिन ये वो जगह है जो अंदर आपको और इंटीरियर में लेकर जाती है। लोग रहते हैं, लोगों का कहना है अंदर अतिक्रमण नहीं है, लेकिन फिलहाल जो बाहर की तरफ लोग हैं वहां देखिए यहाँ खुद आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह मौजूद हैं, जिनके समर्थक हैं, जो बीच बीच में नारेबाजी भी हो रही है। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए ये तस्वीरें जो मैं दिखा रहा हूं, दिखाइए जरा, ये आम आदमी पार्टी समर्थक और उनके विधायक यहाँ मौजूद हैं। और दूसरी तरफ आइए जरा, आइए उज्जवल आगे मैं दिखाऊं दर्शकों को कि ये बुलडोजर यहाँ मौजूद है। दिखाइए जरा उज्जवल, फोकस करिए। ये जो पोल्स लगे हुए थे, जो खंबे लगे थे लोहे के, इन्हें हटाने का काम जारी है। जो लोग यहाँ रहते हैं इन्हीं, जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनवीर अहमद खान है। जी कौन सा बताइए। देखिए जिस तरह से दहशत फैलाई जा रही है सरकार के द्वारा, ये मुनासिब नहीं है
और बिल्डोजर आपको दहशत क्या लग रही है? मुझे दहशत ये लग रही है जो बिल्डोजर लेके आए जा रहे हैं इलाकों के अंदर, उससे दहशत फैलाई। ये बुलडोजर ये जो खड़ा है, ये जो बुलडोजर खड़ा आपको कह रहा है, आपका कहना है नहीं लाना चाहिए? नहीं, आप जो है जो चीज करना चाह रहे हैं, यहाँ की जनता भी उस फेवर में है। आप चाह रहे हैं अतिक्रमण हटे? अतिक्रमण हटे। आप परेशान हैं इससे? नहीं, परेशान नहीं, लेकिन अगर कोई सिस्टम आ रहा है, एमसीडी चाहती है कि इंक्रोचमेंट जो सड़कों पे हो रहा है उसको बाकायदा पब्लिक के अंदर अवेयरनेस लाके उसको हटाया जा सकता है। इस अतिक्रमण से आपको भी तकलीफ होती है? हर आदमी को तकलीफ है। पूरी जाम लगा रहता है अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर तकलीफ है। ये तस्वीर भी दिखाई उज्ज्वला। जो पांच कॉलोनी है, क्या वहाँ अतिक्रमण नहीं है? संगम विहार में भी हटा। संगम विहार की बात नहीं, संगम विहार जो है पॉश कॉलोनी नहीं आती। संगम विहार, आप कनॉट प्लेस में अतिक्रमण नहीं है? अतिक्रमण नहीं है क्या? देखिए, खास तौर से माइनॉरिटी को टारगेट और खास तौर से संगम विहार में कौन सी माइनॉरिटी रहती है? संगम विहार में मिली जुली आबादी है, जहाँ पे 90% माइनॉरिटी को जो है टारगेट किया जा रहा है, 10% उन्हें टारगेट किया जा रहा है। जहांगीरपुरी में गुप्ता जी की दुकान गिरा दी गई। फिर एक आध जब जद में आ जाता है उसे तो बेचारे को जहांगीरपुरी में हमें दुख है, हमें गुप्ता जी का भी दुख है, और जो औरों का नुकसान हुआ वो भी, जो अतिक्रमण है वो हटाएं, लेकिन वो लोकल पब्लिक के सहयोग से हटाया जाए। आप दहशत मत फैलाइए। आप सरकार में हैं तो लोगों को दहशत के जरिए जो है डराया नहीं जा सकता। आप जो संविधान के दायरे में जो भी कार्रवाई करेंगे। खान साहब मेरी बात सुनिए। खान साहब इतना जोर बोल रहे हैं, आप कह रहे डरे हुए। नहीं, कौन, हम नहीं डरे हुए। फिर दहशत तो दहशत में कौन? डराने की कोशिश की जा रही है। हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। एमसीडी और बीजेपी जब यहाँ पे आई और अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन नहीं दिखाई पड़ा उनको, कोई इंक्रोचमेंट नहीं दिखा। ये जो दिखा रहे हैं ना, ये जो दिखा रहे हैं ये शटरिंग है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, इसको रिमूव करके। आपका नाम क्या? आपका नाम? मेरा नाम परवेज मोहम्मद है। परवेज साहब, ये बताइए जो अंदर जो क्या मोदी मीडिया मुर्दाबाद। आप लोग बात नहीं कर पाएंगे। सलोनी हमारे साथ मौजूद है, सलोनी के पास चलते। सलोनी, ओवर टू यू। लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम दिखाएंगे। देखिए, यहाँ पर जो लगे हुए थे आयरन रॉड्स लगे हुए थे, जो आगे की तरफ लगे थे, जो परमिटेड एरिया उससे आगे लगे हुए थे, उन्हें निकाला जा रहा है। ये आप देख पा रहे हो, भीड़ लगी हुई है। सीआरपीएफ यहाँ पर है, दिल्ली पुलिस यहाँ पर है, उनकी मौजूदगी में कार्रवाई लगातार हो रही है। और देखिए, भीड़ लोगों की यहाँ पर नजर आ रही है। लोगों का दरअसल ये कहना है कि नोटिस नहीं दिया गया, लेकिन बार बार देखिए एमसीडी जो दावा कर रही है, एमसीडी का साफ तौर पर ये कहना है कि ये कार्रवाई क्योंकि सड़क पर हो रही है, कोई अंदर का निर्माण नहीं है, ऐसे में नोटिस देना जरूरी नहीं था। लेकिन देखिए, लोगों की भीड़ लगी हुई है। ये जो बुलडोजर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, उसे रोक दिया गया है, लेकिन लगातार ये कार्रवाई चल रही है। तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं, देखिए ये जो यहाँ पर आगे की तरफ निर्माण किया गया था, देखिए अपर ग्राउंड फ्लोर का निर्माण यहाँ पर किया गया है, और उसमें सीढ़ी लगाई गई, एक रैंप बनाया गया है, उसके खिलाफ दरअसल ये प्रदर्शन चल रहा है। लगातार ये तस्वीरें हम सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से लगातार एक के बाद एक करके यहाँ पर ये रॉड्स हटाई जा रही हैं, और बड़ी तादाद में लोग यहाँ भीड़ पहुंची हुई है। तस्वीरें जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार भीड़ पहुंची हुई है यहाँ पर जी। उसके आगे एक अपर ग्राउंड फ्लोर टाइप का बनाया है, जो सीढ़ियां चढ़ने के लिए रास्ता और रैंप बनाया गया है, वो अवैध अतिक्रमण है, उसकी परमिशन नहीं थी और उसको यहाँ पर हटाया जा रहा है। ये जो आप देख पा रहे हैं, जो लोहे के रॉड्स लगे हुए, दरअसल यहाँ पर रिनोवेशन का काम चल रहा था जिसे हटाया गया है। बार बार लोगों की ये दलील है, जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं वो ये दरअसल कह रहे हैं कि नोटिस नहीं दिया गया, लेकिन साउथ एमसीडी का ये साफ तौर पर कहना है कि इसके लिए नोटिस जरूरी नहीं था, क्योंकि ये बाहर बना गया है, बाहर निर्माण हुआ है, ऐसे में नोटिस जरूरी नहीं था। लेकिन देखिए, कार्रवाई लगातार हो रही है। और अगर हम दिखाएं पंकज, जरा बुलडोजर की भी तस्वीरें दिखाइए। देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई
रोक दी गई है क्योंकि यहाँ पर अमानुल्लाह खान पहुंच गए थे। उन्होंने कहा कि आप मुझसे बताइए, मुझे कहिए, मैं हटवाऊंगा, लेकिन बुलडोजर से कार्रवाई मत carried out by the locals themselves. In fact, the locals have themselves removing this all these poles. Those were placed here in front of this building. That is now happening amidst the massive presence of security personnel, Delhi police personnel, and CRPF personnel have been deployed in large number. And amidst this, the locals themselves are now removing this. You can clearly see as to how a security layer has been created by the officers of police personnel and the people who own this building. They had encroached this the footpath area to continue their construction to build up one more layer of building in front of this very house, and that is why the MCD officers had come here to remove this. But Amanatullah Khan reached here and asked the police personnel to tell them the areas those have been illegally encroached. After that, the locals have now been asked that they can themselves carry out this drive. Locals have come here. Let's try to talk to few locals here and try to understand about this drive which is being carried out. A few people have also come here with a few documents. We'll talk to them. We'll try to understand what they are telling. In fact, they are the one who are claiming that this is an illegal. This is not an illegally encroached area. In fact, the police personnel had come here in large numbers, and after that itself, the drive was carried out by South Delhi Municipal Corporation. There is a permission. There is a person who has come here with few documents. We'll talk to him and then try to understand. But right now, we are showing you the pictures of how the locals themselves are now removing this illegally encroached pole, which was put up here to build one more layer of building right here in Shaheen Bagh. Few people are telling us that this is a 40-year-old, around 40 years old building. Let's try to talk to a person. क्या डॉक्यूमेंट्स हैं ये? क्या हैं ये? ये एमसीडी के तरफ से कोर्ट ने ऑर्डर किया कि एमसीडी इस बिल्डिंग को न बनने दी जाए, लेकिन एमसीडी वाले रिश्वत लेके जमीन पे फर्जी हवा में काम करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं। कोर्ट का स्टे ऑर्डर होने के बाद क्या है ये? क्या बता? एमसीडी का सीलिंग का ऑर्डर है। अच्छा, डिमोलिशन का ऑर्डर है? हाँ, डिमोलिश सीलिंग का 5 ऑर्डर मेरे पास है। एक ऑर्डर तो मैं अभी आपके सामने तुरंत ला के दे रहा हूँ। 5 ऑर्डर है मेरा, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ पर है ये? जौहरी पारम में, जौहरी पारम गली नंबर 1 में। ये कहाँ है ये? जामिया कॉलेज के पीछे। अच्छा, वहाँ पे इलीगली एंक्रोच किया हुआ है? हाँ, सब कुछ। अच्छा, और उसका खुद का एमसीडी का डीसी का ऑर्डर है, ये हमने नहीं बनाया है। डीसी का ऑर्डर हाँ, नहीं तोड़ा गया? नहीं तोड़ा गया। अच्छा, 5 बार ऐसा पेपर बनाया गया डीसी एमसीडी डीसी की तरफ से। इलीगली एंक्रोच किया वहाँ पे। जब कोर्ट का स्टे चल रहा तो उस पर काम करने का क्या मतलब है? एमसीडी जो है अपने आप काम करवाती है, पैसा लेती है। यहाँ पे आई है एमसीडी तोड़ने के लिए। पता पुलिस क्या बोलती है? कभी बोलती है मुहर्रम का त्योहार है, कभी बोलती है ये है, हमारे पास पुलिस नहीं है, कभी ये नहीं है, यही कहती है बस। ये ऑर्डर आप चाहिए तो फोटोकॉपी लगा सकते हो, आप अपने यहाँ ले सकते हो, आप हमारे तो कोई फर्क नहीं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जो ड्राइव हो रही है, यहाँ पे पुलिस वाले आए, यहाँ पे जो बुलडोजर लेके आए, इस पे आपकी क्या राय है? भाई गलत है तो गलत तोड़ दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ कोई गलत काम नहीं है, ये भी जान लो आप। यहाँ पर कोई ऐसे बदले की भावना है। नेशनल हाईवे से कितना दूर है? नेशनल हाईवे जो है, ये हाईवे इससे कितना दूर है? ये सब बदले की भावना है। नेशनल हाईवे पे बिल्डिंग रहती तभी तो चलता। नेशनल हाईवे से कितनी दूर है? आप पत्रकार महोदय, आप खुद देख रहे हैं। इसको लगा के दिखा दीजिए एमसीडी को कि ये क्या कर रहे हो। ये बिल्डिंग कितनी साल पुरानी? ये देखिए, we are showing you the picture of this illegally encroached area which has now been fallen down, and that has दिखाया हमने नहीं दिखा सकते हो ना। अरे दिखाया दादा। So the locals have themselves removed this area which was illegally encroached a couple of days back, and now the poles have been brought down. The police personnel are now moving ahead. Isha Pandey, who is the DCP of this area, she along with other police personnel now moving ahead. We should also maintain some precaution because a pole is still hanging on this wire, which could cause some sort of disturbances. But these locals have
have now gathered in large number to oppose this demolition drive which is being carried out by the South Delhi Municipal Corporation. Now the bulldozer is moving ahead. Bulldozer is moving ahead. Bulldozer is now moving ahead to some other location, which is certainly telling us that after this illegally encroached area has been removed, now bulldozer has also moved to some other location. We'll try to understand if it is being moved to some other location. So the officers are not telling us, but bulldozer has been taken away from this vicinity from Shaheen Bagh. We can tell to our viewers that bulldozer is now going out, going from this very area. We are now showing you the pictures of this bulldozer which is now moving away from this very area. So the demolition drive which was to be carried here has, we believe, now come to an end because bulldozer has been taken away from Shaheen Bagh. Remember that police was deployed in large numbers, and after that the bulldozer was also called in to raise down that illegally encroached area, but the locals themselves removed that area, and now bulldozer has been taken away from this area. So we believe that the drive has now officially come to an end in Shaheen Bagh area, in G block area of Delhi. The police personnel are still deployed in large numbers. Locals have also come out here in large numbers. We'll have to wait and watch how the drive will take place and what would be the further course of action of South Delhi Municipal Corporation. But let's continue to beam on these pictures, pictures coming in from Shaheen Bagh area where few protesters have been detained. We believe that now the drive has come to an end as a bulldozer has been taken away from Shaheen Bagh area. We are now waiting for an official response from South Delhi Municipal Corporation. Back to you. तस्वीरें पंकज लगातार दिखा रहे, बुलडोजर आगे जा चुका है, बुलडोजर आगे जा चुका है। पंकज जरा ये तस्वीरें दिखाइए। देखिए ये जो तस्वीरें, ये जो रैंप आप देख रहे हैं, रैंप जो बनाया गया और जो अपर ग्राउंड फ्लोर के तरीके से ये बनाया गया है, ये कंस्ट्रक्शन जो किया गया है, दरअसल ये अवैध कंस्ट्रक्शन है जो किया गया है और इसको लेकर कार्रवाई हो रही क्योंकि ये सर्विस रोड है, ये सर्विस रोड है और इसको खाली कराने के लिए यहाँ पर लगातार एमसीडी के अधिकारी, साउथ एमसीडी के अधिकारी पहुंचे हुए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये बसें भी दिखाएंगे। जब दिखाएं पंकज, वो बस दिखाएं जिसके जरिए लोगों को डिटेन करके ले जाया जा रहा है, वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। वो बस आप देख रहे हैं, दर्शकों को हम वो बस दिखा रहे हैं जिसमें जो लोग कार्रवाई में दिक्कत कर रहे थे उन पर कार्रवाई की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से। Pictures of bulldozer which has now been taken away from Shaheen Bagh, but there is still massive presence of locals who are present here in Shaheen Bagh in large numbers. Let me try to once again beam on these visuals. Not only locals but also the police personnel in large numbers. They are deployed here. Let me also try to show you pictures of a few people who have been detained here, and then we'll talk to them. We'll try to talk to them and understand what they are going to do from here, from now onwards. आपको डिटेन किया गया है, क्या डिटेन किया गया आपका, इसके बाद की क्या? मैं मुझे नहीं पता। इस तरफ लेकर आ रहे हैं और ये देखिए ये घुमा रहे, ये बुलडोजर को कार्रवाई होगी या नहीं, बड़ा सवाल ये है। किनारे लाकर लगाया, उस तरफ से घुमाकर इस तरफ लेकर आए हैं और दूसरी तरफ शाहीन बाग के अपोजिट साइड में बुलडोजर लेकर जा रहे हैं। अरे प्रदीक्षित जी, क्या सीन, क्या होना है? अभी आगे होगी कार्रवाई, जानकारी है आपको इस बारे में? चलिए, बोलना नहीं चाह रहे बेशक, आइए आगे चलते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं बुलडोजर को शाहीन बाग के दूसरी तरफ लेकर आए हैं और आगे होनी है कार्रवाई। कोई पता नहीं है, नहीं पता, इनको नहीं पता है कि आगे कार्रवाई होनी है नहीं होनी है। आगे होगी कार्रवाई, किधर होगी आगे, आगे किधर होगी? अरे मुंह से तो बोल दीजिए, बोलना है, इशारा करके बता दीजिए आगे। अरे आगे कहां, जाके खड़ा कर देंगे क्या उधर? होगी अभी कार्रवाई, तो इशारों में कह रहे हैं कि एक्शन होगा। इनका कहना, उज्जवल खुद जो है बुलडोजर पर मौजूद है, मेरे विजय, और हम बुलडोजर के ऊपर विजय मौजूद है। मैं शाहीन बाग की सड़क पर हूं, आपको बताऊं ट्रैफिक जाम बहुत ज्यादा है। इनका कहना है आगे की तरफ चलेगा बुलडोजर, तो आगे कहां चलेगा बुलडोजर,
किस तरफ अतिक्रमण है ये देखिए। जो एक्शन है बुलडोजर का रोड पर, उससे आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे भी ये कार्रवाई के मोड में है बुलडोजर। बेशक उस तरफ से आ गया हो, लेकिन अभी आगे क्या इस तरफ चलेगा सड़क पर बुलडोजर? हाँ सर बताइए। तो इशारा कर रहे हैं आगे की तरफ, तो आप लोग भी वहां जा रहे हैं क्या? हाँ? तो आप देख रहे हैं, ये देखिए, क्या यहां पर बुलडोजर का एक्शन होने वाला है? ये इनके अपने लोग यहां मौजूद हैं। अरे क्या होना है आगे? होगी कार्रवाई अब? पता नहीं पता। तो बुलडोजर ऑपोजिट साइड में लाकर खड़ा कर दिया है। यहां इनकी पहले से टीम मौजूद है, यहां पहले ऑफिसर्स मौजूद है यहां पर, उनसे पूछते हैं। सर अभी एक्शन होना है सर? प्लीज हम जरा ड्राइव के बारे में कुछ बात अच्छा ठीक है। तो ये जी Well, Sohail is showing us the pictures of bulldozer which has now been taken on the opposite side of Shaheen Bagh G Block Market. We will also try to show you pictures of bulldozer which has been now parked on the opposite side. So this drive will continue. As of now, it's not confirmed where it will take place, but this drive will continue. This is what the officers are also telling us. Remember that it was scheduled to carry out an illegal encroachment drive today here in Shaheen Bagh, but because of the massive protest by the locals, the drive has been stopped. The drive has been halted. I would ask Anil to come with me. Bulldozer is now going on the other side. So there we can expect the demolition drive to take place. On the opposite side, we saw massive presence of locals and police personnel. Now we are crossing the road and we'll try to show pictures. We'll try to show you pictures of the demolition drive which will take place here on the opposite side where the protest was basically taking place. We are right now on the opposite side of G Block Market in Shaheen Bagh, where demolition drive is likely to take place here because few illegally encroached areas are here, and that is why the bulldozer has been called in here. Let's try to talk to the person here. बुलडोजर वाले भैया फेमस हो गए, यहाँ पे पहुँचाना। एक्शन होगा कि नहीं? एक्शन की कोई जानकारी नहीं है अभी हमारे। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अभी यहाँ रुकने के लिए बोला है। अच्छा रुकने के लिए बोला है? बोला है। We have been asked to stay here, so the demolition will take place. सर होगा। कहाँ पे होगा सर? किन इलाकों में? अनिल। हाँ सर, the MCD officer has confirmed to us that yes, the drive will be carried out, and that is why the SDMC officers have been called in here on the opposite side of the Shaheen Bagh Market, G Block, and that is why the workers of SDMC along with senior police officers have been called in here on the opposite side, and there are some also locations. Those have. Well, there's a Popular Front of India signboard there in Shaheen Bagh. That is very interesting because of the kind of problems that various state governments have had with the Popular Front of India being involved in various nefarious activities. Piyush on this, our correspondent who's there in Shaheen Bagh covering this exclusive story. Piyush, Popular Front of India in Shaheen Bagh there. It's over to Piyush for more. Towards the building. Well, as we are speaking, we can see the demolition drive which is taking place here, and that on the opposite side of Shaheen Bagh, Aam Aadmi Party workers and Congress workers, they have now moved from that area where we were reporting. Now there is a building also of PFI which is also
facing the demolition, but it was not being allowed to be demolished. We'll go on that side. We'll try to show the pictures of the PFI building also, which is here in Shaheen Bagh. What we're also picking is that the demolition drive will be carried out, and that is why the police personnel are now moving on the opposite side of this G block market, because what we are learning is that now the drive will take place on the opposite side of this market. Let me ask my video journalist to come with me. We'll show and focus on that particular building of Popular Front of India. If Anil can come, we'll try to show you the pictures of Popular Front of India office, which is here. Popular Front of India office, which is there in front of me. That is the building where the demolition was to take place. If Vivek can zoom and try to show you the pictures, that is the building which was to face the ire of bulldozer, but the locals came here in large numbers along with the workers of Aam Aadmi Party and Congress, and they opposed the demolition drive. Now the bulldozer has moved to some other location. That is the official PFI office in Delhi's Shaheen Bagh, where the demolition drive was actually to take place, but it has been stopped. It has been stopped by the well, I'm showing you the pictures of PFI. That's the picture building of PFI, Popular Front of India, which is in Shaheen Bagh. That is the address also, G78 Shaheen Bagh, Kalindi Kunj, Noida Road, Delhi 110025, and that is the headquarters also. You can read also, that's the headquarters also of Popular Front of India, and right next to that particular building, the demolition drive was to be carried out, but it was stopped by the locals here. It was stopped by संभव है कोई स्ट्रक्चर कुछ खास नहीं है इस रोड पर, तो नहीं है। आगे से गाड़ी बुलडोजर यू टर्न लेकर आएगा या किसी तरह की कोई आगे की तैयारी एक्शन की या पहले से चिन्हित कर रखी है उन जगहों पर जहां ये कार्रवाई होनी है, जो अतिक्रमण थे, जो घेर के रखे गए थे, जो अवैध पूरी तरह से थे, क्या उस पर बुलडोजर चलेगा या फिर? जी सर, जी। और इन्होंने कहा है, कहना है कि बुलडोजर तेजी से आगे लेकर जाएं। क्या आगे कोई एक्शन होना है? क्या आगे कोई कार्रवाई होनी है? और ये देखिए आगे की तरफ जा रहे हैं। सर, क्या दूसरी तरफ होना एक्शन? और देखिए बुलडोजर। Well, right now we are present in front of the office of Popular Front of India, which is here in Shaheen Bagh. I would ask Anil Sharma, my video journalist, to focus on this particular building of Popular Front of India, which is in Shaheen Bagh area of Delhi. That's the address also, which is mentioned right there on the board, G78 Shaheen Bagh, Kalindi Kunj, Noida Road, New Delhi 110025. And also you can read the headquarters, which is mentioned there on this board, which is placed right there at the building. And there, here at one side, that's the office of PFI. On the other side, the massive protest is taking place of the workers from political parties who opposed the demolition drive, which was to be carried out here. So that is the office which we are right now showing of Popular Front of India, which is here in Shaheen Bagh. And the demolition drive was to be carried out to the next building, which is there to this very particular building, this very particular headquarters of Popular Front of India. Any minutes from now, we can also expect a statement from Popular Front of India on this drive, which was to be carried out by MCD, but because of the massive protest, this demolition could not be carried out by the South Delhi Municipal Corporation. Now the officers from SDMC have moved from this location to other location where this drive will be carried out, and bulldozers have been taken on the opposite side of G78 market, where few buildings have been illegally encroached. But we are right now showing you the pictures of the headquarters of Popular Front of India, which is here in National Capital, and SDMC officers had come here to raise down this particular building, but because of the massive protest which they faced from the locals here and the political workers, and including the workers from Congress Party, Aam Aadmi Party, the demolition drive could not take place here in Shaheen Bagh area of Delhi. We'll have to wait and watch how the PFI is going to look into this. Let me also try to go towards the main headquarters and try to show you pictures of Popular Front of India and the main entrance. That's the main entrance also.
here. That's the main entrance, the G78 of Popular Front of India office. People are standing here in large numbers. They are also gherawing this entire office, and they did not let the bulldozer to come near to this office. Soon after that, police personnel came here in large numbers, and then because with the help of police personnel, finally the SDMC officers got a respite, and they moved towards the other location because there was some sort of security concern also among the officers also. Let's try to continue to show you the pictures of this building of Popular Front of India, which was where the demolition drive was to take place, but it did not take place. Let me try to get in a word from the few locals here who are present here. We'll try to understand from them about this demolition drive, which was to be carried out, but it has now been halted by the SDMC. We'll get in a word from the people here. I would ask Anil to come with me, then we'll talk to the people here. Sir, अगर आप बता सकें अतिक्रमण के बारे में, जो होना था यहाँ पे अब रुक गया है, क्या आप मानते हैं कि ये रिस्पाइट है? ये शाहीन बाग के लोग आप लोग तो उल्टा ही दिखाओगे, क्योंकि आर भारत तो जो है, समझना चाह रहा हूँ, आप यहाँ के लोकल हैं, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, आप एसडीएमसी ऑफिसर आए थे, लेकिन यहाँ पे ये भी कहा गया कि कोई इलीगली एंक्रोच्ड एरिया नहीं है, तो क्या एक सरहद की सांस आप मानते हैं? नहीं समझ मैं ये समझना चाहता हूँ, जो आज ड्राइव यहाँ पे कैरिंग होने वाली थी, कोई ड्राइव थी नहीं यहाँ पे, मालूम करिए जाके, उनके पास कोई ड्राइव करने की अथॉरिटी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर तमाम इंक्रोचमेंट हटा दिया था, कोई इंक्रोचमेंट नहीं था, और विधायक साहब ने खुद हमारे साथ में जाके पूरा इंक्रोचमेंट हटवाया। यहाँ पे क्या, शोरूम के सामने रेडी लगा के लोग कपड़े बेचते थे, कबाड़ी की दुकान अंदर 10-20 मीटर तक आगे तक थी, वो सब अंदर करवा दी, और वो तमाम फुटेज जो है तमाम महकमों को पहुंचा दी गई थी, और ये इंश्योर किया गया था महकमों की तरफ से भी कि भाई कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी एनक्रोचमेंट हटाने की, जब वहाँ पे है ही नहीं। तो ये सिर्फ सियासी बुलडोज़र था, यहाँ पे आके फ़ोटो वोटो खिंचाने थे, पब्लिक की भीड़ दिखानी थी कि देखिए ये कार्रवाई कर रहे थे, और पब्लिक ने इसका अपोज़ किया। शाहीन बाग की पब्लिक जो है आतंकवादी है, शाहीन बाग की पब्लिक हिंदुस्तान से बाहर से आई है। शाहीन बाग है हिंदुस्तान का हिस्सा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी आता, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी आता। इंसान रहते हैं, आप लोग हैं, देख रहे हैं, हम लोग जैसे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया जैसी यूनिवर्सिटी है जो पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 मकाम पर आई है। ऐसे इदारों से तालीम याफ्ता लोग यहाँ रहते हैं, प्रोफेसर रहते हैं, और आपके मीडिया में भी काम करने वाले लोग रहते हैं, बहुत अच्छे लोग रहते हैं। आपको कितना अच्छा, देखिए आपका आर भारत कितना नेगेटिव न्यूज़ दिखाता है, लेकिन हम आपका कितना अच्छे से ये समझना चाह रहा हूँ सर कि क्या कोई ऐसे इलाके के एसडीएमसी का मानने की इलीगली एंक्रोच किया गया है, तभी वो लोग यहाँ पर आए? नहीं है, सिर्फ जो है मीडिया में हिंदू मुस्लिम ये जो एमसीडी का इलेक्शन होने वाला है, गुजरात का इलेक्शन होने वाला है, या 1-1.5 साल बाद राजस्थान का इलेक्शन होने वाला है, ये दिखाने के बाद कि देखिए शाहीन बाग को कैसे परेशान कर दिया, शाहीन बाग की पब्लिक को कैसे परेशान कर दिया। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है देखो हिंदू राष्ट्र कायम करेगी, मुसलमानों को दबाएगी, कुचलाएगी, ऐसा एक हवा खड़ा करने के लिए ये सब एक्टिविटी। So this is what the local is telling us, that it's nothing but politics which is being done by the BJP. But we are continuously showing you the pictures of this very building of Popular Front of India, which is right behind me, where the demolition drive was to be carried out. But the officers could not move ahead because of the massive protest which they faced. That's the building. You can see that is the building where the demolition. That's the building of PFI, and right next to is the place where the MCD bulldozer had come to carry out the drive, but it was stopped by the locals here after the massive protest which the officers faced. As we are speaking, still a few sloganeering is taking place. On the other side, now a few people have come here with a tricolor. We are showing you the pictures of a few people who have come here with tricolor, and they are unfolding tricolor here, waving tricolor here. So they are also trying to send out a message from this very place. So this has now become another political munch for these leaders, for the workers of Aam Aadmi Party and Congress. Initially they objected to the demolition drive. Now they are now sitting here. They are raising slogans against this illegal demolition drive, which was to be carried out by the SDMC, but because of the protest it could not take place. Now the drive is taking place on the other side. Now the demolition drive is taking place on the other side. Let's try to focus on those pictures where the bulldozer has been parked opposite to this very market
where the officers of SDMC have gone. So we are right now showing you not only the presence of massive police personnel, but also the locals have also gathered in large number where they are opposing to the drive, to the demolition drive. In fact, because of the massive protest which they faced, now this drive has been halted, and the officers of South Delhi Municipal Corporation have moved on the opposite side where they are carrying out a demolition drive on the opposite side. We'll have to wait and watch how they are now going to move ahead, because here in Shaheen Bagh, when in the morning at around 11:30 a.m. bulldozer had reached, the locals had stood right in front of a bulldozer, and they started raising slogans against the demolition drive, after which the Congress leaders first joined the protest, and then Aam Aadmi Party workers also came in large numbers to oppose this demolition drive. Let's once again try to show you the pictures of the Popular Front of India, which is here in Shaheen Bagh, and right next to this building is the very place where the demolition drive was to be carried out, but it could not take place because of the protest which the officers faced here. And now, as we are speaking, they have moved to some other location to carry out demolition drive on the other side. Remember that the officers of SDMC had done a recce of this area. They had carried out a Padyatra. They had moved to each and every location, to each and every building. They had gone inside every building to look for illegally encroached areas. And then after a plan was decided, they had planned to carry out the demolition drive, because yes, there are many areas those are illegally encroached. Now we are seeing few movements taking place. We believe that Amanatullah Khan is now going back, because the locals here and the Aam Aadmi Party is believing that it's a win-win situation for them, as the demolition drive could not take place because of the protest which they took place. But we are showing you the pictures of this very building of Popular Front of India, and right next to this very building is the place where the demolition drive was to take place, but it did not take place. The workers here are now rejoicing. They are now celebrating. They are now they are saying that the workers of Aam Aadmi Party are now saying that for them it's a win-win situation, as the SDMC officers had to go back, and that is why we are now seeing slowly and gradually the people are receding from this very place. They are now going back to their houses, but the police personnel continue to be there in large numbers because of the presence of this the massive locals here. The demolition drive could not take place. Next time the officers have told us that they will come completely prepared with police officers. Last time when the SDMC officers had to carry out demolition drive, they could not carry out because of the unavailability of enough police personnel. And this time when they were given a go-ahead by the Delhi police, even today also they could not carry out this demolition drive. And that has happened because of the massive protest which they faced when they had come here with bulldozers. Continues to be with us. Piyush, over to you. Bring us the latest from the site. Well, Samiksha, we continue to bring the latest from the very place here in G block of Shaheen Bagh, where the SDMC officers had come to carry out a demolition drive, but they were stopped by the locals. Let's continue to beam on the pictures here. Locals still are here in large numbers. They are not going back, but we just saw Amanatullah Khan, who was leading the entire gathering, who has just left from this area. Let's talk to the locals here and ask them how are they feeling when this demolition drive has now been stopped here, because the locals had gathered here. In fact, they did not want this demolition drive to be carried out. In fact, they believe that no area has been illegally encroached, and that is why they wanted to oppose this. दादा, मैं आपसे बात कर सकता हूँ? ये बिल्डिंग कब से है यहाँ पे, अगर आपको मालूम है? आपको मालूम है? So few outsiders have also come here to witness what is actually happening here. Onlookers have also come here. Let's try to talk to some other people here from the locals here. But the massive gathering is taking place here
of the people who live here in Shaheen Bagh. We can also see Amanatullah Khan leaving from this area. We'll try to talk to Amanatullah Khan also, who was leading the Aam Aadmi Party workers. Now the workers have left from here. Amanatullah Khan is leading that entire contingent of Aam Aadmi Party workers who are now leaving from here. Congress Party workers have already been detained. So slowly and gradually the situation is coming under control. Though police personnel have, those are deployed here, they have also been moved to some other location. Aam Aadmi Party leader Amanatullah Khan is also moving back from here. So after the massive drama which was played out here on the streets of Shaheen Bagh in Delhi, now finally it seems like it is going to come to an end after the kind of opposition which the SDMC faced from the locals here. Amanatullah Khan along with Aam Aadmi Party workers is now moving back. We are focusing on those pictures of Amanatullah, who is now here along with other workers of Aam Aadmi Party. We'll try to talk to other workers, but right now we are showing you the pictures of Amanatullah Khan, who along with the other Aam Aadmi Party workers are present here. So finally this drama has finally come to an end. We'll try to get in a word from Amanatullah Khan, who is right now talking to some other channel, but we'll also try to get in a word from him. We are continuously showing you the pictures of the massive presence of locals here who are standing here, who took part in the protest which basically took place here, and they did not want the demolition drive to be carried out. Amanatullah Khan is now leaving from this area. Remember that the demolition drive was to be carried out there at the building which is right next to the PF. I would ask Anil to come with me. We'll try to get in a word from Amanatullah Khan, who is now leaving from here. We'll try to talk to him about this entire drive. Amanatullah Khan is now seen leaving from this place. We'll go and talk to Amanatullah Khan, who is here with scores of Aam Aadmi Party workers. Remember that since beginning Amanatullah Khan has been claiming that no land has been illegally encroached. In fact, he also requested the SDMC officers to tell him if any land has been illegally encroached, then he would himself go and vacate that. We'll try to talk to Amanatullah Khan. दादा एक सेकंड, अगर मैं अमानत भाई से बात कर लूं, एक सेकंड, एक सेकंड दादा, आ जाइए अनिल जी आइए। आइए दादा। Khan, along with Aam Aadmi Party workers, is now leaving from this. So remember that massive drama was played out here at the streets of Shaheen Bagh. Now this area has been vacated by the locals. We'll try to get in a word from Amanatullah Khan. The police personnel have now moved to some other location, because they are saying that there are multiple places in Shaheen Bagh those have been illegally encroached, and this demolition drive will continue to take place. What we are learning is that now SDMC next time will come completely prepared with a lot of police personnel. Last time they did not get opportunity. This time they got the opportunity, but they could not carry out the drive because of the protest which they faced by the locals here. Now, along with Congress Party workers gathered here to oppose this drive. Let me try to get in a word from Amanatullah, who is now talking to other media channels. After this, we will talk to him.
Remember that massive war was also broke out between Aam Aadmi Party and BJP last time when demonstration drive took place in Jahangirpuri, where Aam Aadmi Party claimed that BJP is now attacking the locals just because it wants to earn money. It is now saving the gundas. This is what the Aam Aadmi Party is saying. So here Amanatullah Khan is present. We'll try to get a word from him. From this very place. Remember that NDFC अमर भाई चलो पीछे धक्के मत दे भाई, आइए। ये जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता कोई यकायक नहीं पहुंच गया, अचानक नहीं पहुंच गए। ये वही पुनरावृत्ति दोहरा रहे हैं जो इन्होंने मनीष सिसोदिया ने कहा कि बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को आप संरक्षण दो, इसीलिए वहां लेटने का काम कर रहे हैं। मैं आज इस आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूं, चिंता मत करिए। जो लोग अतिक्रमण को बचाने के लिए, जो बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के अतिक्रमण को बचाने के लिए, आतंक फैलाने वाले लोगों का अतिक्रमण बचाने के लिए जो बुलडोजर के सामने लेटे हैं, जनता भी उनको लिटाने वाली है। जनता भी जल्दी उनको लिटा देगी, क्योंकि अतिक्रमण किसी धर्म का नहीं होता है। अगर यहां पर आतंक फैलाने के लिए लोग आते हैं और उनको संरक्षण, उनका समर्थन आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। और मैं कहना चाहता हूं कि आतंक जो फैलाता है, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या है, जब उसका बम यहां फटता है तो वो किसी धर्म नहीं देखता है, जाति नहीं देखता है, मजहब नहीं देखता है। मजहब देखकर बम नहीं फटेगा, मजहब देखकर बम यहां फटना है यहां फटेगा, वहां फटना नहीं है वहां नहीं फटेगा, ऐसा नहीं होगा। जब बम फटता है, जब आतंक होता है, तो उसका शिकार, उसकी प्रताड़ना सबको झेलनी पड़ती है। धर्म जाति का कोई आधार नहीं है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वालों से कि इसको धर्म से मत जोड़ो, इसको किसी भी जाति मजहब से मत जोड़ो। जो आतंकी है वो आतंकी है, उसकी जाति मजहब नहीं है। जो बांग्लादेशी रोहिंग्या जो इस देश के नहीं है, उनको इस देश की किसी भी चीज पर कोई अधिकार नहीं है। वो हमारा रास्ता रोके, सड़क रोके, इस पर उनका कोई अधिकार नहीं है। और अगर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होती है जहांगीरपुरी के अंदर, तो गुप्ता जी और झा साहब का भी ऊपर कार्रवाई होती है, लेकिन तब उस कार्रवाई को नहीं देखा जाता। और आज जिस तरह से जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के नेता जिन लोगों के अतिक्रमण को बचाने के लिए बुलडोजर के सामने लेटे हैं, उनको देश और दिल्ली की जनता देख रही है। उनको बहुत जल्दी सबक मिलेगा और दिल्ली की जनता उनको लिटा देगी, क्योंकि वो आतंकियों के समर्थन में आए, वो बांग्लादेशी रोहिंग्या के समर्थन में आए। आपने देखा किस तरह से बांग्लादेशी रोहिंग्या, और मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये निगम की पहली कार्रवाई नहीं है। इस अप्रैल महीने के अंदर, अप्रैल के बाद आज मई हो गया है, इस सवा महीने के अंदर ये 40 बार कार्रवाई हो चुकी है। चाहे मदनपुर खादर हो, बदरपुर हो, ओखला हो, किराड़ी हो, रिठाला हो, रोहनी हो, करोलबाग हो, हर जगह कार्रवाई चल रही है। लेकिन जिस तरह से इस बात को सांप्रदायिक आधार बनाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। जब कोई अतिक्रमण करता है तो वो धर्मनिरपेक्ष हो जाता है। जब अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई निगम कर रहा है तो उसको सांप्रदायिक बता रहे हो। जब कोई दंगा फैला रहा है तो कोई नहीं बोल रहा है, और जब दंगाइयों के ऊपर कार्रवाई होती है तो उसको सांप्रदायिक चश्मे से देखते हैं।
तो ये जो चश्मा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो अपीजमेंट की राजनीति कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, उनको आज ये सबक जरूर मिलेगा। जो आज इस अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जो बांग्लादेशी रोहिंग्या और गैर कानूनी रूप से इस दिल्ली के अंदर आतंक फैलाने का काम करने वाले, अगर उनके ऊपर एक कार्रवाई चली है और उसके सामने जो लोग बुलडोजर के आगे लेटे हैं उनको जनता लेटाने वाली है, ये बात मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद। हेलो 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 चल रहा है ये माइक? दोस्तों, पागल है, बताए कहाँ है रोहिंग्या? आ जाए यहाँ पर, मैं साथ चलूंगा, कोई नहीं रहेगा। इनकी पूरी हिफाजत मैं देता हूँ। आए मेरे साथ, फ्रेंडली बैठे, दिखाए कहाँ गलत है। जहाँ गलत है कहीं भी, अरे आप ये जो बुलडोजर चला रहे हैं ना, ये लोगों को, पूरी दिल्ली में लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। ये महंगाई से ध्यान हटा रहे हैं। आज लोग महंगाई से परेशान हैं, आज बेरोजगारी से परेशान है, आज इस नफरत की राजनीति से लोग परेशान हैं। ये अगर कहीं इनको लगता है कहीं इंक्रोचमेंट है, वहाँ के लोगों को कॉन्फिडेंस मिले, इन्होंने ही तो भराया था। वालों को क्या कहना चाहोगे? ये पैसे के लिए बुलडोजर, एक जगह बुलडोजर चलाते और 20 जगह से वसूली करते हैं, 20 जगह से वसूली करते हैं। सिर्फ ये चल रहा है, नहीं तो वहाँ के कॉन्फिडेंस में लोगों को लें, वहाँ खुद हटा लेंगे लोग, वहाँ के लोकल विधायक को कॉन्फिडेंस में ले, वहाँ के इलाके के लोगों को। आरडब्ल्यू चुनाव के मद्देनजर ये हो रहा है। बिल्कुल राजनीति करनी है इन्हें, हिंदू मुसलमान करने के लिए सिर्फ शाहीन बाग में आए हैं। अमानतुल्लाह को गुंडा दिखाने के लिए, बाहुबली दिखाने के लिए, आतंकवादी दिखाने के लिए यहाँ आए हैं। बाकी यहाँ कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। यहाँ से वहाँ तक अब दिखाओ आप कैमरा, रोड पर खड़ा हूँ 13A पर दिखाओ। अगर कहीं इंक्रोचमेंट है, फुटपाथ बना हुआ है पीडब्ल्यूडी का, ये रोड पीडब्ल्यूडी का जो दिल्ली और नोएडा को जोड़ता है, अगर इस पर कहीं अतिक्रमण है तो मुझे बताओ, मुझे बताओ। एक पीएफआई का ऑफिस, उस पर भी ऑब्जेक्शन रेज किया बीजेपी ने उसमें। भाई ये तो करने दो इन्हें। मैं कह रहा हूँ 2018 से पहले की बनी हुई, 2016 से पहले की बनी हुई बिल्डिंग है, प्रोटेक्टेड है। ये सब अनऑथराइज कॉलोनी में आता है, 1639 कॉलोनी के अंदर है। यहाँ पर सीवर का काम चल रहा है, सड़कों का काम चल रहा है, दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा है, पानी की लाइनें चल रही है। ये तो अनऑथराइज रेगुलाइज इलाका है, जो अभी 1639 कॉलोनी उनमें से एक है। ये बहुत बहुत धन्यवाद अमृता जी हमसे बात करने के लिए। तो हमारे हैं वो रेगुलराइज्ड हैं और बीजेपी जो है इस पूरे मामले में राजनीति कर रही है। उनके सामने पीयूष मिश्रा, रिपोर्टर मीडिया नेटवर्क। So dramatic scenes unfolding there at the Shaheen Bagh protest site, and we had Piyush who is reporting constantly live from that demolition site in Shaheen Bagh. So a big crackdown there. We have Piyush back with us. Piyush, over to you. Well, we just spoke to Amanatullah Khan, who has once again reiterated what he has been saying, that nothing, it's a big politics which is being done by BJP. BJP is trying to do this just because the elections of MCD also are all set to take place. So as the encroachment drive was to be carried out by SDMC, which has been stopped by the locals here, now the Aam Aadmi Party is hitting back at BJP by saying that no illegal encroachment has been done. In fact, remember Samiksha, we showed the pictures of Popular Front of India office also to our viewers. I asked question about this office also, which is right behind me, but Amanatullah Khan said that no illegal encroached areas are here, and these buildings in fact were constructed before 2008. So all buildings here, each and every location, each and every corner of this area is legally constructed. There is no illegal encroached area here in Shaheen Bagh. Now how the SDMC is going to carry out its drive, that is going to be the big question, because today when they reached here, they faced a massive protest. Aam Aadmi Party came here, Congress came here, they stopped SDMC and did not let the demolition drive to carry out. In fact, Aam Aadmi Party leader Amanatullah Khan is telling to us that not even a single land has been illegally encroached, and if there is an illegally encroached area, then he would himself go
and remove that, like he did in a case which he mentioned to us about a toilet which was built in front of mosque, which he himself demolished. He himself called JCB, and then that particular JCB demolished that particular toilet which was built in front of mosque. This is what Amanatullah Khan is saying. He is telling us that locals here who are living here, they have not encroached any land illegally. In fact, these buildings are 40 years old, 70 years old, and proper documentation has been done of this entire market, which we are right now showing. You see the workers of Aam Aadmi Party and Amanatullah Khan is leaving from this area. The political drama which was played out on the streets of Shaheen Bagh has finally come to an end. What we are learning from our sources is that this demolition drive will continue, and then after our next time when SDMC officers come here, then they will come with full preparedness. This is what the SDMC officers have confirmed to us. Much more about this drive is coming on the other side of this very short break. Stay tuned. It was a dark night with a bright idea. Guys, we need something big. Let's do what we always do. Something really bold. Let's take on the D segment. Let's create the big daddy of all SUVs, because nothing else will do. The big daddy of SUVs from Mahindra, coming soon. Amity has been ranked among the top universities globally for producing the most employable graduates by the Times Higher Education UK. Yet another testimony to Amity's excellent placement record. What is being claimed by the Hindu petitioners is that this particular structure of the mosque is entirely a temple. However, the Muslim petitioners have made it very clear that it's a 17th century building, which is why a recent videographic survey hurt their sentiment. जो लोग वहाँ के सर्वे को रोक रहे हैं, तो प्रश्न उठेगा क्या छुपाना चाहते हैं, किस चीज के से घबरा रहे हैं कि ये बाहर आ जाए। भारत में कानून का राज है। अगर आप गलत तरीका अपनाते हैं तो उसके काट भी है। जिस हिसाब से उन्होंने एक पहले 6 बजे के आसपास उन्होंने ये वारंट निकाला और दूसरा वारंट रात को करीब 10 बजे के करीब निकाला। तो इतना तो था ही, हम लोग इंतजार कर रहे थे। हमारे साथ हमारे ये बच्चे भी साथ में थे, कुछ मीडिया कर्मी भी साथ में थे, और वो भी इस इंतजार में थे कि पुलिस कब आती है। लगभग 11 साढ़े 11 बजे न्यूज आई कि बग्गा ने उनके खिलाफ याचिका दायर की है। तब हम लोग निश्चिंत हो गए कि अब पुलिस कम से कम जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक नहीं आएगी। हम लोग रिलैक्स हो गए। 12 बजे के आसपास फैसला आ गया कि बग्गा को 2 दिन की राहत मिली है। अब उस राहत का फायदा किस हिसाब से उठाना है, क्या क्या करना है, ये बग्गा जाने, पार्टी जाने और उनके वकील जाने। इन्होंने कल फिर ये दर्शा दिया कि इस देश के अंदर कानून का राज चलता है। अगर अरविंद केजरीवाल सोचते हैं कि सत्ता के बल पे, पुलिस के बल पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा सकते हैं, झुका सकते हैं, तो फिर से मैं उनको कहता हूं, एक नहीं 100 FIR कीजिए। अरविंद केजरीवाल जी, मैं ये सवाल पूछूंगा कि आपने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को 24 घंटे के अंदर जेल की सलाखों में डालना था। आपने चुनाव के अंदर वादा किया था, लेकिन आप ही के विधायक ने, जो उस समय SIT कमेटी के सदस्य थे और जिन्होंने इस्तीफा दिया था, और आप उनका नाम बार बार लेते थे, जो आपके अमृतसर के विधायक हैं, ने ये कहा कि जिन लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को बचाया, आपने उनको प्रमोशन दे दी। In a shocking incident, 2 persons were injured after 15 to 20 rounds of firing took place in West Delhi, Subhash Nagar, late at night on Saturday. In fact, these firing took place yesterday in the middle of the night, after which 2 people have been injured. They have been rushed to the spot, and after the incident,
took place, several police men, several police officials were deployed in the area, and there is a heavy deployment in the shooting site, and several barricades have also been placed, and the inquiry has also been placed by the officials. According to the preliminary information that we are getting from the officials, the investigation has been put in place as Top headlines at 1:30. Bulldozers roll in Shaheen Bagh as the anti-encroachment drive continues in the national capital. Congress and the Aam Aadmi Party workers blocked the bulldozers staged protest in Shaheen Bagh. Protesters clash with police. Multiple protesters detained after attempt to block bulldozers. Ranas take the fight to the Maharashtra government. Navneet says they will not back down, will continue the struggle. Navneet and Ravi Rana to meet Home Minister Amit Shah and Lok Sabha Speaker Om Birla in the national capital. And it's a mega crackdown on the Dawood network. Top Dawood aide Salim Fruit detained in Mumbai. These are the visuals we are getting to you. Live visuals coming in of the Victory Day parade, which is underway. The visuals are coming to you. The visuals on your screens are live from Moscow of the Victory Day parade, which is taking place. We have Vladimir Putin as well, who is in this Victory Day parade. The live visuals we are getting to you right now of Russia's Victory Day celebrations, which are underway, and we have Russian President Vladimir Putin as well. We have our senior executive editor Abhishek also joining us on the phone line. Abhishek, what can you tell us about this Victory Day parade which is underway in Moscow? Well, so annual ritual with the Russians, the Victory Day parade on May 9, which they mark to underscore their victory in the World War II. We have seen pictures of President Putin now being taken around. Just before this, we had the actual parade that went on, and before that, of course, President Putin made his address. What is important is that President Putin did not mention about when Russia's ongoing war in Ukraine would end. He did mention about the Donbas republics. He did mention about the war going on in the Donbas region. So I think that was sort of a giveaway that Russia's ongoing Ukraine war in Ukraine would now be focusing only on Donbas. That's a rejig of their strategy that has already taken place, focusing only on the eastern Donbas republics. President Putin there speaking to his defense minister, General Shoigu. And apart from that, I think there was no big announcement in their speech that happened just a while back. So it was expected that President Putin might announce something big in terms of change of his strategy, in terms of perhaps bringing an end to the war, but nothing like that happened. And increasingly isolated Russia going through these annual rituals of marking the Victory Day by a parade. It's a big day in the Russian calendar in terms of government programs. And if you look at these pictures, I think the event is effectively over with President Putin making his way out after having made that speech. And before that, the parade, which is accompanied with a lot of pageantry and display of military might of Russia. Russia, because of the last 2.5 months of war, is hemmed in with sanctions. The Russian economy is suffering, and yet we have seen a certain resolve to continue with the war effort in Ukraine. And President Putin having underscored that in his speech that while Russia, and he praised martyrs, I think in the first official acknowledgement that Russia has suffered
some losses in the war, said that the military effort and the war in the Donbas republics would continue. So that was an important takeaway, if there was one, insofar as the present events are concerned. But President Putin there now being taken out, I believe, of the venue where the parade took place at Red Square in Moscow. And overall, if you look at it, the Russians have really stuck to their guns despite the world effectively polarizing against them. The West particularly, of course, assisting Ukraine also. Yesterday, in fact, we had President Zelensky of Ukraine saying that there has been a reinvention of evil. We see President Putin taking a salute and now paying his homage at the National Memorial of the Martyrs of War. Earlier he had given his Victory Day speech. And taken a salute from his military. This is happening in the midst of an ongoing war that Russia is waging in Ukraine. On the principle of Russia's historical and cultural linkages to the Ukrainian Republic. In fact, Russia believes that Kyiv, the capital of Ukraine, is mother of all Russian cities, and the present government in Ukraine has played into the hands of West. So we have seen, of course, the West galvanizing with its support, both in terms of financial aid and military support in sustaining this war. Ukraine, in fact, has been successful in counteroffensive and made Russia change its military strategy a couple of times over the last 2.5 months. It has not been a cakewalk, and because of which the Russian president perhaps has been under a bit of a pressure. Though, of course, in the entire event that we have seen today, he has not shown any of it in his body language or his face. In fact, he underscored the continuation of Russia's military action, or the special military action that they have called in Ukraine.
President Putin there paying his homage to the Russian martyr soldiers of the Great Patriotic War, as it is called, the victory of Russia in the Second World War, the Soviet forces having defeated the Germans at that time. This is the 77th anniversary, and this is an annual military parade that is held at the Red Square, and President Putin there leading the nation in paying his homage to the martyrs of the Great War, of the Great Patriotic War, as it is called. We are seeing the Russian military might with its full paraphernalia, and an attempt has been made to present a picture of normalcy. Remember, in the ongoing war also Russia has lost many soldiers, and this seems, with this the event coming to an end, and I hand it over to the studios. So many thanks, Abhishek, for joining us there and for telling us all about this very important day in the history of Russia and in present-day Russia as well. It's time now for a short break. Coming up on the other side, protesters clash with police. Multiple protesters detained after attempt to block bulldozers in New Delhi's Shaheen Bagh. Also, Ranas take the fight to the Maharashtra government. Navneet Rana says they will not back down, will continue the struggle. It was a dark night with a bright idea. Guys, we need something big. Let's do what we always do. Something really bold. Let's take on the D segment. Let's create the big daddy of all SUVs, because nothing else will do. The big daddy of SUVs from Mahindra, coming soon. Amity has been ranked among the top universities globally for producing the most employable graduates by the Times Higher Education UK. Yet another testimony to Amity's excellent placement record. In a shocking incident, 2 persons were injured after 15 to 20 rounds of firing took place in West Delhi, Subhash Nagar, late at night on Saturday. In fact, these firing took place yesterday in the middle of the night, after which 2 people have been injured. They have been rushed to the spot, and after the incident took place, several police officials were deployed in the area, and there is a heavy deployment in the shooting site, and several barricades have also been placed, and the inquiry has also been placed by the officials. According to the preliminary information that we're getting from the officials, the investigation has been put in place as to who was behind the firing. CCTV cameras are being constantly checked of the entire location, and the injured people are undergoing treatment in the nearby hospital. The entire incident took place on Saturday night. This is Sumi Rajapun for Republic Media Network with video journalist Ranveer, New Delhi. Refugees have gathered here in Jammu as a part of Smaran Divas to remember those who have attained martyrdom in the Pakistan's brutality when the part of Jammu and Kashmir was illegally occupied by Pakistan, and now these people have come from various parts of the country to remember those who have given the supreme sacrifice. Sir, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो हमारे वहाँ पर छूट गए विस्थापित लोग, हमारे जो वहाँ पर पूर्वज छूट गए हैं, उन लोगों को हम अपने साथ मिलाना चाहते हैं और हम उनके साथ मिलेंगे। पीओजेके का जो हिस्सा उसको लेने के लिए आज संकल्प लेंगे और अपने जो पूर्वज थे उनको हम आज श्रद्धांजलि देंगे। श्रद्धांजलि दे रहे सर, आपसे जानना चाहूँगा, लगातार मांग उठ रही है पीओजेके वापसी को लेकर, क्या कहना चाहें? ये बहुत अच्छा कदम है, ये ऐसा होना चाहिए, हम उधर जाएं वो इधर आएँ, एक दूसरे का मिलाप होना चाहिए। वापस आना चाहिए पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर? बिल्कुल बिल्कुल वापस आना चाहिए पूरे का।
We're reporting outside the Kashi Vishwanath temple over here and the mosque that is all mired into controversy. We'll take you straight to the visuals over here in Varanasi. In the visuals, we are bringing you the live pictures of this particular newly built Kashi Vishwanath corridor, and right next to it is the mosque which is under the scanner of all the controversies. This is the particular mosque where against which you can see there's a brown wall over there. My video journalist is zooming in and showing you the brown wall. The petitioner are questioning that they should be allowed to go inside and worship at the temple of Gauri Shringar. That particular brown wall that is just one of the walls of these mosques is being contended to be the Gauri Shringar temple by the devotees over here. And now in their petition they request that they should be allowed to go freely inside and should be allowed to worship and offer prayers over here. However, the mosque committee is against this entire drill, following which, hearing the petitions, the court had asked for a videographic survey, but the entire endeavor fell flat as when the court monitored committee of all the officials came here for the videographic survey. They were not allowed to go inside. There was a massive protest here at gate number 4 of Kashi Vishwanath temple over here. Hundreds of people from the Muslim community came forward and they expressed their displeasure, moving the Varanasi district. Welcome back after the break, and for the latest in the Navneet Rana case, we go across to our correspondent Ankit, who's outside the Sessions Court where her hearing is likely underway. Ankit, it's over to you for the latest from regarding Navneet Rana. What's happening? So what's happening right now at the Sessions Court is that the special public prosecutor, that is Pradeep Gharat, who has been arguing against the Ranas right since they were arrested first almost 3 weeks ago now, is arguing that their bail is currently cancelled because they have spoken to the media about a matter that is under investigation. Hence, he is now arguing for the court to allow the police to take the Ranas into custody. He is citing specific statements that they have made in the media. Especially the statement where Navneet Rana said, not 14 days, I am ready to be in jail for 14 years if it means upholding the Hanuman Chalisa. And Pradeep Gharat is arguing how this can be termed to be not related to the case in any way. He's saying that because this is related and because the Ranas have addressed the media regarding this, their bail automatically stands cancelled, because remember, it was a conditional bail that was granted, and one of the conditions was that they must not speak to the media regarding any matter related to their case, nor should they repeat the same offence. But the Ranas, of course, have today departed for Delhi, where they want to meet the Home Minister as well as the Lok Sabha Speaker, that is Om Birla, and accordingly, the plea has been filed by Special Public Prosecutor Pradeep Gharat on behalf of the Mumbai police, who wants to take them back into custody. And that is the hearing that is going on right now. Arguments are being made. The latest argument by Pradeep Gharat is his referring to the statements by Navneet Rana regarding harassment in court, and he says, did they approach the appropriate authority? What is important is the restraint issued by the court. And so that is Pradeep Gharat's argument. Before that, he cited another statement made by Navneet Rana where she had dared the Chief Minister directly, Uddhav Thackeray, and citing that statement, Pradeep Gharat asks, is this not a subject matter of the case? He also says, this is the Special Public Prosecutor for the Mumbai Police, stating that the accused has no respect for the honor of the court. She is running away to Delhi. At that time also she briefed the media, so he is referring to the statements made by the Ranas earlier today. And he's also stating
Another, what I reiterated to you, I'll just state again, the way she said, reading Hanuman Chalisa, why 14 days? I'm ready to remain in jail for 14 years. Hanuman Bhakts will teach them a lesson, then meaning the MVA government. And Advocate Gharat says, can anyone say this statement is not related to the case? So this is the breaking development that's coming in. Essentially, a plea has been filed by Special Public Prosecutor Gharat on the behalf of the Maharashtra government, and he wants the bail. He says that the bail already stands void. As soon as they addressed the media on the topic, the bail stood void. And now he wants the court to issue a non-bailable warrant so that the police can execute it and take them into custody. So this is a serious escalation in the legal matter pertaining to the arrest of the Ranas made from their home in Khar almost 3 Saturdays ago. We saw how they spent around 12 days in custody. They had initially been remanded to 14 days judicial custody. They spent around 11 of them there. If you add to that the one night that they had spent at the Khar police station, and then later that same night the Santa Cruz police station, it was about 12 nights that they were in custody. Then Navneet Rana came out and she said that she was not feeling well. She had a medical issue and she was admitted to Leelavati hospital. And now also you have the related matter of the BMC being at their home. So the latest argument is that Pradeep Gharat says that they have spoken about the merits of the case with the media. He says, I am going to fight against this action. She is giving an open challenge after coming out, and he calls this an indirect message. And therefore, Pradeep Gharat makes his prayer to the court and before the judge. He says, therefore, sir, it is necessary that a non-bailable warrant may be issued against the both of them. So this is a serious hearing that's happening right now, and at stake is the liberty of the Ranas. Essentially, the Mumbai police and the Maharashtra government via its special public prosecutor is arguing that the Ranas were in violation of the court's order, the conditions that were imposed while granting them bail, and they spoke to the media about a matter that is very relevant to the case and also continued to dare the chief minister on the topic, and hence the prosecutor argues that their bail is void and that the court must issue now a non-bailable warrant which they can execute and take the Ranas into custody. Remember, viewers, the Ranas today, they did speak to the media and they were setting out to Delhi because they want to meet the Home Minister as well as the Lok Sabha Speaker, that is Om Birla. They also, Navneet Rana did say that if it is it's not a matter of 14 days, she is ready to go to jail for 14 years. If it means upholding the Hanuman Chalisa, and that the Hanuman Bhakts will teach the MVA government a lesson. And that is the subject matter of the hearing that is ongoing right now behind me in the Sessions Court. Serious arguments being made by the special public prosecutor there, Pradeep Gharat, who has been part of this case right from the beginning. On the other side, we have seen how a number of senior lawyers have been representing the Ranas as well. Rizwan Merchant and Abad Ponda have in earlier hearings represented them, and we are now awaiting the latest arguments that are being put forth in court. Just to reiterate, the Mumbai police is arguing for a non-bailable warrant to be issued so that they can take the Ranas into custody once more. Remember, they have been out of jail for essentially 4 days. It was on May the 5th that they came out. One day prior to that, they were granted conditional bail. The conditions were such that they had to pay 50,000 surety each. They could not speak to the media. They could not repeat the same offense. And viewers, I must remind you that today, after a number of days and after a number of notices, the BMC did finally enter the home of the Ranas in Khar. They were not there at this time, and a survey is being conducted over whether or not there were any illegal alterations made in their house. And the latest argument also I have now for you. The special public prosecutor Pradeep Gharat refers to comments made by Ravi Rana. He says, whether the chief minister is misusing his powers by when the remand is passed in court. The comments were, we will follow up with complaints about Sanjay Raut and Anil Parab. Remember, Ravi Rana had spoken and he had said Sanjay Raut and Anil Parab are welcome to come to the house with the BMC. And so Pradeep Gharat argues they are threatening directly the Chief Minister as well as Sanjay Raut and Anil Parab, and he asks, is this not a threat? So that is the latest that's coming.
The special public prosecutor here is making arguments to the effect that he's trying to say that the Ranas are speaking about the matters that the court had told them not to. Now, how the court views this remains to be seen. But right now, the plea has been filed to take the Ranas back into custody, and it remains to be seen what the judge makes of all this. Remember, it's not a matter where the prosecutor is arguing that their bail is void. The prosecutor is taking for granted that their bail is void. Because they address the media, what they want is to immediately take them into custody. They have also taken note of the fact that the Ranas have now moved to Delhi. They are on their way right now. We had heard them just before they left. They were going to meet Amit Shah and Om Birla. And that is the latest right now coming in from the court. One more argument. The learned magistrate has asked about any complaints regarding jail authorities. Remember, Navneet Rana had complained. And this is a sorry state, sir. That person who is sitting there to make laws does not know that a person can be arrested without a warrant in a cognizable offense. So arguments are going on inside. It's the special public prosecutor that is doing the talking currently, and he wants a non-bailable warrant issued by the court to take the Ranas back into custody. So Ankit, well, when we talk about the Maharashtra government, it's very clear about what it wants. It wants a non-bailable warrant right now. It wants a rearrest. But what about the Rana's lawyers? What are they saying? What is their stand on the matter? Is there any indication? Have they given you any indication, any indication from your sources how they would fight? At this moment, they have not made any arguments yet. We are yet to ascertain what exactly the Ranas will say in response. But copious arguments being made certainly by the special public prosecutor on behalf of the government, the state government that is. Well, we cut across now to those visuals from Shaheen Bagh, where high drama was played out just a short while back when a bulldozer arrived there from the MCD to continue with its anti-encroachment drive, which was stalled. Now we are seeing people climbing walls. There are reporters on the ground will be joining us shortly to tell us about what's happening there. These are live visuals that Republic has accessed for you from Shaheen Bagh in New Delhi, where the MCD was to conduct its anti-encroachment drive just a short while back, with bulldozers arriving at the Shaheen Bagh market. But Piyush, our correspondent, who's there at the spot on the phone line, joining us to tell us what these visuals are about. Piyush, we believe that the anti-encroachment drive stalled for now, but we are seeing some visuals coming in of people erecting bamboo barricades and so on. Well, absolutely. We are now seeing these pictures coming in from Shaheen Bagh, that they are now the people, locals who had gathered here, they are now erecting the barricades. Those were put in place. In fact, they were removed. Right. Well, barricades being put up. Are these political workers? Are these local residents? What can you tell us? Live visuals there from Shaheen Bagh. Even as the bulldozer rolled in, protests erupted, and the bulldozers, the anti-encroachment drive of the MCD that was to begin today was stalled, and the police also entered the area. There was a political war of words as well. The AAP and the Congress jumping into the fray. Our correspondent Piyush to tell us more. Piyush, what visuals are these that we are seeing? They are from Shaheen Bagh. We believe crowds gathered there, even and a barricade-like structure with a bulldozer in the middle. Well, absolutely. We are now seeing the pictures of the island structures which was demolished by the locals themselves. It is now again being erected by the people who have basically brought that down. Now the people here, locals, have once again gathered in large numbers. We are right now seeing the pictures coming in from Shaheen Bagh with a massive gathering of locals. Remember that today in the morning at around 11:30 a.m. The officers from HDMC, they had come here
in large numbers, but they were stopped by the locals. And now what we are seeing, the pictures of the same place because of the massive protest which they faced. Because of the massive protest which the SDMC faced, the demolition drive has now been halted for now. The demolition drive has now been halted for now. We are also showing you the live pictures from right outside the same place, where today in the morning the people had themselves removed the structure. Now we are also getting the pictures of the same place where the people are now collecting all those iron structures and once again trying to erect that. What you can also tell to our viewers that now the SDMC officers have moved back from this very place. And they are in fact moving to some other location for the demolition drive, which they will carry out, because what SDMC believes is that there are many illegal encroached lands in Shaheen Bagh, and the drive of demolition will continue in this very area. We'll have to wait and watch how the corporation is going to move ahead. As far as demolition in this area is concerned, we spoke to Mahatullah Khan also, where he's now coming out and saying that politics is being played by the Bharatiya Janata Party. कुछ डायरेक्टिव्स देता है, क्योंकि सिर्फ शाहीन बाग नहीं बल्कि पूरा दक्षिणी दिल्ली का जो इलाका है, जिसमें सर्वे करके तमाम चीजों को लेकर कहा गया था कि यहाँ पर अवैध निर्माण किया गया है, उन पर कार्रवाई करने की बात थी, और बुलडोजर वापस चला जा चुका है। और तस्वीरें लगातार भी हम आपको दिखाते रहेंगे। देखिए ये पूरा एरिया यहाँ पर देखिए ये पूरा एरिया अगर हम आपको दिखाएं, यहाँ पर ही कार्रवाई की बात कही जा रही थी। कहा जा रहा था जो रैम्स बनाए गए हैं, रैम्स के ऊपर यहाँ पर अवैध निर्माण है, लेकिन लोगों ने ये कहा है, लोगों का दरअसल ये कहना है कि ये बदले की कार्रवाई है। लोग ये कह रहे हैं कि जब ये समझ में आया कि शाहीन बाग में अलग अलग इलाकों में जो अवैध निर्माण है, तो यहाँ के विधायक पहुंचे, लोकल नेता पहुंचे, और उन्होंने खुद वो अवैध निर्माण हटा दिया। और ऐसे में यहाँ पर कार्रवाई आज नहीं हुई है। और एक रिपोर्ट आपको इसी से जुड़ी दिखाते हैं, आपके सामने रखते हैं। I can hear you. Well, yes, the very place, the block of Shaheen Bagh where the bulldozer had come with, but because of the massive protest bulldozer faced, now bulldozer has gone away from this Shaheen Bagh, showing you the same pillars. Those remember that they had erected bulldozer reached here. They themselves removed this illegal structure which was placed here. Now all these pieces have been collected here. We are now given to understand is that they are again going to erect it. This is what the locals are trying to do. They are saying that no land has been illegally encroached. No land has been illegally encroached. So the people here are now very much agitated. They are saying that this area was not illegally encroached. I'll also try to talk to this man who has in fact erected a temporary structure here. I'll understand from him, because now he believes that no place, no area was illegally encroached. When the bulldozer reached here, at the time itself, the people who live in this area, they gathered and then they removed this temporary structure. They removed this temporary structure on their own. But now what they believe is that it was not illegally encroached. Now they are going to erect this. What we are now learning, and that is why we have gathered here. On the other side, we can also see few people are now removing this, and they are taking that particular. They are taking out that particular poles, the iron bolts from here to some other location. They believe that no area was illegally encroached. When the bulldozers reached here, they themselves removed this entire block. The MCD in fact had come here. Has issued notice, no immediate rearrest.
Our correspondent Ankit covering this story. So big relief there for the Ranas who are already on their way to New Delhi. But we'll try and connect with our reporter Ankit to find out what exactly the court said and what was the reasoning behind this verdict. Ankit, it's over to you. So the breaking news update right now is that the court has issued notice to the Rana couple. There is no arrest at the moment. Remember, the Maharashtra government via its special public prosecutor was arguing that their bail stands void and that they must immediately be issued a non-bailable warrant so that they can be taken back into custody. But the court has not done that as yet. It has instead issued notice, and we are now awaiting right outside the Sessions Court for the special public prosecutor to come out and to tell us when we can expect the after the notice is issued, by when they have to respond and when this matter will be taken up again. So for the moment, there is little bit of relief for the Rana couple. They have moved now. They are going to Delhi for the time being to go meet Home Minister Amit Shah and the Lok Sabha Speaker Om Birla. Meanwhile, because they had spoken to the media, the government was trying to get them once again, take them into custody because they had purportedly violated the conditions by which the bail had been granted to them. Just 5 days ago, they were not supposed to speak to the media about issues that are related to the investigation, and they were not to repeat the offense. And so the public prosecutor made out in his arguments that they had in fact breached this, and now they have been issued notice. And they had asked for the bail to be cancelled in this regard, and so that they could be taken back into arrest. That has not been done. Instead, notice has been issued, and we are just now awaiting to find out what exactly are the terms of the notice that the court has issued. By when must the Rana couple reply? By when this matter will be taken up again? Remember, it was only the special public prosecutor who argued today. The Ranas did not argue. The prosecutor gave at length his arguments for why the bail must immediately be cancelled, or rather why in his view it has already lapsed because they had addressed the media, and why they must be issued a non-bailable warrant. However, the court did not do that. The court will instead issue a notice to Navneet and Ravi Rana and ask them about their response to this prayer by the Maharashtra government in this regard, which wants to take them back into custody. And this is the latest. The last argument that Pradeep Gharat made was, and I'm quoting, even after the court's direction, Navneet Rana has challenged the Chief Minister and has spoken about Sanjay Raut and Anil Parab. He has also claimed harassment in the Santa Cruz police lockup. She spoke about the treatment of not letting her use the washroom, no water and no place was provided to her to sit. All this is mentioned by Navneet Rana, and hence he argued to cancel her bail, and they should follow what has been mentioned in the bail order is what the government argued via its special public prosecutor. And instead, a notice has been issued. So many thanks, Ankit, for joining us there. So big relief for the Ranas. As of now, at least for now, no non-bailable warrant, no re-arrest either, at least for now. But a notice has been issued to them. They have the right to reply. And moving on now to other news stories. Elon Musk, who is known to cause a stir with his cryptic tweets, triggered another wave of speculations by talking about his death in mysterious circumstances. Here's more on that story. Tesla CEO Elon Musk has set off a cat amongst the pigeons literally by the tweet that he made today. Now, in that tweet, he says that if I die under mysterious circumstances, it's been nice knowing you. Now, this tweet, of course, has created quite a flutter on the internet. It does come a week after he announced his decision to buy the microblogging site Twitter for about $44 billion. Now, shortly before this, of course, Mr. Musk shared a post that appears to be a communication saying that he's involved in supplying the fascist forces in Ukraine with military communication equipment. Now, and for this, of course, Elon, you will be held accountable like an adult, no matter how much you play the fool. Now, that's a previous post to which it appears that Elon Musk was replying to. Now, this post, of course, was in Russian, and thereafter what we've seen is this communication that came in from Elon Musk. The word Nazi also, he goes on to say, does not mean what he seems to think it does. Now, just to tell our viewers a bit about the background of this
The communication also claimed that the equipment was delivered in Ukraine by the Pentagon headquarters of the US Department of Defense. Now, the two posts, of course, have sparked speculation on whether the Tesla CEO is facing threats from Russia for helping Ukraine amid the war. In February, remember when this battle that the Russians are fighting in Ukraine set off, it was Mr. Musk's company, that SpaceX, Starlink satellite broadband services, which were activated in Ukraine, of course, after a minister from the war-hit country had reached out to Elon Musk. Now, the tweet on the death under mysterious circumstances, of course, has met with varied responses, ranging from jokes to caution to solidarity. And now here's a quick look at stories trending across the world as the Ukrainian army continues to advance around the Kharkiv region, liberating new villages. The bodies of more and more Russian soldiers emerge. The bodies of more than 40 Russian soldiers who were found after battles around Kharkiv are being stored in a refrigerated train wagon until they will be requested by Russia, it was said. However, according to Ukrainian officials, until now, Russia has not made any efforts to retrieve the bodies of its soldiers. Russians celebrated Victory Day in Vladivostok with a military parade to mark the 77th anniversary of the Soviet victory over Nazi Germany. Military personnel carrying the Russian flag and the banner of victory led the parade through the center of the eastern city. Signs of support for the military have grown across the country since February 24th's invasion in Ukraine, with the letter Z appearing on billboards and signs in streets and subways and on television and social media. And coming up after this very short break, a mega D-gang crackdown by the NIA. This time, nearly 20 locations raided by the National Investigation Agency. Top Dawood aide Salim Fruit detained in Mumbai. It was a dark night with a bright idea. Guys, we need something big. Let's do what we always do. Something really bold. Let's take on the D segment. Let's create the big daddy of all SUVs, because nothing else will do. The big daddy of SUVs from Mahindra, coming soon. We're reporting outside the Kashi Vishwanath temple over here and the mosque that is all mired into controversy. We'll take you straight to the visuals over here in Varanasi. In the visuals, we are bringing you the live pictures of this particular newly built Kashi Vishwanath corridor, and right next to it is the mosque, which is under the scanner of all the controversies. This is the particular mosque where against which you can see there's a brown wall over there. My video journalist is zooming in and showing you the brown wall. The petitioner are questioning that they should be allowed to go inside and worship at the temple of Gauri Shringar. That particular brown wall that is just one of the walls of these mosques is being contended to be the Gauri Shringar temple by the devotees over here. And now in their petition they request that they should be allowed to go freely inside and should be allowed to worship and offer prayers over here. However, the mosque committee is against this entire drill, following which, hearing the petitions, the court had asked for a videographic survey, but the entire endeavor fell flat, as when the court monitored committee of all the officials came here for the videographic survey, they were not allowed to go inside. There was a massive protest here at gate number 4 of Kashi Vishwanath temple over here. Hundreds of people from the Muslim community came forward and they expressed their displeasure, moving the Varanasi district court as well over here. They questioned that a videographic survey is a brazen endeavor and should not be done.
उन्होंने खुली चेतावनी दी है खासदार नवनीत राणा ने कि उद्धव ठाकरे ने जनता के बीच आगे खड़ा रहना चाहिए, उनको उनके सामने खड़े रहेंगे और उनको जवाब देंगे। मेरे पे अन्याय हुआ, लॉकअप से लेकर जेल के प्रशासन से लेकर सभी जगहों पे, उसका मैं आप लोगों को डिटेल में बात करूंगी। श्री राम का नाम लेने में और हनुमान भगवान का नाम लेने में अगर कोई 14 दिन डालते हैं तो मेरी All right, big developments coming in. Navneet and Ravi Rana have now landed. They have now landed in New Delhi anytime. In fact, they have just landed. Viewers, just after the Mumbai court had issued a notice to Rana couple for now, no immediate rearrest, to be given right to reply amid Hanuman Chalisa face-off. But now they have landed in Delhi. Remember that they are due to meet the Home Minister and also the Lok Sabha Speaker Om Birla later today. I want to go straight across to Ankit. Ankit, after getting a sort of a relief from the Mumbai court, Ranas are coming to Delhi now. They have landed in Delhi. What is the plan for them next? So two things have happened simultaneously within a couple of minutes from each other. Over in Mumbai, the court has issued notice to the Rana couple asking why it should not issue a non-bailable warrant against them for violating the terms of the bail that it had given. Remember, on the 4th of May, the Rana couple had been issued bail with a couple of conditions in mind. They had to pay 50,000 surety each for their bail. They couldn't speak about the media speak to the media about any matter that was under investigation, and they could not repeat the offence. And after that, today morning also, they spoke to the media. Whether or not it was directly related is a matter that the court will deal with, but it was an argument that was made out by the Maharashtra government, by its special public prosecutor Pradeep Gharat. Now the court heard out all the arguments. The government was asking for a non-bailable warrant to be issued against them immediately because it said that their bail was void, but the court has instead issued notice to the Rana couple. Now we are awaiting right now at the Sessions Court to find out what are the specific terms of this notice. Meanwhile, the Rana couple who started their day in Mumbai have now made it to Delhi, and so they are now out of this ambit of Mumbai. At least they have been here for the last 3 weeks. Remember, we started right here at their house in Khar. At that time, the government was telling them, why are you here? Why aren't you in Amravati? Why are you causing a law and order disturbance? After that, they were taken into custody initially at the Khar police station. Then they were remanded to judicial custody over a number of sections that were imposed against them, including creating enmity between religions and also sedition. They managed to get bail there after 11 days, and after that Navneet Rana was taken to hospital. She spent a number of days in Lilavati hospital. She was just released, discharged a couple of days back, and after she came out, she again reiterated that the Hanuman Chalisa is foremost for her and she would be in jail for 14 years if needed, if it meant upholding that. And she challenged, in fact, the Chief Minister to contest elections directly against her. After that, because of all the different matters that are related to this, including the fact that she is an elected MP, an independent one from Amravati, the Lok Sabha Speaker had already... All right, Ankit, hold on for us. Ankit, hold on, because another breaking coming in. The Gyan Vyapi hearing has now begun. The Gyan Vyapi mosque hearing had begun. Remember, the Varanasi court has resumed the hearing. Petitions filed by the Muslim side in the Gyan Vapi Mosque complex dispute seeking the appointment of a different advocate commissioner. So live right now, we're telling you viewers that after the updates we got to you in the Rana case, the other big story we're tracking on Republic, the Gyan Vapi Mosque hearing has begun. And I want to go straight across to Madhurima, who has been tracking this story closely. Madhurima, finally, this hearing has begun. It's over the dispute seeking the appointment of a different advocate commissioner. Now, what are the pleas and the arguments which are expected to be put forward? Well,
it's a very crucial hearing that has just begun, and the main argument that will be contested here at the Varanasi court would be as to question the change in the court the commissioner appointed by the court to conduct the videographic survey. Right now we are remoting from the court where the hearing is underway, and today the side of the right now it has आज ऑर्डर 1 रूल 10 में चंद्रशेखर सेठ एडवोकेट द्वारा यह एप्लीकेशन मूव की गई कि हम भी बनारस के नागरिक हैं, वाराणसी के नागरिक हैं और बाबा विश्वनाथ सिंगार गौरी के हम पूजक हैं और धार्मिक आस्था रखते हैं। और यह दावा किसी का व्यक्तिगत मुकदमा नहीं है, यह दावा वाराणसी नहीं पूरे विश्व के हिंदू जनमानस से के धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ मुकदमा है। इसलिए इसमें अधिवक्ता महोदय ने पक्षकार बनने के लिए अपनी प्रार्थना पत्र दिया और उसी प्रार्थना पत्र में मैंने चंद्रशेखर सेठ एडवोकेट की तरफ से पक्ष रखा। हमारे साथ विजय कुमार सिंह और ब्रजेश मिश्रा एडवोकेट और ये चंद्रशेखर सेठ। आपने क्या पक्ष रखा? क्या पक्ष रखा? ये सारे लोग थे। हम लोगों ने पक्ष यह रखा कि हम जो है कि उसमें जो है कि जो ये हिंदू धर्म से ये मामला जुड़ा हुआ है और हम लोग हिंदू धर्म में गहरी आस्था रखते हैं और इसलिए हम वहीं के हम वही निवासी, हम वहीं के निवासी भी हैं, इसलिए हमको जो है कि पक्षकार बना लिया जाए। और यदि न्यायालय के द्वारा हमको पक्षकार बनाया जाता है तो हमारे पास ऐसे तथ्य हैं, न्यायालय के सामने उसको प्रोड्यूस करूंगा और माननीय न्यायालय को एट द टाइम ऑफ फाइनल हियरिंग ऑफ द केस न्यायालय को न्याय करने में मदद मिलेगी। एक्चुअल पोजीशन ये है कि यह पड़ी है कि नहीं, जो और लोग भी हितग्राही हैं वो अपना पक्ष रखें और इसको गलत ढंग से मारेगा तो क्या All right, we are hearing the lawyers right now speak there. Remember that right now the Varanasi court has begun the hearing. The petitions which have been filed by the Muslim side in the Gyan Vyapi Mosque complex dispute seeking the appointment of a different advocate commissioner and hectic and fast developments happening there from Varanasi. जनहित का सवाल है तो यह ऑर्डर 1 रूल 10 में हमको सुन के किया जाए ताकि हम भी इसमें साक्ष्य दें और इसमें कोई भी चाहे तो ये मुकदमा वापस लेके हट न पावे और इस मुकदमे का गुण दोष के आधार पर सम्यक निर्णय हो और वास्तविक निर्णय हो। इसके लिए हमने पक्षकार बनने के लिए चंद्रशेखर एडवोकेट सेठ एडवोकेट की तरफ से प्रार्थना पत्र मूव किया है जिस पर अदालत ने सुनवाई किया। All right, more breaking developments coming in. CBI has registered a case against Sushanto Malik, the staff of Babul Supriyo, then MOS Heavy Industries and Public Enterprises, along with top executives of EPIL in an alleged corruption case. The agency alleges that the accused favored Ashutosh Bandhopadhyay with contracts in 2016 to 2017 in lieu of 40 lakhs bribe, out of which 5 lakhs were transferred to the bank account of Sushanto Malik in December 2016. There's a big breaking coming in right now, and Shavan will be joining in very shortly to get us all the details on this big development that there's more trouble for Babul Supriyo because the CBI has registered a case against Sushanto Malik. Now, Sushanto Malik, the person in question, is the staff of Babul Supriyo, and this is, in fact, remember that Babul Supriyo was then MOS Heavy Industries and Public Enterprises along with top executives of EPIL in an alleged corruption case. Now, this agency is alleging that the accused meaning Sushanto Malik, had favored Ashutosh Bandhopadhyay with contracts
back in the year 2016 to 2017 in lieu of 40 lakhs of bribe, out of which 5 lakhs were transferred to the bank account of Sushanto Malik in December 2016. So there, CBI keeping an eye on Sushanto Malik, registering a case against Sushanto Malik, who's a staff of Babul Supriyo, who was a then MOS Heavy Industries and Public Enterprises, along with top executives of EPIL. Now, this is a corruption case which has emerged. CBI registering a case. Shaban, my colleague, will be joining us very shortly to get you all the details of this big developing story. For now, the CBI has booked Babul staff in a corruption case. 40 lakhs bribe is in question in this case. Now, the agency is alleging that the accused favored Ashutosh Bandyopadhyay with contracts. All right, so we'll take a short break right now. Much more coming up on the other side of the short break, including what is happening in Shaheen Bagh. Also, Navneet and Ravi Rana to meet Home Minister Amit Shah and Lok Sabha Speaker Om Birla in Delhi shortly. Stay tuned to Republic TV. It was a dark night with a bright idea. Guys, we need something big. Let's do what we always do. Something really bold. Let's take on the D segment. Let's create the big daddy of all SUVs. Because nothing else will do. The big daddy of SUVs from Mahindra, coming soon. उन्होंने खुली चेतावनी दी है खासदार नवनीत राणा ने कि उद्धव ठाकरे ने जनता के बीच आगे खड़ा रहना चाहिए, उनको उनके सामने खड़े रहेंगे और उनको जवाब देंगे। तो मेरे पे अन्याय हुआ, लॉकअप से लेकर जेल के प्रशासन से लेकर सभी जगहों पे उसका मैं आप लोगों को डिटेल में बात करूंगी। श्री राम का नाम लेने में और हनुमान भगवान का नाम लेने में अगर कोई 14 दिन डालते हैं तो मेरी 14 दिन में कोई आवाज नहीं दबा सकता। अगर उन्होंने 14 साल भी डाला तो भी मैं भगवान का नाम लेना बंद नहीं करूंगी। What is being claimed by the Hindu petitioners is that this particular structure of the mosque is entirely a temple. However, the Muslim petitioners have made it very clear that it's a 17th century building, which is why a recent videographic survey hurt their sentiment. जो लोग वहाँ के सर्वे को रोक रहे हैं तो प्रश्न उठेगा क्या छुपाना चाहते हैं, किस चीज के से घबरा रहे हैं कि ये बाहर आ जाए। भारत में कानून का राज है, अगर आप गलत तरीका अपनाते हैं तो उसके काट भी है। जिस हिसाब से उन्होंने एक पहले 6 बजे के आसपास उन्होंने ये वारंट निकाला और दूसरा वारंट रात को करीब 10 बजे के करीब निकाला, तो इतना तो था ही। हम लोग इंतजार कर रहे थे, हमारे साथ हमारे ये बच्चे भी साथ में थे, कुछ मीडिया कर्मी भी साथ में थे और वो भी इस इंतजार में थे कि पुलिस कब आती है। लगभग 11 साढ़े 11 बजे न्यूज आई कि बग्गा ने उनके खिलाफ याचिका दायर की है। तब हम लोग निश्चिंत हो गए कि अब पुलिस कम से कम जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक नहीं आएगी। हम लोग रिलैक्स हो गए। 12 बजे के आसपास फैसला आ गया कि बग्गा को 2 दिन की राहत मिली है। अब उस राहत का फायदा किस हिसाब से उठाना है, क्या क्या करना है, ये बग्गा जाने, पार्टी जाने और उनके वकील जाने। जिन्होंने कल फिर ये दर्शा दिया कि इस देश के अंदर कानून का राज चलता है। अगर अरविंद केजरीवाल सोचते हैं कि सत्ता के बल पे, पुलिस के बल पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा सकते हैं, झुका सकते हैं, तो फिर से मैं उनको कहता, एक नहीं 100 FIR कीजिए। अरविंद केजरीवाल जी, मैं ये सवाल पूछूंगा कि आपने गुरु ग्रंथ साहब जी की Breaking news coming in.
Hearing begins in Supreme Court on the Shaheen Bagh case. Bench takes up CPIM petition against the demolition in Shaheen Bagh. Supreme Court expresses displeasure of politicization of demolition. SC says cannot hear petition at the behest of political parties. So a big setback for Shaheen Bagh petitioners. The court pulls up political parties for submitting a petition. Earlier dramatic scenes unfolded in Delhi's Shaheen Bagh as bulldozers carried out the demolition of illegal structures. Ananya, our correspondent, joining us for the latest there. Ananya, big setback for Shaheen Bagh petitioners. What next? Well, sir, the Supreme Court has come down heavily on CPIM, the political party, who had filed a petition challenging, in fact, the demolition that has been taking place. Remember that CPIM had filed a petition through Brinda Karat, and now the Supreme Court is coming down heavily on them, saying that a politicization of the matter is going on, and only an order would be passed. In fact, that too, the Supreme Court would only say that approach the High Court only if the people who are actually aggrieved by this demolition drive would approach the court and not any political party. In fact, when the petitioners, the CPIM, told the court that the High Court would refuse to hear this matter, the Supreme Court came down heavily, saying that it is disrespecting the High Court and saying that if such a statement is being made, whether such an order has been passed or not. So now the petitioners are facing the wrath of the Supreme Court over a misrepresentation of facts. In fact, politicization of the matter is also being looked into, and the Supreme Court bench headed by Justice L. Nageshwar Rao is coming down really heavy on these petitioners. In fact, the hearing is currently underway, wherein Justice Rao has said that we have not given license to anybody to come here to say my house cannot be demolished, even if it is unauthorized. You cannot take shelter of that order. We cannot interfere. That too at the instance of political parties. So this is the latest coming in from the judges. The court is completely not inclined to hear this matter. However, since the matter is still underway, we would not like to comment on which way the matter is headed. But clearly, the Supreme Court is coming down very, very heavily on the political parties with regards to approaching the Supreme Court in connection with this demolition drive. In fact, the Supreme Court is also of the view that if people would be encroaching the roads, then a demolition drive would be a necessary one. In fact, the bench clearly said that if people would be encroaching, then demolition is the only option, and the encroachment has to be removed. The Solicitor General Tushar Mehta, who's appearing for the central government, has clearly told the court that this demolition drive has been going on for a long way, and in fact, it is the order of the Delhi High Court in which it is asked for removal of encroachments, that such drives are being carried out in the national capital. Various RWAs had approached the High Court, in fact, remember, earlier this year in connection with the encroachments that are being going on various occasions, various areas in the national capital, following which these encroachments... Right, Ananya, we'll be coming back to you, but now we cut across live to the scene where it's all panning out. Sumi, our correspondent, joins us for the latest from Shaheen Bagh itself. Sumi, disappointing news for Shaheen Bagh petitioners. The court coming down heavily on politicization of the entire issue. But we believe the demolition drive to continue. Yes, absolutely. The SDMC for now has put an end to the demolition drive, and right now we are here at Shaheen Bagh, where right behind me we can see that there are a lot of citizens who have come out of their residences to protest against the anti-encroachment drive that was pushed forward by the SDMC, and this drive was going on quite heavily before the citizens intervened, along with a few politicians who also tried to sabotage the entire drive. Remember, the SDMC had also given a notice to all the residents, and in fact they would carry out this anti-encroachment drive by the SDMC. But for now, the citizens have come on the roads, and we are showing you the live visuals of all the citizens who have a different opinion on the entire drive pushed by the SDMC. And we had also seen how Congress also came out and the Aam Aadmi Party leaders also protested here in support of the citizens and also objected to the entire drive
that was happening. And this morning, heavy drama unveiled here in Shaheen Bagh. We'll also try to connect to a few citizens here who will be willing to speak to us. Sir, going back once again, Sumi, will be coming back to you, but going back once again to Ananya for what the court said. First of all, it came down heavily on political parties for putting up a petition in the name of citizens. What else did the court say? And has there been any reaction on the part of the parties involved? Well, yes, I'll tell you the latest that the court is coming down very heavily on CPIM, clearly saying that it is too much to come to the Supreme Court and say that the High Court won't hear this matter. This is a sheer disrespect of the Honorable Delhi High Court. In fact, the Supreme Court also egged over the politicization of the matter. And in fact, the court is of the view as of now that no orders shall be passed and the petitioners should go and approach the High Court. In fact, Justice Rao is clearly saying it appears that something in what the solicitor is saying, it's saying that HC's past order is correct. That is why they are not going to the High Court. The HC responds, and it is a very, very heated argument that is taking place at the Supreme Court with regards to the demolition row that is happening across the national capital. The Supreme Court is coming down heavily on the petitioners, saying that this is a sheer politicization of the matter, and the political parties are coming in place of the actual people who are suffering the demolition drive. Back to the studios. Well, more breaking news on the Shaheen Bagh story here on Republic TV. Even as the bulldozers run, the big loss of face left has withdrawn its petition after the Supreme Court came down heavily on the CPIM for putting forward a petition on behalf of citizens facing the anti-encroachment drive in Shaheen Bagh. The court has wrapped the CPIM and said that it cannot accept the kind of disrespect that political parties are showing to the High Court. And our correspondent Ananya on this case, on this issue, covering for us on the ground. Earlier, big dramatic turn of events in Shaheen Bagh, even as protests erupted just as the anti-encroachment drive was to begin. Petitioners, that is the CPIM, had approached the Supreme Court. The court in its reply, very stern, very strong, and saying that, it is a big disrespect to the High Court. And after the court's wrap, the CPIM has withdrawn its petition. Going back once again to our correspondent Ananya. Ananya, big loss of face there for the CPIM, even as it sought perhaps, somehow to politicize the matter. Well, yes, clearly it wanted to politicize the matter, and that is what the Supreme Court has said, because remember that I remind you that the High Court had recently passed orders wherein encroachment was to be removed. The High Court was very, very irked over the encroachment being there in the national capital, following which the High Court had passed certain orders, and now the Solicitor General is clearly saying before the court that it is because of the High Court's order that these people did not approach the High Court and came directly to the Supreme Court, because they knew that the High Court would not entertain the petition because it has already passed orders with regards to removal of encroachments. In fact, he was also of the view and the Supreme Court also noted that there is some truth in what the LC is saying. And a lot has been said by, in fact, the petitioners, but still, the Supreme Court is very, very clear that this is a sheer politicization of the matter going on. It is surely that the political parties are coming out in place of the actual people who are suffering the loss of this demolition drive. And now, somewhere or the other, it's a very, very big setback to these political parties who try to make up this matter, who try to put this matter to the Supreme Court, saying that something very, very illegal. खिलाफ अभी नॉन अवेलेबल वारंट इशू करके हमें ऑर्डर दीजिए कि उनको पकड़ के न्यायालय के सामने खड़े करें, या तो कोर्ट ने उनको नोटिस आप दे दीजिए कि कोर्ट के सामने आ जाओ, कोर्ट उनको कस्टडी में लेके कोर्ट उनका जो कुछ करना है वो न्याय के मुताबिक करे। तो कोर्ट ने क्या उस पर डिसीजन दिया सर? कोर्ट ने अभी हमारे इस कहने पे कोर्ट ने उन पे नोटिस अभी इशू की है
और अभी डेट उसमें लेनी है कि कब रखना है वो। सर, आपने उनके कुछ स्टेटमेंट्स का भी जिक्र किया जो उन्होंने कल और आज मीडिया से बात करते हुए दिए। क्या स्टेटमेंट्स थे जो आपको लगता है कि वो आपत्तिजनक थे और बेल कंडीशंस का वायलेशन? जी देखिए, ये जो स्टेटमेंट्स है ये आपत्तिजनक थे, इसके लिए हमने अर्जी किया, क्योंकि उनको जो है टोटल स्टेटमेंट्स करने से मना नहीं किया था, लेकिन ये जो केस उन पे है हनुमान चालीसा की, ये केस से संबंधित कुछ बात करने के लिए कोर्ट ने उनको मना किया था कि कोई भी बात जो इस केस से संबंधित है वो ना करे। अगर उनका कहना है उन पे कोई अन्याय कर रहा है या किया है, वो कॉम्पिटेंट कोर्ट में जाए, कॉम्पिटेंट फोरम के पास जाए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाए और उनको जो इनजस्टिस हुआ उसके लिए जस्टिस की बात करे। लेकिन प्रसार माध्यम के सामने कोई भी बात करने से, भले उन पे अन्याय भी हो गया हो, प्रसार माध्यम के सामने बात करने से उनको मना किया है। सर मराठीत आज कोर्टात काय झालं नेमकं? तुमचा युक्तिवाद काय झाला आणि कोर्टाने काही निर्देश दिले आहेत का? आज आम्ही माननीय न्यायालयाच्या निदर्शनास, न्यायालयाच्या ऑर्डरमधली जी काही त्यांची जी वाक्य होती तीच दाखवली। माननीय न्यायालयाने ऑर्डर करताना आरोपींना काही अटी आणि शर्ती घातलेल्या आणि त्यात असं म्हटलेलं की त्यांच्यावर ही जी केस आहे त्याच्याशी संबंधित कोणत्याही विषयावर त्यांनी न्यायालयाचं आपल्या प्रसारमाध्यमांसमोर विधान करायचं नाही आणि ही जी त्यांना अट आणि शर्त घातलेली होती याचा भंग करून ते जे काय बोलले ते सगळं जी त्यांच्यावर केस आहे त्याच्याशी संबंधित, त्यांना त्यांच्यावर अन्याय कसा केला, त्यांना चुकीची ट्रीटमेंट कशी दिली, जेलमध्ये त्यांना काय खायला प्यायला दिलं नाही, पाणी दिलं, हे जे सगळं ते बोलले किंवा त्यांच्यावर हा अन्याय झाला आणि त्याचा ते बदला घेतील, ते जाऊन पंतप्रधानांना आणि शहांना भेटतील आणि माननीय उद्धवजी ठाकरे, अनिल परबजी आणि संजय राऊतजी यांची तक्रार करून त्यांना धडा शिकवतील, हे जे ते काय सगळे बोललेले आहे। Well, that was Pradeep Gharat, advocate of a lawyer for the Ranas in their case against the government, and there's much relief there. And it's time now for a short break. Coming up on the other side, it's a mega crackdown on the Dawood network. Top Dawood aide Salim Fruit detained in Mumbai. It was a dark night with a bright idea. Guys, we need something big. Let's do what we always do. Something really bold. Let's take on the D segment. Let's create the big daddy of all SUVs. Because nothing else will do. The big daddy of SUVs from Mahindra, coming soon. Amity has been ranked among the top universities globally for producing the most employable graduates by the Times Higher Education UK. Yet another testimony to Amity's excellent placement record. What is being claimed by the Hindu petitioners is that this particular structure of the mosque is entirely a temple. However, the Muslim petitioners have made it very clear that it's a 17th century building, which is why a recent videographic survey hurt their sentiment. जो लोग वहाँ के सर्वे को रोक रहे हैं तो प्रश्न उठेगा। सब अपने लोग हैं, आ जाइए महिला को आने दो ना। सब अपने लोग हैं, बोलिए। सी मेरा विजिट का पर्पस मेरा विजिट का पर्पस बहुत क्लियर है। सभी शांति से करेंगे, हम सभी करने वाले हैं। आप सब सेट हो जाइए फिर मुझे बताइए। और 14 दिवस जेल में होती ना मैम। आपने जो पूछा मुझे कि मेरा पर्पस क्या है दिल्ली आने का, दिल्ली मेरा अधिकार एक घर है। मेरा लोकसभा का जो मैं अधिकार लेके आती हूँ वो दिल्ली ही लेके आती हूँ, और सब अधिकारों का इस्तेमाल और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने का घर मेरा दिल्ली है, जहाँ पर पार्लियामेंट जिसे कहते हैं। तो मुझे लगता है महाराष्ट्र में
जो भी दुर्घटना हमारे साथ हुई, दुर्व्यवहार हमारे साथ हुआ, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एज ए MLA हमारे साथ जो भी हुआ उसके अगेंस्ट में जो मैंने मुंबई कार्रवाई करने के लिए दी है उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तो आज मैं दिल्ली में उसी के अगेंस्ट में आई हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं सभी जितने भी बड़े लीडर्स और जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो वुमेन्स को रिस्पेक्ट करते हैं सेंटर के द्वारा, उनके पास आके उनको मिलके मेरी पीड़ा मेरे साथ में जो हुआ उनको बताऊंगी मैं। मुझे लगता है कि जो भी कोर्ट ने आदेश मुझे दिए थे, जो मेरे बेल एप्लीकेशन ऑर्डर में थी कि पर्टिकुलर ये सब्जेक्ट पे मैं बात नहीं करूंगी, पर एज ए लोक प्रतिनिधि लोकतंत्र में संविधान ने मुझे जो अधिकार दिया है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को छोड़कर मैं बाकी सब्जेक्ट पे बात कर सकती हूँ। मैंने उस सब्जेक्ट को हाथ ना लगाते हुए जो मेरे साथ लॉकअप में हुआ, जिस तरीके से दुर्व्यवहार हुआ, जिस तरीके से जेल में मेरे साथ अत्याचार हुआ, मेरे हेल्थ इशू डॉक्टर लिख के देने के बाद भी मुझे जेल से चेकअप के लिए नहीं लेके जाया गया, इस विषय को लेकर बात करना ये अधिकार मुझे संविधान ने दिया है। पर कोर्ट के आदेश का पालन मैंने कल भी किया, आज भी करती हूँ और आगे भी करूंगी, उसमें कोई भी डाउट नहीं। आज मैंने ओम बिरला जी का टाइम लिया है और 5:30 बजे मैं ओम बिरला जी को मिलने वाली हूँ। एज ए लोकसभा मेंबर मेरे चेयरपर्सन को मिलके मेरी जो पीड़ा, मेरे साथ जो दुर्व्यवहार या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी के द्वारा मेरे ऊपर अत्याचार किए गए, वो एज ए चेयरपर्सन उन्हें बताने का काम मेरा कर्तव्य बनता है और उनको आके वो बताऊंगी। और ये भी एक है कि CP जो अमरावती महाराष्ट्र के हैं, मुंबई के जो CP हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस संजय पांडे जी, उनको एक चीज बताना चाहूंगी, जो वो गुलामी उद्धव ठाकरे जी की कर रहे हैं और उनके प्रेशर में और उनके बोलने के अनुसार वो हर किसी पे कार्रवाई कर रहे हैं, किसी को जेल भेज रहे हैं, किसी पे नॉन बेलेबल ऑफेंस दाखिल कर रहे हैं। वो 1 महीने के बाद रिटायर्ड होने वाले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके पाप धुल जाएंगे, उसके बाद भी उनके पाप बाहर निकलेंगे। आपको जो लालच उद्धव ठाकरे जी ने दी है कि आपको राज्यसभा मेंबर देंगे या आपको कोई MLC देंगे, ये सब चीजें बाजू में रखकर मुझे लगता है उसके बाद भी आपको उत्तर देना पड़ेगा। और जब जिसने मेरे ऊपर और विधायक रवि जी के ऊपर जिन्होंने गलत तरीके से ऑफेंस दाखिल किया है, जब तक मुझे सब एक जनता से पूछना है, आप सब यहाँ पर हैं, आप सबको पूछना चाहूंगी मेरी गलती क्या थी, मैंने गलती क्या की? बेल की शर्तों का आपने उल्लंघन किया क्योंकि शो कॉज नोटिस हुआ। मैंने कोई भी उल्लंघन, कोर्ट के आदेशों का भंग नहीं किया, मैंने उस पर्टिकुलर विषय को हाथ नहीं लगाया। मैंने जो बोला, जो मेरे साथ पीड़ा हुई, मेरे हेल्थ इशू को लेकर मुझे जिस तरीके से पीड़ा दी गई, लॉकअप से लेकर जेल तक, उसे बोलने का अधिकार मुझे संविधान ने दिया और उसका मैंने अधिकार बजाया। 100% मैं सभी का समय लेऊंगी और लेकर वहां तक जाऊंगी। दादा, मी अमित शहाजींना जे महिलांना रिस्पेक्ट करतात, देशाचे गृहमंत्री आहे ओम बिर्ला साहेब आणि मोठे अजून जे लीडर आहे ज्यांचे हात पूर्ण राईट्स आहे, जे महिलांना रिस्पेक्ट करतात, तिथपर्यंत मी त्यांच्या दार ठोकण्यासाठी जाणार आणि त्यांना मी न्याय मांगण्याची पूर्ण गुहार लावणार है। मुझे लगता है PM साहब को भी, हमारे मुख्यमंत्री जैसे वो फ्री नहीं है PM साहब। हमारे मुख्यमंत्री दो साल कार्यालय नहीं जाते मुख्यमंत्री के। PM साहब तो हर मिनट ये देश के लिए देते हैं। तो हम भी देश के मिनट में 1 मिनट जरूर मांगूंगी PM साहब से कि हमारी पीड़ा उन्होंने समझनी चाहिए, सुननी चाहिए। पर मुझे ये जरूर विश्वास है कि अभी तक उन्होंने इस चीज की पूरी जानकारी ली होगी, पूरी माहिती, इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंची है। पर मुझे ये जरूर पता है कि PM साहब का 1-1 मिनट बहुत महत्व रखता है ये देश के लिए, और वो देश के लिए 1-1 मिनट के लिए काम करते हैं। उद्धव ठाकरे जी के जैसा 2 साल ऑफिस में नहीं जाते। 100% पुलिस, जो दिल्ली पुलिस है, जो मेरे घर के पार्लियामेंट के एरिया में जो पुलिस स्टेशन आता है, वहाँ जाके जो खुलेआम मुझे गुंडे जैसी एक राज्यसभा मेंबर ने धमकी दी, 20 फुट नीचे गाड़ कर और आपकी पूरी सामग्री
क्रियाक्रम की हमने ऑलरेडी मशान में पहुंचा दी है। इस तरीका का भाषा जो जिसने किया है संजय राउत, जिनको हमारे महाराष्ट्र में पोपट बुलाते हैं, ऐसे पोपट के अगेंस्ट में मैं एफआईआर करने के लिए पुलिस स्टेशन जाऊंगी और मैं खुद जाकर एफआईआर दूंगी। मुझे लगता है कि कोर्ट ने जो आदेश दिए मैं उसके अगेंस्ट भी जाऊंगी। मैं तो मेरी पूरी जनता को ये पूछ रही हूँ, एक भारतीय नागरिक होने के कारण और एक महिला होने के नाते मैं ये पूछना चाहूंगी, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया जो मेरे ऊपर देशद्रोह लगा है? मुझे ये सभी को पूछना है कि देशद्रोह किस बात का? अगर मेरी हेल्थ खराब है, मेरी हेल्थ इशू है, तो उस पे मैं बोलूंगी कि मेरी हेल्थ इशू है, डॉक्टर ने लिख के दिया मुझे क्या आप जाइए हॉस्पिटल चेकअप कराइए, मुझे भेजा नहीं गया। और मुझे देशद्रोह के अंदर जिंदगी भर जिस ईमानदारी से मैंने काम किया, आज मेरे ऊपर देशद्रोह दाखिल होता है, तो महाराष्ट्र में कोई भी ऐसा व्यक्ति है न्याय के लिए नहीं लड़ेगा, न्याय के लिए बाहर नहीं आएगा। क्या कहना चाहती हैं उद्धव ठाकरे के लिए? आज आप दिल्ली में मौजूद हैं, यहाँ से आप क्या कहना चाहती हैं? मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, ये जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इन्होंने ज्ञान की बातें और सिद्धांत की बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जो किसी और के भरोसे चुन के आए, मोदी जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर 14 और 19 विधानसभा और लोकसभा जो अपने पार्टी के लोगों को चुन के लाए हैं, मोदी जी के भरोसे, उद्धव ठाकरे जी के भरोसे चुन के नहीं आए। खून का पसीना करना पड़ता है जब लोग लोकसभा और विधानसभा चुन के आते हैं। बैक स्टैंपिंग की है तो ये उद्धव ठाकरे जी ने की है। और भगवान के नाम लेने में अगर कोई मुझे जेल में डाल जाता है तो आखिरी सांस तक मैं भगवान का नाम लेना छोड़ूंगी नहीं। भगवान का नाम स्मरण करती थी, करूंगी और आगे भी करती रहूंगी, उसमें कोई नहीं रोक सकता। 100% मैं संजय राउत जी जो पोपट हैं उद्धव ठाकरे जी के, उसके अगेंस्ट में एफआईआर करूंगी। मुंबई में सभी डिपार्टमेंट के लोग अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं, पर केंद्र के एजेंसी पे भी गुहार लगाऊंगी कि उनके खिलाफ कार्रवाई करे और इंक्वायरी करे। मुझे लगता है जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा तौर से मुझे आह्वान दिया, मुझे धमकी दी, उनके विरोध में मैं और शिवसेना ने हमारे घर पे हल्ला किया और हमारे अमरावती के घर पे हल्ला किया, मुंबई के घर पे हल्ला किया, गुंडेशाही तो उन्होंने की, हम तो घर से बाहर भी नहीं निकले, तो भी हम देशद्रोह। जो गुंडे हमें मारने आए उन पे कोई कार्रवाई नहीं, जो खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे बोलते हैं 20 फुट नीचे गाड़ देंगे, महिला को नीचे गाड़ देंगे। मैं तो आ गई हूँ दिल्ली, मैं तो मुंबई भी थी, गाड़ के तो देखते। हमारी देश की जनता सोई नहीं है, देश की जनता जागी है। पीछे लो, पीछे नहीं पीछे 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 मैडम प्लीज पीछे पीछे घर पे हो जाएगा। पीछे 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 ये नहीं आएगा। अरे फंस गई है। So breaking news, the Ranas arrive in New Delhi. Navneet Rana, they're making strong statements about her stand, continuing to level allegations. पांच बड़ी बातें एयरपोर्ट में आने के बाद 5 बड़ी बातें हैं। मुंबईच्या घरी, अमरावतीच्या घरी ज्या पद्धतीनं खासदार आमदाराला 20 फूट गाळून टाकणार, जर संजय राऊत म्हणते जो राज्यसभाचा मेंबर आहे, अनिल परब ज्या पद्धतीनं धमक्या देतात, शिवसेनेचे हमले आमच्या घरापर्यंत येतात, गोटे मारतात, त्याच्यावर जर मुख्यमंत्री त्यांना सपोर्ट करताय, मुख्यमंत्र्याचं संरक्षण त्यांना आहे, तर केंद्रीय एजन्सीच्या माध्यमातून तपास झाला पाहिजे। आणि संजय पांडे जे मुंबईचे सीपी आहे, ते जरी उद्धव ठाकरेंना खुश करण्यासाठी चुकीचे कामं करत असतील, त्यांनी एक लक्षात ठेवलं पाहिजे की या ठिकाणी परमवीर सिंगनी सुद्धा गृहमंत्र्यांच्या सांगण्यावरून मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून चुकीचं काम केलं होतं। गृहमंत्री आता जेलमध्ये आहे, परमवीर सिंहवर इन्क्वायरी चालू आहे, वाजे जेलमध्ये आहे। जर संजय पांडे मुख्यमंत्र्यांच्या सांगण्यावरून जर चुकीचं काम करेल तर येणाऱ्या काळामध्ये मुख्यमंत्र्यांसोबत संजय पांडे सुद्धा जेलमध्ये दिसेल। हे लक्षात ठेवा, रिटायर झाले तरी ज्या केंद्रीय एजन्सीच्या माध्यमातून तपास करून केंद्रीय एजन्सीवर आमचा विश्वास आहे,
गृहमंत्र्याचे देशाचे गृहमंत्री यांच्यावर विश्वास आहे. There's no action by the Maharashtra government, and we have come to Delhi because we trust on the central government. संसद We know that the justice will be delivered to us. आणि त्याच्या माध्यमातून पूर्ण चौकशी ही सीबीआयच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या पूर्ण या देशद्रोह गुन्ह्याची Today we are going to meet Home Minister and Navneet Rana is going to request to Home Minister Amit Shah saying that all the cases should be given to the Central Bureau of Investigation. मुख्यमंत्र्याला कधी माफ करणार नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भाजपच्या पाठीमध्ये खंजीर मुख्यमंत्री झाले कारण की महाराष्ट्राची जनता चांगली जाणते. मुख्यमंत्र्यांनी भाजपच्या पाठीमध्ये खंजीर खुपसून मुख्यमंत्री बनले आणि महाराष्ट्राचं वाटोळं लावलं आहे. याच्या संदर्भात सुद्धा देशाची जनता महाराष्ट्राची जनता पूर्णपणे त्या सगळ्या गोष्टीवर लक्ष ठेवून आहे आणि यांना भोगावं लागेल. आता असं आहे देशद्रोहाचा गुन्हा या ठिकाणी लॉकअप मध्ये त्यांनी टाकलं, त्या ठिकाणी जेलमध्ये त्यांनी टाकलं, हॉस्पिटलमध्ये नवनीत राणाला नाही नेण्यासाठी जेलवर संजय राऊतनी 20 फूट मशालामध्ये गौऱ्या पाठवलेल्या आहेत. त्याच्या संदर्भात करतात, आमच्या घरावर दगडफेक करतात. हे सगळं जर नाटक आहे तर महाराष्ट्राची जनता हे सगळं पाहत आहे आणि नक्कीच जर हनुमान चालीसा वाचणाऱ्याला जर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल होत असेल तर हे कोर्टाने सुद्धा नोंदलेलं आहे की देशद्रोहाचा गुन्हा बनतच नाही तरी खोटा गुन्हा दाखल केला मुख्यमंत्र्यांच्या सांगण्यावरून संजय पांडेंनी. तर हे खोटं नाहीये, हे देश आणि महाराष्ट्राची जनता पाहत आहे आणि त्यांना धडा हनुमान भक्तांनी कोर्ट का हमेशा हम सम्मान करते. कोर्ट ने हमें न्याय दिया, बेल दी, उसका भी हमने सम्मान किया. आगे भी कोर्ट से हम न्याय मांगेंगे. हमने कोई भी कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं किया है, कोर्ट के उस सब्जेक्ट को लेके कोई टिप्पणी नहीं की है, पर लोकतंत्र के अंदर संविधान के अंदर जो हमें लोकशाही के माध्यम से अधिकार दिया है हमारा मत मांडने के लिए, वो हमने हमारा मत मांडा है. Navneet and Ravi Rana arrive in New Delhi, make strong statements alleging ill treatment in jail for Navneet and determination on the part of the couple to ensure that those responsible for their torture are brought to book. It was a dark night with a bright idea. Guys, we need something big. Let's do what we always do. Something really bold. Let's take on the D segment. Let's create the big daddy of all SUVs because nothing else will do. The big daddy of SUVs from Mahindra, coming soon. Amity has been ranked among the top universities globally for producing the most employable graduates by the Times Higher Education UK. Yet another testimony to Amity's excellent placement record. In a shocking incident, 2 persons were injured after 15 to 20 rounds of firing took place in West Delhi, Subhash Nagar, late at night on Saturday. In fact, these firing took place yesterday in the middle of the night, after which 2 people have been injured. They have been rushed to the spot, and after the incident took place, several police officials were deployed in the area, and there is a heavy deployment in the shooting site, and several barricades have also been placed, and the inquiry has also been placed by the officials. According to the preliminary information that we are getting from the officials, the investigation has been put in place as to who was behind the firing. CCTV cameras are being constantly checked of the entire location, and the injured people are undergoing treatment in the nearby hospital. The entire incident took place on Saturday night. This is Sumi Rajapun for Republic Media Network with video journalist Ranveer, New Delhi. Refugees have gathered here in Jammu as a part of Smaran Divas to remember those who have attained martyrdom in the Pakistan's brutality when the part of Jammu and Kashmir was illegally occupied by Pakistan, and now these people have come from various parts of the country to remember those who have given the supreme sacrifice. Sir, मैं आपसे जानना चाहूँगा,
जो हमारे वहाँ पर छूट गए विस्थापित लोग, हमारे जो वहाँ पर पूर्वज छूट गए हैं, उन लोगों को हम अपने साथ मिलाना चाहते हैं और हम उनके साथ मिलेंगे। POJK का जो हिस्सा उसको लेने के लिए आज संकल्प लेंगे और अपने जो पूर्वज थे उनको हम आज श्रद्धांजलि देंगे। श्रद्धांजलि दे रहे सर, आपसे जानना चाहूँगा, लगातार मांग उठ रही है POJK वापसी को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा कदम है, ये ऐसा होना चाहिए। हम उधर जाएं, वो इधर आएँ, एक दूसरे का मिलाप होना चाहिए। वापस आना चाहिए पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर। बिल्कुल बिल्कुल वापस आना चाहिए पूरे का। We're reporting outside the Kashi Vishwanath temple over here and the mosque that is all mired into controversy. We'll take you straight to the visuals over here in Varanasi. बुलडोजर के बाहर सामने बैठ गए हैं कांग्रेस के नेता, वहां पर कह रहे हैं कि हम आगे नहीं चलने देंगे बुलडोजर को, कोई नोटिस नहीं दिया गया है। और हम यहाँ शाहीन बाग को टारगेट करने की बात फिर से कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। किस तरह से सियासी रूप से ये बुलडोजर चलाया जा रहा है, सिर्फ शाहीन बाग पर चलाया जा रहा है, जामिया पर चलाया जा रहा है, ये बात कह रहे हैं। The pictures of clash is taking place between police and workers of political parties. Police resorting to lathi charge, removing these protesters. Uddhav government goes all out, wants Navneet and Ravi Rana back in jail. No immediate rearrest for the Ranas yet. Court issues notice. Ranas given right to reply. Navneet Rana to meet Lok Sabha Speaker Om Birla at 5:30 p.m. in the national capital. Setback for left in Supreme Court. Refuses to entertain CPIM plea. Left forced to withdraw petition. Protesters clash with police. Multiple protesters detained after attempt to block bulldozers. It's a mega crackdown on the Dawood network in Mumbai. Top Dawood aides detained by the NIA. And joining us now for more on this story is, on our top story, is our correspondent Ankit. Ankit, you were at the Sessions Court covering this entire story as it panned out. Well, Uddhav Thackeray's government clearly wanting a non-bailable warrant, wanting a rearrest notice, as public prosecutor Pradeep Gharat said a short while back, but no such good fortune as far as the Uddhav government is concerned against the Ranas. Undisputably, in fact, Ankit, if you can hear me. I can tell you two things are happening simultaneously. Just as, yes, I can. Just as Pradeep Gharat came out after the court here issued a notice to the Ranas, of which details are still to come out. He made it clear that if the court issues a non-bailable warrant, then the Mumbai police will go anywhere in the country to implement that warrant. At the same time, Navneet Rana and Ravi Rana landed in Delhi, and they also spoke to the media. And Navneet Rana has argued against the very arguments that Pradeep Gharat was making here, which is that she claims that she did not say anything that violates the court order. The Ranas claim that they have abided by the court order. They say that they were mistreated in the jail. They are allowed to talk about it. They claim that Sanjay Raut, a Rajya Sabha MP, is threatening them that they will go and file a FIR with the Delhi police over that complaint, and that talking about these things to the media does not quantify as a contempt of court, does not quantify as a violation of the court's orders in terms of what it was issued to them while the bail was being granted. Remember, the argument here is that they are not allowed to speak to the media about any matter that is currently being investigated. Mr. Gharat, just one question. The Ranas have just landed in Delhi and they say that they have not violated the order. Mr. Gharat, in English please. The Rana said they have not violated any order. They are allowed to speak about the mistreatment, they say.
They say they were mistreated in jail. They are allowed to speak about it. The Ranas That just is said the in Delhi. separate subject. They were not supposed to talk in that in respect of that subject before the media. If they had any complaint of ill treatment or anything, they should have approached the proper forum. Either it can be court or other competent authority. But it does not mean that they should talk before the media. Sir, one last. They say Sanjay Raut is threatening them. I'm coming. So that was Pradeep Gharat. He'll be back again speaking with us shortly. But that was the first reaction of the special public prosecutor of the Maharashtra government to the statements made by Navneet and Ravi Rana right now. He says that they should approach a competent authority, not speak about it to the media if they have any grievances that are not related to the case, that are not related to the orders that they must not violate. Pradeep Gharat says that they must approach a competent authority. We were the only channel to ask a question to Pradeep Gharat about the statements made by the Ranas just now in Delhi, which were after the notice was issued, and clearly there is more to be said. Pradeep Gharat will be joining us shortly once again, because viewers, the important point to note here is while the notice has been issued, we are yet to find out by when the Ranas must reply to the notice, and other issues, other specifics are yet to. बच्चों को पता है वो पीड़ा लेकर जब मैंने मुंबई में कंप्लेंट्स की, जिन्होंने गुंडागर्दी की, जिन्होंने मेरे घरों पे हमला किया, मुंबई में हमला किया, अमरावती में हमला किया, तो उनके अगेंस्ट जब मैंने कंप्लेंट दी तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। संजय राउत खुलेआम धमकी देते हैं कि तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हें गाड़ दिया जाएगा। उन पे कोई कार्रवाई महाराष्ट्र में नहीं हुई, मुंबई में नहीं हुई। डिपार्टमेंट अपना काम करता है, पर डिपार्टमेंट अंडर प्रेशर काम कर रहा है। तो मुझे लगता है अब मेरे पास एक ही घर रह गया है, वो मेरा सेंटर का घर। मेरी न्याय, जहाँ मैं लोगों के न्याय के लिए लड़ती हूँ, मैं खुद के अगर न्याय नहीं मांग पाऊंगी तो मैं लोगों को कहाँ से न्याय दे पाऊंगी। मैम, आप अभी यहाँ पर आई हैं, क्या संजय राउत के खिलाफ आप कंप्लेंट करेंगी? 101% कंप्लेंट करूंगी और मैं खुद जाऊंगी पुलिस स्टेशन कंप्लेंट देने के लिए। जो भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपनली मुझे गुंडागर्दी के हिसाब से जो टॉर्चर और जो थ्रेट दिया है, मारने की धमकी दी है, उसके अगेंस्ट मुझे जाना ही पड़ेगा। मैं लड़ूंगी, मैं रोऊंगी नहीं, मैं लड़ूंगी। और ये देश की महिला है, देश की महिला इतनी शांति से डरने वाली नहीं है और लड़ने वाली। और मैम, वो कह रहे कि कोर्ट के जो नियम का जो है उसका उल्लंघन किया है, जो आपको जमानत मिली है उसको लेकर उद्धव सरकार दोबारा जा सकती है कोर्ट में। मैं आपको एक चीज बताना जरूर चाहूंगी कि कोर्ट का हमने सम्मान हमेशा किया है एज ए भारतीय नागरिक, और एज ए रिस्पॉन्सिबल, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और कोर्ट का आदेश मैंने माना, इसलिए वो सब्जेक्ट पे मैंने कोई भी चर्चा ना करते हुए मैंने सिर्फ जो मेरे साथ बीती है उस पे मैंने भाष्य किया है, ना कि वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जब कोर्ट ने कहा उस पे आप कुछ बात नहीं करेंगे तो उस पे मैंने कोई चर्चा नहीं की। पर मुझे तो मेरा राइट्स, जो मेरा अधिकार संविधान ने दिया है ये देश में, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो तो मैं जरूर करूंगी। कोर्ट अगर नोटिस भेजेगी मैम, तब आप क्या करेंगे? हम लीगली कोर्ट को ये जरूर बताना चाहेंगे कि हमने किस बात पे लोगों के सामने आके प्रेस के साथ में बात की। मेरा पीड़ा जेल से लॉकअप से लेके जेल तक मेरे साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ, किस तरीके से हमें पीड़ा पहुंचाने का काम किया, मेरी हेल्थ इशू को बढ़ाने का किसने काम किया। 27 को डॉक्टर लिख के देते हैं, पर उसके बावजूद मुझे हॉस्पिटल 4 तारीख तक नहीं लेके जाया जाता है। ये सब चीजें पे बोलना मेरा अधिकार है और बाबा साहब ने यही सिखाया, लड़ना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। उद्धव ठाकरे के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से आप हनुमान चालीसा कर रही थी, अपने धर्म का ही एक निर्वहन कर रही थी, तो ऐसे में मैम आपके खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, आपके हस्बैंड के खिलाफ कार्रवाई। मुझे लगता है कि राम भक्त और हनुमान भक्त उद्धव ठाकरे को उनकी जगह दिखाएंगे। जो मोदी जी के पैर पकड़कर 14 और 19 जीत के आए, आने वाले समय में वही भक्त उन्हें उनकी जगह भी दिखाएंगे। आज आप किस से मिलेंगी? ओम बिरला जी से? आज ओम बिरला जी से समय लिया है मैंने, और सर ने मुझे समय दिया है और उन्होंने पूरी जानकारी भी पहले ली है, मेरे साथ क्या हुआ, किस तरीके दुर्व्यवहार हुआ। आज मैं जाके एक सदस्य होने के नाते जरूर मेरी पीड़ा उनके सामने रखूंगी। मैं उनसे भी समय मांगूंगी, और उन्होंने वैसे भी पूरी जानकारी, एक महिला और सभागृह की सदस्य होने के नाते उन्होंने पूरी जानकारी ली है। पर मैं जाकर अपनी पीड़ा उनके सामने रखने का काम करूंगी। हमारी सुनवाई केंद्र के माध्यम से, केंद्र की एजेंसी उन पे कार्रवाई करनी चाहिए, वो मांग भी करूंगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ नवनीत राणा, और जिस तरीके से आज वो दिल्ली आई हैं और यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पे बोला है कि दिल्ली में मेरा घर है और मैं आज यहाँ पर आई हूँ और मैं मुलाकात करूंगी, ओम बिरला जी से भी मुलाकात करूंगी, साथ ही साथ जेपी नड्डा और अमित शाह और पीएम से भी मिलने का समय वो मांगेगी। और जिस तरीके से उनका साफ तौर पर ये कहना है कि वो अपने धर्म का निर्वहन कर रही थी, हनुमान चालीसा का अगर उन्होंने पाठ किया तो उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, और अगर वो अपनी बात
बात रख रही हैं तो उसमें भी वो कोर्ट के किसी भी नियम का, किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं कर रही हैं, ऐसा उनका साफ तौर पर कहना है। लेकिन आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि अभी वो यहाँ पर आई हैं और तमाम मीडिया कर्मियों के बीच में मौजूद हैं और थोड़ी देर में वो अपने घर जाएंगी और उनकी पहली कोशिश रहेगी कि सबसे पहले वो ओम बिरला से मिले, उसके बाद उनकी मुलाकात, जो कह रही हैं कि वो समय लेंगी, अमित शाह जी समय लेंगी, साथ ही साथ Here's the big story after the provocative vandalism of the Himachal Pradesh Legislative Assembly building and a banned group's Khalistan referendum call. The state has stepped up security. Interstate borders have been sealed and police barricades have been placed. Thorough checking is being conducted by police at entrance of Himachal Pradesh. Take a look at this ground report by my colleague Amandeep for more. After the incident happened, that Khalistan flags has been hosted at the Dharamshala State Assembly. In fact, now Himachal Pradesh police and the government are showing their concern and tighten the security on the borders. And in fact, several borders has been sealed completely by Himachal Pradesh police and even a thorough checking is going on. We are standing on the Haryana and Himachal Pradesh border. This is one of the entrance point from the side of the Haryana to Himachal Pradesh, where you can see the visuals. A heavy police deployment is here after the incident, just because they have taken a serious note of the incident. Every single vehicle is being checked thoroughly what exactly they are carrying in their vehicles. Himachal has sealed all the borders and such kind of checking is going on. How you are carrying out this operation? We are checking all the vehicles coming to the state and we are checking their luggage and to the passengers. We are inquiring them and thereafter we are letting them go. What kind of inquiry is being done of the passengers who are coming to Himachal? Where from they are coming and where they are going and who are along with them, and we are verifying all the things. Let's get you the latest from the Russia-Ukraine conflict as the Ukrainian army continues to advance around the Kharkiv region, liberating new villages. The bodies of more and more Russian soldiers emerge. The bodies of more than 40 Russian soldiers who were found after battles around Kharkiv are being stored in a refrigerated train wagon until they will be requested by Russia. However, according to Ukrainian officials, until now, Russia has not made any efforts to retrieve bodies of its soldiers. Russians celebrated Victory Day in Vladivostok with a military parade to mark the 77th anniversary of the Soviet victory over Nazi Germany. Military personnel carrying the Russian flag and the banner of victory led the parade through the center of the eastern city. Signs of support for the military have grown across the country since Feb 24th invasion in Ukraine, with the letter Z appearing on billboards and signs in and streets and subways and on television and social media. Japan's PM Fumio Kishida said that his country will ban Russian crude oil imports in principle to show unity with the Group of 7 effort against Russian invasion of Ukraine. Leaders from G7 countries met online and announced their commitment to ban or phase out Russian oil imports in their latest effort to pressure Moscow into ending its aggression on Ukraine. 10 buses slowly pulled into 7 the Zaporizhzhia carrying 174 evacuees from Mariupol. Of the last 51 civilians who were evacuated from the besieged Azovstal steel plant, just over 30 made it out of Russian-held territories. Several hundred more who had hoped to join the evacuation convoy from other areas currently held by Russian forces had to stay behind after Russian and Ukrainian sides failed to reach an agreement on their evacuation. Bono and The Edge from the band U2 have visited Ukraine to perform in support of the country's fight against Russia. Speaking in Borodyanka, a town that had been devastated after a lengthy period of occupation by the Russians, Bono said he was not sure words can fully express what they have been through. He also said, apparently referring to Russian President Vladimir Putin, that he thought the conflict was one man's war and that he had faith in the younger Russians to remove him from office. Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami has filed nomination for the by-polls scheduled for May 31st. In the by-polls, Dhami will contest from the
Champawat constituency, and notably he has also lost from the Khatima seat in the recently held assembly elections in Uttarakhand. Have a look at this report for more. देखिए, मैं चूँकि सभी देवी देवताओं का, चंपावत क्षेत्र की महान जनता का सबका आभारी हूँ, सबका धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आम चुनाव में वहाँ से प्रचंड बहुमत से श्री कैलाश चंद गहतोड़ी जी को भारी बहुमत से जिताया था और उन्होंने वहाँ से आग्रह किया था कि मैं उस क्षेत्र से अब प्रतिनिधित्व करूँ और मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। अब मैं बनखंडी महादेव के प्रांगण में हूँ। बनखंडी बाबा का, हमारे पूर्णागिरी मैया का, गोलजी महाराज का, शारदा मैया का, माँ बाराही का, हिंगला देवी का, रणकुची मैया का, सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से मैं चंपावत क्षेत्र की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। You're watching Republic TV. Much more coming up on the other side. Protesters clash with police. Multiple protesters have been detained after attempt to block bulldozers. And it's a mega crackdown on the Dawood network in Mumbai. Top aides detained by the NIA. Stay tuned to Republic TV. It was a dark night with a bright idea. Guys, we need something big. Let's do what we always do. Something really bold. Let's take on the D segment. Let's create the big daddy of all SUVs because nothing else will do. The big daddy of SUVs from Mahindra, coming soon. We're reporting outside the Kashi Vishwanath temple over here and the mosque that is all mired into controversy. We'll take you straight to the visuals over here in Varanasi. In the visuals, we are bringing you the live pictures of this particular newly built Kashi Vishwanath corridor, and right next to it is the mosque which is under the scanner of all the controversies. This is the particular mosque where against which you can see there's a brown wall over there. My video journalist is zooming in and showing you the brown wall. The petitioner are questioning that they should be allowed to go inside and worship at the temple of Gauri Shringar. That particular brown wall that is just one of the walls of these mosques is being contended to be the Gauri Shringar temple by the devotees over here. And now in their petition they request that they should be allowed to go freely inside and should be allowed to worship and offer prayers over here. However, the mosque committee is against this entire drill, following which, hearing the petitions, the court had asked for a videographic survey, but the entire endeavor fell flat as when the court monitored committee of all the officials came here for the videographic survey. They were not allowed to go inside. There was a massive protest here at gate number 4 of Kashi Vishwanath temple over here. Hundreds of people from the Muslim community came forward and they expressed their displeasure, moving the Varanasi district court as well over here. They questioned that a videographic survey is a brazen endeavor and should not be done. उन्होंने खुली चेतावनी दी है खासदार नवनीत राणा ने कि उद्धव ठाकरे जनता के बीच आगे खड़ा रहना चाहिए, उनको उनके सामने खड़े रहेंगे और उनको जवाब देंगे। तो मेरे पे अन्याय हुआ, लॉकअप से लेकर जेल के प्रशासन से लेकर सभी जगहों पे, उसका मैं आप लोगों को डिटेल में बात करूंगी। श्री
श्री राम का नाम लेने में और हनुमान भगवान का नाम लेने में अगर कोई 14 दिन डालते हैं तो मेरी 14 दिन में कोई आवाज नहीं दबा सकता। अगर उन्होंने 14 साल भी डाला तो भी मैं भगवान का नाम लेना बंद नहीं करूँगा। What is being claimed by the Hindu petitioners is that this particular structure of the mosque is entirely a temple. However, the Muslim petitioners have made it very clear that it's a 17th century building, which is why a recent videographic survey hurts their sentiments. जो लोग वहाँ के सर्वे को रोक रहे हैं तो प्रश्न उठेगा क्या छुपाना चाहते हैं, किस चीज के से घबरा रहे हैं कि ये बाहर आ जाए। भारत में कानून का राज है। अगर आप गलत तरीका अपनाते हैं तो उसकी काट भी है। जिस हिसाब से उन्होंने एक पहले 6 बजे के आसपास उन्होंने ये वारंट निकाला और दूसरा वारंट रात को करीब 10 बजे के करीब निकाला। तो इतना तो था ही, हम लोग इंतजार कर रहे थे। हमारे साथ हमारे ये बच्चे भी साथ में थे, कुछ मीडिया कर्मी भी साथ में थे और वो भी इस इंतजार में थे कि पुलिस कब आती है। लगभग 11 साढ़े 11 बजे न्यूज आई कि बग्गा ने उनके खिलाफ याचिका दायर की है। तब हम लोग निश्चिंत हो गए कि अब पुलिस कम से कम जब तक फैसला नहीं हो जाता तब It's loudspeaker versus loudspeaker in Karnataka now. Sri Ram Sena launches protest over loudspeakers for Azan. Rajasthan Congress Minister Mahesh Joshi's son booked for rape by the Delhi police. CBI registers FIR against Babul Supriyo, aid in a corruption case. Survey findings presented before the Varanasi court as the political fight over the Gyan Vyapi mosque continues. Elon Musk hints at threat to life, says if I die under mysterious circumstances, it was nice knowing you. All right, big breaking coming in. NIA has begun a major crackdown on the D-Gang. Salim Fruit has been detained following a raid at his residence in Mumbai. He's an associate of Dawood Ibrahim, and some important documents have also been seized. I would like to go across to senior executive editor Abhishek. Abhishek, this is a big crackdown on the Dawood-Gang. Also, it's a big, in fact, success when it comes to cracking down on terror and such activities. Well, absolutely, Shivangi. So, in fact, it's huge and in the recent memory, possibly the biggest one, with over 200 sleuths of the NIA carrying out those raids at multiple locations, 20 plus across Mumbai, associated with Dawood Ibrahim network. People who are working for him, connected with him, working his syndicate, part of his D company, they have been targeted. And sources tell us that ultimately some of them could be connected with the ongoing Nawab Malik investigation, and that's going to be little embarrassing or little more than that so far as the MVA government is concerned. We know that Nawab Malik is already in judicial custody as part of an ED investigation, and if these raids which are targeted at the network of Dawood Ibrahim in Mumbai, through which he was channelizing funds for narco-terrorism, for other terror activities, for funding terror from across the border and facilitating fake currency movement across the country. I think this is going to be a big one by the time it is over. There is already one detention that has taken place of an associate of Dawood. In fact, one more person at whose residence this raid is going on is Sohail Khandwani, and he is someone who has had connections not just with Dawood but also with Nawab Malik of some kind. We don't know as yet exactly what is the connection. That would come out once the entire process, the entire exercise is over. But it's a huge one given the fact that
it is happening after due surveillance over a period of time, and we have to wait just for a couple of hours before more details come out, Shivangi. All right, Abhishek, thank you for getting us all those details on the mega swoop down on D-Gang. Much more coming up on the other side of the short break. It's a loudspeaker versus loudspeaker in Karnataka now. Sri Ram Sena launches protest over loudspeakers for Azan. And no immediate rearrest for the Ranas yet. Court issues notice, Ranas given right to reply. Stay tuned to Republic TV. It was a dark night with a bright idea. Guys, we need something big. Let's do what we always do. Something really bold. Let's take on the D segment. Let's create the big daddy of all SUVs, because nothing else will do. The big daddy of SUVs from Mahindra, coming soon. उन्होंने खुली चेतावनी दी है खासदार नवनीत राणा ने कि उद्धव ठाकरे ने जनता के बीच आगे खड़ा रहना चाहिए, उनको उनके सामने खड़े रहेंगे और उनको जवाब देंगे। तो मेरे पे अन्याय हुआ, लॉकअप से लेकर जेल के प्रशासन से लेकर सभी जगहों पे, उसका मैं आप लोगों को डिटेल में बात करूंगी। श्री राम का नाम लेने में और हनुमान भगवान का नाम लेने में अगर कोई 14 दिन डालते हैं तो मेरी 14 दिन में कोई आवाज नहीं दबा सकता। अगर उन्होंने 14 साल भी डाला तो भी मैं भगवान का नाम लेना बंद नहीं करूंगी। What is being claimed by the Hindu petitioners is that this particular structure of the mosque is entirely a temple. However, the Muslim petitioners have made it very clear that it's a 17th century building, which is why a recent videographic survey hurt their sentiments. जो लोग वहाँ के सर्वे को रोक रहे हैं तो प्रश्न उठेगा क्या छुपाना चाहते हैं, किस चीज के से घबरा रहे हैं कि ये बाहर आ जाए। भारत में कानून का राज है, अगर आप गलत तरीका अपनाते हैं तो उसके काट भी है। जिस हिसाब से उन्होंने एक पहले 6 बजे के आसपास उन्होंने ये वारंट निकाला और दूसरा वारंट रात को करीब 10 बजे के करीब निकाला, तो इतना तो था ही। हम लोग इंतजार कर रहे थे, हमारे साथ हमारे ये बच्चे भी साथ में थे, कुछ मीडिया कर्मी भी साथ में थे और वो भी इस इंतजार में थे कि पुलिस कब आती है। लगभग 11 साढ़े 11 बजे न्यूज आई कि बग्गा ने उनके खिलाफ याचिका दायर की है। तब हम लोग निश्चिंत हो गए कि अब पुलिस कम से कम जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक नहीं आएगी। हम लोग रिलैक्स हो गए। 12 बजे के आसपास फैसला आ गया कि बग्गा को 2 दिन की राहत मिली है। अब उस राहत का फायदा किस हिसाब से उठाना है, क्या क्या करना है, ये बग्गा जाने, पार्टी जाने और उनके वकील जाने। इन्होंने कल फिर ये दर्शा दिया कि इस देश के अंदर कानून का राज चलता है। अगर अरविंद केजरीवाल सोचते हैं कि सत्ता के बल पे, पुलिस के बल पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा सकते हैं, झुका सकते हैं, तो फिर से मैं उनको कहता हूं, एक नहीं 100 FIR कीजिए। अरविंद केजरीवाल जी, मैं ये सवाल पूछूंगा कि आपने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को 24 घंटे के अंदर जेल की सलाखों में डालना था, आपने चुनाव के अंदर वादा किया था, लेकिन आप ही के विधायक ने जो उस समय SIT कमेटी के सदस्य थे और जिन्होंने इस्तीफा दिया था, और आप उनका नाम बार बार लेते थे, जो आपके अमृतसर के विधायक हैं, ने ये कहा कि जिन लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को बचाया, आपने उनको प्रमोशन दे दी। In a shocking incident, 2 persons were injured after 15 to 20 rounds of firing took place in
West Delhi, Subhash Nagar, late at night on Saturday. In fact, these firing took place yesterday in the middle of the night, after which 2 people have been injured. They have been rushed to the spot, and after the incident took place, several police officials were deployed in the area, and there is a heavy deployment in the shooting site, and several barricades have also been placed, and the inquiry has also been placed by the officials. According to the preliminary information that we are getting from the officials, the investigation has been put in place as to who was behind the firing. CCTV cameras are being constantly... All right, top headlines at this hour. Uddhav government has gone all out, wants Navneet and Ravi Rana back in jail. No immediate re-arrest for the Ranas yet. Court issues notice. Rana is given right to reply. Navneet Rana to meet Lok Sabha Speaker Om Birla at 5:30 p.m. in the national capital. Setback for left in Supreme Court. Refuses to entertain CPIM plea. Left forced to withdraw petition. Protesters clash with police. Multiple protesters detained after attempt to block bulldozers. It's a mega crackdown on the Dawood network in Mumbai. Top Dawood aides are detained by the NIA. All right, let's start off this bulletin with visuals of Amit Shah, who is right now in Assam. You can see those visuals there on your screen. Amit Shah in Assam on a 3-day tour to interact with the BSF at border outpost, and visuals there coming in from Assam, the Home Minister on a 3-day tour. And we can also see Amit Shah along with Himanta Biswa Sarma at Tamulpur. He's attending the government's first anniversary celebrations, and he's also expected to travel to the India-Bangladesh border. Now, earlier in the day, Shah was received at the Guwahati airport by Sarma and other senior state BJP leaders as well. So a tight schedule there for Amit Shah. He will lay the foundation and take part in the groundbreaking ceremony for the Central Workshop and Stores as well for Central Armed Paramilitary Force at Tamulpur district. Well, some more breaking news coming in at this point of time. Now, police in Pondicherry have arrested more than 500 DMK workers who were protesting against the order issued by the central government's Jimper Hospital and Medical College in India, led by Siva, the leader of the opposition in the Pondicherry State Assembly. And joining me on the phone line is Apurva. Apurva, this is a big breaking that we are getting, and Apurva, now we were expecting some action happening here. Now we know that the police in Pondicherry has arrested 500 DMK workers who were protesting against the order issued by the central government's Jimper Hospital and Medical College in India. Tell us the details of what's exactly happening right now. Well, the Jimper College in Pondicherry is one of the most prominent colleges there, and not only that, following a statement that it had received where it stated that students must converse, the language there must be in Hindi here on now. With the order that had come in from the union government directions, there has been a controversy there that has erupted with Puducherry. Remember, already over the last couple of weeks, we had seen several such,
Hindi imposition row that had been going on, protests taking place here in Tamil Nadu as well. And now with the Chipma College administration receiving this kind of a circular there, not only has there been several voices, political voices who have voiced out regarding a blatant imposition of Hindi on such a college. Remember, Chipma College is one of the more prominent colleges here in Puducherry, where almost several people from across the entire country who are medical aspirants and also across the world do come there for studying a medical and looking into more other perspectives there in that college. And now with the circular that has been issued, not only has there risen several voices asking as to why the circular implies that there must be only Hindi only language allowed, when in fact English and Hindi both are official languages. This also, as we are seeing, DMK's MP Kanimori had already tweeted out saying that Hindi imposition will not be accepted, and that the central government is trying several measures to ensure that Hindi be brought in, but they will not allow it. Not only that, in fact, CPIM MP today has as well, Venkatesh, he has also issued a statement where he says that this kind of imposition of Hindi will not be the right thing to do, given that the culture of India is diverse as well. And also this comes at a time when massive protests had taken place here in Puducherry. Earlier this morning, more than 500 cadres of the DMK, led by the opposition leader Shiva, had carried out protests here, condemning the letter that had been signed and brought in for the Chipma College. In fact, 500 of these DMK workers and cadres, including Shiva, have been detained by the police. Right. Protests still are expected to continue. Okay, Apurva, thank you for getting us those details. Over 500 DMK workers now have been arrested. The police in Pondicherry has made that move. Now, much more coming up in next. Let's have a look at other reports which are coming in on Republic TV. One person has been taken into custody and one person is absconding after a fight broke down in a supermarket where 3 members of the supermarket staff were attacked by the customers, allegedly for demanding non-halal beef in the market itself. The incident happened at Perambra in Kozhikode on Sunday evening, where 2 individuals had walked into the supermarket demanding that non-halal beef be available. However, the market staff stated that such products are not available. A quarrel ensued following this, and in an inebriated state, the duo attacked the staff members. One person was taken into custody and police has remanded him under judicial custody, whereas police has also confirmed that one person is absconding. Various political parties, including the Youth Muslim League as well as the Youth Congress, has staged a protest stating that it is RSS which is behind these attacks. Coming up on the other side, Rajasthan Congress ministers Mahesh Joshi's son booked for rape by the Delhi police. Plus, CBI registers FIR against Babul Supriyo's aide in a corruption case. Stay tuned to Republic TV. It was a dark night with a bright idea. Guys, we need something big. Let's do what we always do. Something really bold. Let's take on the D segment. Let's create the big daddy of all SUVs, because nothing else will do. The Big Daddy of SUVs from Mahindra, coming soon. Amity has been ranked among the top universities globally for producing the most employable graduates by the Times Higher Education UK. Yet another testimony to Amity's excellent placement record.
what is being claimed by the Hindu petitioners is that this particular structure of the mosque is entirely a temple. However, the Muslim petitioners have made it very clear that it's a 17th century building, which is why a recent videographic survey hurt their sentiment. जो लोग वहाँ के सर्वे को रोक रहे हैं तो प्रश्न उठेगा क्या छुपाना चाहते हैं, किस चीज के से घबरा रहे हैं कि ये बाहर आ जाए। भारत में कानून का राज है, अगर आप गलत तरीका अपनाते हैं तो उसकी काट भी है। जिस हिसाब से उन्होंने एक पहले 6 बजे के आसपास उन्होंने ये वारंट निकाला और दूसरा वारंट रात को करीब 10 बजे के करीब निकाला, तो इतना तो था ही। हम लोग इंतजार कर रहे थे, हमारे साथ हमारे ये बच्चे भी साथ में थे, कुछ मीडिया कर्मी भी साथ में थे और वो भी इस इंतजार में थे कि पुलिस कब आती है। लगभग 11 साढ़े 11 बजे न्यूज आई कि बग्गा ने उनके खिलाफ याचिका दायर की है। तब हम लोग निश्चिंत हो गए कि अब पुलिस कम से कम जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक नहीं आएगी। हम लोग रिलैक्स हो गए। 12 बजे के आसपास फैसला आ गया कि बग्गा को 2 दिन की राहत मिली है। अब उस राहत का फायदा किस हिसाब से उठाना है, क्या क्या करना है, ये बग्गा जाने, पार्टी जाने और उनके वकील जाने। जिन्होंने कल फिर ये दर्शा दिया कि इस देश के अंदर कानून का राज चलता है। अगर अरविंद केजरीवाल सोचते हैं कि सत्ता के बल पे, पुलिस के बल पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा सकते हैं, झुका सकते हैं, तो फिर से मैं उनको कहता हूं, एक नहीं 100 FIR कीजिए। अरविंद केजरीवाल जी, मैं ये सवाल पूछूंगा कि आपने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को 24 घंटे के अंदर जेल की सलाखों में डालना था। आपने चुनाव के अंदर वादा किया था, लेकिन आप ही के विधायक ने, जो उस समय SIT कमेटी के सदस्य थे और जिन्होंने इस्तीफा दिया था, और आप उनका नाम बार बार लेते थे, जो आपके अमृतसर के विधायक हैं, ने ये कहा कि जिन लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को बचाया, आपने उनको प्रमोशन दे दी। In a shocking incident, 2 persons were injured after 15 to 20 rounds of firing took place in West Delhi, Subhash Nagar, late at night on Saturday. In fact, these firing took place yesterday in the middle of the night, after which 2 people have been injured. In a Dairo event in Jamnagar was organized by Dharmendra Jadeja, Kandhal Jadeja, NCP MLA, Vikram, Madam, Hakuba Jadeja, Congress MLAs. Now you can see on your screens at least how 50 lakhs was showered over them in this event. Not just rupees being showered. You can see the notes flying from the air coming down. But euros as well were showered by these MLAs as well in this. Big industrialists and builders were also present who were showering the cash on artists. I would like to go straight across to Priyanka, who's joining me. Now, Priyanka, this event in Jamnagar definitely raising some eyebrows there. Tell us the details. Okay, we're getting some trouble getting to Priyanka, but viewers, look at the visuals on your screen. 50 lakh rupees showered during an event in Jamnagar. We'll get to you more details on that. Coming up on the other side of this short break, Navneet Rana to meet Lok Sabha Speaker Om Birla at 5:30 p.m. in the national capital. And setback for left in Supreme Court refuses to entertain CPIM plea. Left has been forced to withdraw the petition. Stay tuned to Republic TV.
was a dark night with a bright idea. Guys, we need something big. Let's do what we always do. Something really bold. Let's take on the D segment. Let's create the big daddy of all SUVs, because nothing else will do. The big daddy of SUVs from Mahindra, coming soon. Amity has been ranked among the top universities globally for producing the most employable graduates by the Times Higher Education UK. Yet another testimony to Amity's excellent placement record. In a shocking incident, 2 persons were injured after 15 to 20 rounds of firing took place in West Delhi, Subhash Nagar, late at night on Saturday. In fact, these firing took place yesterday in the middle of the night, after which 2 people have been injured. They have been rushed to the spot, and after the incident took place, several police officials were deployed in the area, and there is a heavy deployment in the shooting site, and several barricades have also been placed, and the inquiry has also been placed by the officials. According to the preliminary information that we are getting from the officials, the investigation has been put in place as to who was behind the firing. CCTV cameras are being constantly checked of the entire location, and the injured people are undergoing treatment in the nearby hospital. The entire incident took place on Saturday night. This is Sumi Rajapun for Republic Media Network with video journalist Ranveer, New Delhi. Refugees have gathered here in Jammu as a part of Smaran Divas to remember those who have attained martyrdom in the Pakistan's brutality when the part of Jammu and Kashmir was illegally occupied by Pakistan, and now these people have come from various parts of the country to remember those who have given the supreme sacrifice. Sir, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो हमारे वहाँ पर छूट गए विस्थापित लोग, हमारे जो वहाँ पर पूर्वज छूट गए हैं, उन लोगों को हम अपने साथ मिलाना चाहते हैं और हम उनके साथ मिलेंगे। पीओजेके का जो हिस्सा उसको लेने के लिए आज संकल्प लेंगे और अपने जो पूर्वज थे उनको हम आज श्रद्धांजलि देंगे। श्रद्धांजलि दे रहे सर, आपसे जानना चाहूँगा, लगातार मांग उठ रही है पीओजेके वापसी को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा कदम है, ये ऐसा होना चाहिए, हम उधर जाएं वो इधर आए, एक दूसरे का मिलाप होना चाहिए। वापस आना चाहिए पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर। बिल्कुल बिल्कुल वापस आना चाहिए पूरे का। We're reporting outside the Kashi Vishwanath temple over here and the mosque that is all mired into controversy. We'll take you straight to the visuals over here in Varanasi. In the visuals, we are bringing you the live pictures of this particular newly built Kashi Vishwanath corridor, and right next to it is the mosque, which is under the scanner of all the controversies. This is the particular mosque where against which you can see there's a brown wall over there. My video journalist is zooming in and showing you the brown wall. The petitioner are questioning that they should be allowed to go inside and worship at the temple of Gauri Shringar. That particular brown wall that is just one of the walls of these mosques is being contended to be the Gauri Shringar temple by the devotees over here, and now in their petition they request Top national updates now. A massive drama unfolded in Delhi Shaheen Bagh as Congress and Bhim Army leaders staged protest against the anti-encroachment drive. Considering the situation, CRPF personnel have been deployed in the area. A big political face-off has erupted over Shaheen Bagh demolition drive attacking Aam Aadmi Party and Congress. BJP has stated that the parties are trying to give a communal spin to the anti-encroachment drive. Coming up, CBI registers FIR against Babul Supriyo aide in a corruption case.
It was a dark night with a bright idea. Guys, we need something big. Let's do what we always do. Something really bold. Let's take on the D segment. Let's create the big daddy of all SUVs, because nothing else will do. The big daddy of SUVs from Mahindra, coming soon. We're reporting outside the Kashi Vishwanath temple over here and the mosque that is all mired into controversy. We'll take you straight to the visuals over here in Varanasi. In the visuals, we are bringing you the live pictures of this particular newly built Kashi Vishwanath corridor, and right next to it is the mosque which is under the scanner of all the controversies. This is the particular mosque where against which you can see there's a brown wall over there. My video journalist is zooming in and showing you the brown wall. The petitioner are questioning that they should be allowed to go inside and worship at the temple of Gauri Shringar. That particular brown wall that is just one of the walls of these mosques is being contended to be the Gauri Shringar temple by the devotees over here. And now in their petition they request that they should be allowed to go freely inside and should be allowed to worship and offer prayers over here. However, the mosque committee is against this entire drill, following which, hearing the petitions, the court had asked for a videographic survey, but the entire endeavor fell flat, as when the court monitored committee of all the officials came here for the videographic survey, they were not allowed to go inside. There was a massive protest here at gate number 4 of Kashi Vishwanath temple over here. Hundreds of people from the Muslim community came forward and they expressed their displeasure, moving the Varanasi district court as well over here. They questioned that a videographic survey is a brazen endeavor and should not be done. उन्होंने खुली चेतावनी दी है खासदार नवनीत राणा ने कि उद्धव ठाकरे। All right, big breaking coming in right now. This is big news, big international update coming in that Mahinda Rajapaksa has resigned as the Prime Minister of Sri Lanka. Now, this was expected. Now, officially, we can tell you that Mahinda Rajapaksa has resigned as the PM of Sri Lanka as protests take a violent turn in Sri Lanka. Big news coming there from Sri Lanka. The Prime Minister of the country has resigned. Now, this is coming after the protest and the worst financial crisis in the country since independence. Now we can tell you that after much pressure, after a lot of speculation as well, Sri Lanka's Prime Minister Mahinda Rajapaksa has resigned from the post. I would like to go straight across to Senior Executive Editor Abhishek. Abhishek, we were expecting such an announcement to come in, seeing the massive economic crisis and the unrest in the country and how unhappy the people of Sri Lanka were. And finally, now we know that the Prime Minister has offered his resignation. Well, absolutely. So a nationwide curfew has been imposed across the country, Shivangi, and Mahinda Rajapaksa has resigned. In fact, just a while back, he tweeted saying that while emotions are running high in Lanka, I urge our general public to exercise restraint and remember that violence only begets violence. The economic crisis we are in needs an economic solution, which this administration is committed to resolving. Subsequent to this tweet, the Prime Minister of Sri Lanka, who was earlier president, has resigned. The Rajapaksa family essentially controls the island nation, but we have seen how it has plunged into a deep economic mess, essentially because of the debt that the Sri Lankan government has taken over the last few years, and also
because the pandemic years led to a downfall in tourist economy, essentially the bread and butter of Sri Lanka. So I think the Rajapaksas realizing that the opposition is not going to calm down. We have seen violence because people are not getting the basics of food and other amenities. Runaway inflation has caused a big hole in the foreign forex reserves of Sri Lanka. In fact, the government of India has helped the tune of about $2 billion already in the last 1 month. And in a departure from the past, even the Tamil Nadu government has broad-based its support and assistance to Sri Lanka beyond the northern Tamil areas and covering the entire nation. In fact, Mahinda Rajapaksa had written to Tamil Nadu Chief Minister Stalin thanking him for taking this very broad view. So I think this is a big development coming in with Mahinda Rajapaksa putting in his papers, paving the way for some kind of dialogue with the opposition, because the opposition was adamant that given the financial crisis that has been brought upon the nation, the Rajapaksas should be quitting, and beginning happening with Prime Minister Mahinda Rajapaksa there resigning. Shivangi. Right, Abhishek, I'll just stay on with us. We knew that the Sri Lankan citizens were showing their discontentment with the present government. They were struggling, standing in long queues just to acquire basic necessities such as food and medicines. Earlier, Mahinda Rajapaksa was hooted. He was catcalled by the angry public. And now, after so much of dissatisfaction by the government, now finally, the Prime Minister of Sri Lanka has quit as protests escalate, as Sri Lanka had imposed emergency in the nation, which had, of course, led to a lot of dissatisfaction. Because of the emergency, even the security forces could also not take any leave. So we are seeing a lot of developments happening there. We'll stay on the story after the short break. Coming up on the other side of a short break, of course, we'll be tracking this big international development and much more. Starting with Navneet Rana, who's to meet Lok Sabha Speaker Om Birla at 5:30 p.m. in the national capital. And the other big story that we are tracking, international story, is that Elon Musk is hinting at threat to life, says if I die under mysterious circumstances. It was nice knowing you. Stay tuned to Republic TV. It was a dark night with a bright idea. Guys, we need something big. Let's do what we always do. Something really bold. Let's take on the D segment. Let's create the big daddy of all SUVs, because nothing else will do. The big daddy of SUVs from Mahindra, coming soon. उन्होंने खुली चेतावनी दी है खासदार नवनीत राणा ने कि उद्धव ठाकरे जनता के बीच आगे खड़ा रहना चाहिए, उनको उनके सामने खड़े रहेंगे और उनको जवाब देंगे। तो मेरे पे अन्याय हुआ, लॉकअप से लेकर जेल के प्रशासन से लेकर सभी जगहों पे, उसका मैं आप लोगों को डिटेल में बात करूंगी। श्री राम का नाम लेने में और हनुमान भगवान का नाम लेने में अगर कोई 14 दिन डालते हैं तो मेरी 14 दिन में कोई आवाज नहीं दबा सकता। अगर उन्होंने 14 साल भी डाला तो भी मैं भगवान का नाम लेना बंद नहीं करूंगा। What is being claimed by the Hindu petitioners is that this particular structure of the mosque is entirely a temple. However, the Muslim petitioners have made it very clear that it's a 17th century building, which is why a brazen videographic survey hurt their sentiments. जो लोग वहाँ के सर्वे को रोक रहे हैं, तो प्रश्न उठेगा क्या छुपाना चाहते हैं, किस चीज के से घबरा रहे हैं कि ये बाहर आ जाए। भारत में कानून का राज है, अगर आप गलत तरीका अपनाते हैं तो उसकी काट भी है।
जिस हिसाब से उन्होंने एक पहले 6 बजे के आसपास उन्होंने ये वारंट निकाला और दूसरा वारंट रात को करीब 10 बजे के करीब निकाला। तो इतना तो था ही, हम लोग इंतजार कर रहे थे। हमारे साथ हमारे ये बच्चे भी साथ में थे, कुछ मीडिया कर्मी भी साथ में थे और वो भी इस इंतजार में थे कि पुलिस कब आती है। लगभग 11 साढ़े 11 बजे न्यूज आई कि बग्गा ने उनके खिलाफ याचिका दायर की है। तब हम लोग निश्चिंत हो गए कि अब पुलिस कम से कम जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक नहीं आएगी। हम लोग रिलैक्स हो गए। 12 बजे के आसपास फैसला आ गया कि बग्गा को 2 दिन की राहत मिली है। अब उस राहत का फायदा किस हिसाब से उठाना है, क्या क्या करना है, ये बग्गा जाने, पार्टी जाने और उनके वकील जाने। इन्होंने कल फिर ये दर्शा दिया कि इस देश के अंदर कानून का राज चलता है। अगर अरविंद केजरीवाल सोचते हैं कि सत्ता के बल पे, पुलिस के बल पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा सकते हैं, झुका सकते हैं, तो फिर से मैं उनको कहता हूं, At 4 p.m. Uddhav government goes all out, wants Navneet and Ravi Rana back in jail. No immediate rearrest for the Ranas yet. Court issues notice. Ranas given right to reply. Navneet Rana to meet Lok Sabha Speaker Om Birla at 5:30 p.m. in the national capital. Setback for left in Supreme Court, refuses to entertain CPIM plea, left forced to withdraw petition. Protesters clash with police, multiple protesters detained after attempts to block bulldozers. Sri Lankan Prime Minister Mahinda Rajapaksa forced to quit amid massive protests and a crippling economic crisis. Starting with the breaking news coming in, Rajasthan Chief Minister Gehlot has belittled violence in his state, trailing guns on the opposition. Gehlot said that an environment of violence is being created in Rajasthan and that it is difficult to function. In fact, we have a reaction as well, the soundbite of the Rajasthan Chief Minister reacting to the violence that broke out in the state and trivializing the whole violence incident. Let's listen into what the Chief Minister had to say. Cutting across to live visuals of Navneet Rana and Ravi Rana on our screens right now. So Navneet and Ravi Rana, who are in the national capital today, they will be meeting Lok Sabha Speaker Om Birla at around 5:30 p.m. today. Remember, नांगलेली आहे आणि याच्यापेक्षा दुर्भाग्य माझी महाराष्ट्राची होऊ शकत नाही. हनुमान चालीसा आहे आणि तुमचे समर्थक म्हणतात की ते उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेच्या खासदारांना भेट द्यावी म्हणून. मला असं वाटते की जेही लोकप्रतिनिधी आहे, जेही पार्टीचे लोकप्रतिनिधी असन, ज्यांनी हे पूर्ण एपिसोड पाहिलं, जे आमच्यावर अत्याचार पाहिला, एकही कोणतेही पक्ष जरी असला तर त्यांना हे सगळं पाहून चांगला नाही वाटलं. आज माझा नंबर लागलेला आहे. उद्या जर यांची सत्ता गेली तर त्यांना जर ज्या दिवशी आदित्य ठाकरेला बिना कारणांनी जर जेलमध्ये टाकलं तर मला वाटते त्या दिवशी ती पीडा त्यांना जाणवी आणि ती वेळ जास्त लांब नाही है. आज तेरी बारी है, तूने दुरुपयोग सरकार का किया है तो उद्या दूसरे की भी बारी आएगी. आज तुमने अपने समय का, अपने
पद का दुरुपयोग किया है तो कल हमारी भी बारी आएगी, ये याद रखना उद्धव ठाकरे। एक सवाल तो दो मत। आपका आगे क्या? एक मिनट यार, आज आपका एक मिनट भैया, ये गलत यार। हमारे साथ नवनीत राणा जी है। नवनीत जी 5 बजे 5:30 बजे मैं ओम बिरला जी को मिलने जाने वाली हूँ ना, पीछे सबके साथ हमारा आज तक तो पूरा कर लिया हमारा छूट गया। एक मिनट यार, आपका तो चारों ही दोनों ही तीनों कर लिया मैंने। एक मिनट, इंग्लिश भी कर लिया, हिंदी भी कर लिया। हमारा न्यूट्रिशन का नहीं हुआ है। हमारा भी हमारे साथ नवनीत राणा जी है। नवनीत जी आपके साथ। So, Navneet Rana there addressing the media and saying that Chief Minister Uddhav Thackeray has misused his power. In fact, remember just a short while back, she also addressed the media in which she said she will be getting an FIR registered against the torture she faced while she was in custody. So there we have Ravi Rana and Navneet Rana who are now in the national capital. So, Navneet Rana and Ravi Rana will be meeting Lok Sabha Speaker Om Birla as well in the evening today. And addressing the media, Navneet Rana also said that she will also be meeting Prime Minister Modi and also launched a very pronged attack on the Uddhav government, saying that the Maharashtra government has misused the power and that calling the whole arrest and unconstitutional. And also going on to allege that she was tortured while she was in jail. She was mistreated. And also going on to add that she will also be getting an FIR registered with respect to the torture she faced while she was in jail. Remember, Navneet Rana and Ravi Rana are all set to meet Home Minister Amit Shah as well, along with Om Birla, who they will be meeting at around 5:30 p.m. this evening. And Navneet Rana and Ravi Rana, while addressing the media, said that they have not broken any of the bail conditions that have been imposed on them. So very shortly, Ravi Rana and Navneet Rana will be meeting the Lok Sabha Speaker Om Birla. Remember, Mumbai court has already meanwhile issued a notice to the Ranas, and speaking to the media, Navneet Rana also said that she has not spoken anything against the law. So there we have Navneet Rana and Ravi Rana, who are now in the national capital, all set to meet the Lok Sabha Speaker Om Birla. And also what Navneet Rana said, that she will be getting an FIR registered with respect to the torture she faced in jail. Getting you news in brief, a massive drama unfolded in Delhi's Shaheen Bagh as Congress and Bhim Army leaders staged protest against the anti-encroachment drive. Considering the situation, the CRPF personnel were also deployed in the area. A big political face-off has erupted over Shaheen Bagh demolition drive attacking AAP and the Congress. BJP stated that the parties are trying to give a communal spin to the anti-encroachment drive. A Mumbai court issued notice to independent MP Navneet Rana and her husband Ravi Rana seeking their say on why a non-bailable warrant should not be issued against them. Notice issued after Maharashtra government demanded immediate cancellation of bail. Navneet and Ravi Rana have arrived in the national capital. Ranas to hold top-level meetings in the national capital. The National Investigation Agency, or the NIA, conducted raids at more than 20 locations in Mumbai against aides of fugitive gangster Dawood Ibrahim. The raids by the counter-terror agency included locations related to Hawala operations. Gangster Chota Shakeel's key aide Salim Qureshi alias Salim Flood has been detained by the NIA. This comes after his residence was raided by the NIA teams this morning. The hearing of the Gyanvapi Mosque underway in Varanasi court. Muslim organization demanded halt of the videographic survey. A zero FIR has been lodged with the Delhi police against the son of a Rajasthan minister after he allegedly raped a 23-year-old woman. The woman from Jaipur alleged that Rohit Joshi
The son of Rajasthan Minister Mahesh Joshi raped her on multiple occasions over a year. In a cryptic tweet, Tesla CEO Elon Musk has hinted a life threat to him from Russian official. Musk took to Twitter. He said, and I quote, "If I die under mysterious circumstances, it's been nice knowing you." Russians celebrated Victory Day in Moscow with a military parade to mark the 77th anniversary of the Soviet victory over Nazi Germany. देखिए, मैं चूँकि सभी देवी देवताओं का, चंपावत क्षेत्र की महान जनता का सबका आभारी हूँ, सबका धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आम चुनाव में वहाँ से प्रचंड बहुमत से श्री कैलाश चंद गहतोड़ी जी को भारी बहुमत से जिताया था और उन्होंने वहाँ से आग्रह किया था कि मैं उस क्षेत्र से अब प्रतिनिधित्व करूँ और मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। अब मैं बनखंडी महादेव के प्रांगण में हूँ। बनखंडी बाबा का, हमारे पूर्णागिरी मैया का, गोलजू महाराज का, शारदा मैया का, माँ बाराही का, हिंगला देवी का, रणकुची मैया का, सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से मैं चंपावत क्षेत्र की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। It was a dark night with a bright idea. Guys, we need something big. Let's do what we always do. Something really bold. Let's take on the D segment. Let's create the big daddy of all SUVs because nothing else will do. The big daddy of SUVs from Mahindra, coming soon. What is being claimed by the Hindu petitioners is that this particular structure of the mosque is entirely a temple. However, the Muslim petitioners have made it very clear that it's a 17th century building, which is why a brazen videographic survey hurt their sentiments. जो लोग वहां के सर्वे को रोक रहे हैं, तो प्रश्न उठेगा क्या छुपाना चाहते हैं, किस चीज के से घबरा रहे हैं कि ये बाहर आ जाए। भारत में कानून का राज है। अगर आप गलत तरीका अपनाते हैं तो उसकी काट भी है। जिस हिसाब से उन्होंने एक पहले 6 बजे के आसपास उन्होंने ये वारंट निकाला और दूसरा वारंट रात को करीब 10 बजे के करीब निकाला। तो इतना तो था ही, हम लोग इंतजार कर रहे थे। हमारे साथ हमारे ये बच्चे भी साथ में थे, कुछ मीडिया कर्मी भी साथ में थे और वो भी इस इंतजार में थे कि पुलिस कब आती है। लगभग 11 साढ़े 11 बजे न्यूज आई कि बग्गा ने उनके खिलाफ याचिका दायर की है। तब हम लोग निश्चिंत हो गए कि अब पुलिस कम से कम जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक नहीं आएगी। हम लोग रिलैक्स हो गए। 12 बजे के आसपास फैसला आ गया कि बग्गा को 2 दिन की राहत मिली है। अब उस राहत का फायदा किस हिसाब से उठाना है, क्या क्या करना है, ये बग्गा जाने, पार्टी जाने और उनके वकील जाने। इन्होंने कल फिर ये दर्शा दिया कि इस देश के अंदर कानून का राज चलता है।
अगर अरविंद केजरीवाल सोचते हैं कि सत्ता के बल पे, पुलिस के बल पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा सकते हैं, झुका सकते हैं, तो फिर से मैं उनको कहता हूं, एक नहीं 100 FIR कीजिए। अरविंद केजरीवाल जी, मैं ये सवाल पूछूंगा कि आपने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को 24 घंटे के अंदर जेल की सलाखों में डालना था। आपने चुनाव के अंदर वादा किया था, लेकिन आप ही के Getting in news from Karnataka, where Chief Minister Basavaraj Bommai said that there is a Supreme Court guideline on loudspeakers and that everyone must follow the guidelines. And Chief Minister Bommai also going on to add that other states are acting on implementing the SC guidelines, and that he's also asked senior officials to act, and it is one of the key issues on the agenda. So there we have Chief Minister Bommai reacting as the loudspeaker versus Hanuman Chalisa row escalates. Let's listen into what Chief Minister Bommai had to say. ಅಜಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಆದೇಶ ಈಗಾಗಲೇ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಆದೇಶವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಚರ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ. ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅಜಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಆದೇಶ ಈಗಾಗಲೇ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಆದೇಶವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಚರ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ. ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. And that's the breaking news update coming in. Yeah. Yes, yes, please. Samiksha, yeah, you just heard what he said. Basavaraj Bommai, the Karnataka Chief Minister, saying that there is a Supreme Court guideline on loudspeakers. In Kannada, he said that he's spoken to all senior officials. In fact, it was a news conference where he was talking about the kind of measures and the messaging that he's done with officials across the state of Karnataka. He says, among the issues I have discussed with officials is implementation of the loudspeaker guideline across the state of Karnataka. He's saying across the state of Karnataka, I have asked for the Supreme Court guideline on loudspeakers to be kept in mind and implemented. And this is huge because this comes on the back of some right-wing groups like the Shri Ram Sena, etc., which have come out and they've done similar to what Raj Thackeray has done here in Maharashtra. In Karnataka, they've gone from location to location where azan has been playing. They've been playing the Hanuman Chalisa and other bhajans loudly. Now on the back of this, on the back of the developments and the story that we broke this morning, Basavaraj Bommai has asked for all loudspeakers breaking or violating the rules to be taken down immediately. And I think that's a big breaking news update that we are getting in from the state of Karnataka. Once again, let's listen into what he said. It's significant because he says, I have asked all the officials to crack down on all loudspeakers which are louder than the allowed decibel levels. So that's the breaking news update. Sagai Raj also joining us live. Sagai Raj, do you see this as one of the developing issues in Karnataka, one that could likely blow up in the next few days and weeks, very similar to what we've seen here in Mumbai and Maharashtra? Sagai Raj. Absolutely. Now you can see that Karnataka Chief Minister who spoke to media have clarified that he has already given instructions to officials to go ahead and follow Supreme Court verdict, and this comes after right-wing organizations like Shri Ram Sena went on to say that they will continue the protest against this unless government takes any action on this. The Shri Ram Sena's only demand is that the mosques and temples have to follow the Supreme Court verdict, and they
have to reduce the volume of to the desired decibel. And talking on that, Karnataka Chief Minister has reiterated that he has spoken to officials and they will strictly follow the Supreme Court verdict and try to implement in all religious places. Thank you for bringing us those details. So, the loudspeaker issue in Karnataka likely to build up in the next few days. You had the protests at dawn this morning when Sri Ram Sene, etc. Came out to protest the Azan, government acting hours later. It was a dark night with a bright idea. Guys, we need something big. Let's do what we always do. Something really bold. Let's take on the D segment. Let's create the big daddy of all SUVs. Because nothing else will do. The big daddy of SUVs from Mahindra, coming soon. In a shocking incident, 2 persons were injured after 15 to 20 rounds of firing took place in West Delhi, Subhash Nagar, late at night on Saturday. In fact, these firing took place yesterday in the middle of the night, after which 2 people have been injured. They have been rushed to the spot, and after the incident took place, several police officials were deployed in the area, and there is a heavy deployment in the shooting site, and several barricades have also been placed, and the inquiry has also been placed by the officials. According to the preliminary information that we're getting from the officials, the investigation has been put in place as to who was behind the firing. CCTV cameras are being constantly checked of the entire location, and the injured people are undergoing treatment in the nearby hospital. The entire incident took place on Saturday night. This is Sumi Rajapun for Republic Media Network with video journalist Ranveer, New Delhi. Refugees have gathered here in Jammu as a part of Samaran Divas to remember those who have attained martyrdom in the Pakistan's brutality when the part of Jammu and Kashmir was illegally occupied by Pakistan, and now these people have come from various parts of the country to remember those who have given the supreme sacrifice. Sir, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो हमारे वहाँ पर छूट गए विस्थापित लोग, हमारे जो वहाँ पर पूर्वज छूट गए हैं, उन लोगों को हम अपने साथ मिलाना चाहते हैं और हम उनके साथ मिलेंगे। पीओजेके का जो हिस्सा उसको लेने के लिए आज संकल्प लेंगे और अपने जो पूर्वज थे उनको हम आज श्रद्धांजलि देंगे। श्रद्धांजलि दे रहे सर, आपसे जानना चाहूँगा, लगातार मांग उठ रही है पीओजेके वापसी को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा कदम है, ये ऐसा होना चाहिए, हम उधर जाएं वो इधर आएँ, एक दूसरे का मिलाप होना चाहिए। वापस आना चाहिए पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर? बिल्कुल बिल्कुल वापस आना चाहिए पूरे का। We're reporting outside the Kashi Vishwanath temple over here and the mosque that is all mired into controversy. We'll take you straight to the visuals over here in Varanasi. In the visuals, we are bringing you the live pictures of this particular newly built Kashi Vishwanath corridor, and right next to it is the mosque which is under the scanner of all the controversies. This is the particular mosque where against which you can see there's a brown wall over there. My video journalist is zooming in and showing you the brown wall. The petitioner are questioning that they should be allowed to go inside and worship at the temple of Gauri Shringar. That particular brown wall that is just one of the walls of these mosques is being contended to be the Gauri Shringar temple by the devotees over here. And now in their petition they request that they should be allowed to go freely inside and should be allowed to worship and offer prayers over here. However,
viewers, now Tesla CEO Elon Musk, who is known for his cryptic tweets, has triggered another wave of speculations by talking about his death in mysterious circumstances. Take a look at this report. Tesla CEO Elon Musk has set off a cat amongst the pigeons literally by the tweet that he made today. Now, in that tweet, he says that if I die under mysterious circumstances, it's been nice knowing ya. Now, this tweet, of course, has created quite a flutter on the internet. It does come a week after he announced his decision to buy the microblogging site Twitter for about $44 billion. Now, shortly before this, of course, Mr. Musk shared a post that appears to be a communication saying that he's involved in supplying the fascist forces in Ukraine with military communication equipment. Now, and for this, of course, Elon, you will be held accountable like an adult no matter how much you play the fool. Now, that's a previous post to which it appears that Elon Musk was replying to. Now, this post, of course, was in Russian, and thereafter what we've seen is this communication that came in from Elon Musk. The word Nazi also, he goes on to say, does not mean what he seems to think it does. Now, just to tell our viewers a bit about the background of this, the communication also claimed that the equipment was delivered in Ukraine by the Pentagon headquarters of the US Department of Defense. Now, the two posts, of course, have sparked speculation on whether the Tesla CEO is facing threats from Russia for helping Ukraine amid the war. In February, remember when this battle that the Russians are fighting in Ukraine set off, it was Mr. Musk's company, that SpaceX, Starlink satellite broadband services, which were activated in Ukraine, of course, after a minister from the war-hit country had reached out to Elon Musk. Now, the tweet on the death under mysterious circumstances, of course, has met with varied responses, ranging from jokes to caution to solidarity. And getting in updates on the sedition law matter, which is in the Supreme Court. The latest what we are told is that the centre has filed a second affidavit in the Supreme Court, and it's a rare time that Prime Minister himself has been mentioned in this affidavit that has been filed by the Supreme Court, in the Supreme Court by the central government, which says that the Prime Minister believes we need to work harder to shed our colonial baggage that has passed its unity, which includes outdated colonial laws. So centre there filing an affidavit in the Supreme Court, and it's a rare time when Prime Minister himself has been mentioned in the Supreme Court affidavit in which says that the sedition law to be re-examined. We have our legal affairs editor Rhythm joining us on the phone line. Rhythm, help us read into this. Well, Rhythm will also be joining us shortly. We have Ananya for now on the phone line. Ananya, help us read into this affidavit in which the Prime Minister himself has been mentioned. Well, yes, it's a very big affidavit coming in from the central government at a time when there is a challenge to the section 124A of the Indian Penal Code, which is the sedition law. In fact, the PM rarely has been mentioned into this whole affidavit, and it's one of the very, very rare times when the Prime Minister has itself been mentioned, and it's been clearly stated that while the nation is celebrating the Azadi Ka Amrit Mahotsav, the PM is of the conscious view that there is a time that we should re-examine the colonial laws, which include sedition. So now a very, very big stance coming in from the central government saying that they would be reconsidering the sedition law, because remember that when the initial hearing was a challenge to the sedition has happened, the central government was of the view that the matter should be referred to a larger bench, and mere misuse of the law cannot be enough to go in to revisit the Kedarnath judgment, which was the teeth of the sedition law. But now a very, very important statement coming in from the central government at this point of time. In fact, the PM has also been mentioned, a very, very crucial affidavit filed before the court. We'll have to wait as to what happens tomorrow when the... Well, Ananya, I'll have to interrupt you there. Just hold your thoughts. Rhythm is also joining us on the phone line. Rhythm, help us read into this affidavit that has been filed by the centre in the Supreme Court. Let's tell our viewers it's a huge affidavit, and what is so important about the affidavit on the sedition law is finally we
still getting a view. The central government has agreed to re-examine the sedition law. But what is so critical for me and why I think this is a big breaking news is it's a huge step forward by the Prime Minister. It is extremely important because the Prime Minister has been mentioned one of the very rare times in an affidavit in a top court by the Government of India where they've said it's the Prime Minister who believes we need to work harder to shed our colonial baggage that is past its utility, which includes outdated colonial laws. Remember, sedition is a colonial law, and this is a very clear indication of where the Government of India seems to be getting their inklings from. Huge step forward by the Prime Minister, because there are 3 paragraphs in a 3-page affidavit filed by the central government in this where they say the Prime Minister has been cognizant of the various views that have been expressed on the subject and has also periodically expressed in clear terms in favor of protection of civil liberties, respect for human rights, and giving meaning to constitutionally cherished freedoms by the people of the country. The next paragraph is also